कालखंड तो होगा ही, साथ ही भारत इस दौरान विश्व के भविष्य की दिशा तय करने में भी बहुत अहम भूमिका निभाएगा। आदरणीय सभापति जी, भारत की इस यात्रा में हमारा लोकतंत्र, हमारी संसद, हमारी संसदीय व्यवस्था, उसकी भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। मुझे खुशी है कि इस महत्वपूर्ण कालखंड में उच्च सदन को आपके जैसा सक्षम और प्रभावी नेतृत्व मिला है। आपके मार्गदर्शन में हमारे सभी सदस्यगण अपने कर्तव्यों का प्रभावी पालन करेंगे। ये सदन देश के संकल्पों को पूरा करने का प्रभावी मंच बनेगा। आदरणीय सभापति महोदय, आज आप संसद के उच्च सदन के मुखिया के रूप में अपनी नई जिम्मेदारी का औपचारिक आरंभ कर रहे हैं। इस उच्च सदन के कंधों पर भी जो जिम्मेदारी है, उसका भी सबसे पहला सरोकार देश के सबसे निचले पायदान पर खड़े सामान्य मानवीय के हितों से ही जुड़ा है। इस कालखंड में देश अपने इस दायित्व को समझ रहा है और उसका पूरा जिम्मेदारी से पालन कर रहा है। आज पहली बार महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के रूप में देश की गौरवशाली आदिवासी विरासत हमारा मार्गदर्शन कर रही है। इसके पहले भी श्री रामनाथ कोविंद जी ऐसे ही वंचित समाज से निकलकर देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचे थे और अब एक किसान के बेटे के रूप में आप भी करोड़ों देशवासियों की, गांव, गरीब और किसान की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, आपका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सिद्धि सिर्फ साधनों से नहीं, साधना से मिलती है। आपने वो समय भी देखा है जब आप कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाते थे। गांव, गरीब, किसान के लिए आपने जो किया, वो सामाजिक जीवन में रहे हर व्यक्ति के लिए एक उदाहरण है। आदरणीय सभापति जी, आपके पास सीनियर एडवोकेट के रूप में 3 दशक से ज्यादा का अनुभव है। मैं विश्वास से कह सकता हूं, इस सदन में आप कोर्ट की कमी महसूस नहीं करेंगे। क्योंकि राज्यसभा में बहुत बड़ी मात्रा में वो लोग ज्यादा हैं जो आपको सुप्रीम कोर्ट में मिला करते थे और इसलिए वो मूड और मिजाज भी आपको यहां पर जरूर अदालत की याद दिलाता रहेगा। आपने विधायक से लेकर सांसद, केंद्रीय मंत्री, गवर्नर तक की भूमिका में भी काम किया है। इन सभी भूमिकाओं में जो एक बात कॉमन रही, वो है देश के विकास और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए आपकी निष्ठा। निश्चित तौर पर आपके अनुभव देश और लोकतंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदरणीय सभापति जी, आप राजनीति में रहकर भी
दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर सबको साथ जोड़कर काम करते रहे हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी आपके लिए सबका वो अपनापन हमने स्पष्ट रूप से देखा। मतदान के 75% वोट प्राप्त करके जीत हासिल करना अपने आप में अहम रहा है। आदरणीय सभापति जी, हमारे यहां कहा जाता है नयति इति नायकः, अर्थात जो हमें आगे ले जाए वही नायक है। आगे लेकर जाना ही नेतृत्व की वास्तविक परिभाषा है। राज्यसभा के संदर्भ में ये बात और महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इस सदन पर लोकतांत्रिक निर्णयों को और भी रिफाइंड तरीके से आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। इसलिए जब आपके जैसा जमीन से जुड़ा नेतृत्व इस सदन को मिलता है तो मैं मानता हूं कि ये सदन के हर सदस्य के लिए सौभाग्य है। आदरणीय सभापति जी, राज्यसभा देश की महान लोकतांत्रिक विरासत की एक संवाहक भी रही है और उसकी शक्ति भी रही है। हमारे कई प्रधानमंत्री ऐसे हुए जिन्होंने कभी न कभी राज्यसभा सदस्य के रूप में कार्य किया। अनेक उत्कृष्ट नेताओं की संसदीय यात्रा राज्यसभा से शुरू हुई थी। इसलिए इस सदन की गरिमा को बनाए रखने और आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत जिम्मेदारी हम सभी के ऊपर है। आदरणीय सभापति जी, मुझे विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में ये सदन अपनी इस विरासत को, अपनी इस गरिमा को आगे बढ़ाएगा, नई ऊंचाइयां देगा। सदन की गंभीर चर्चाएं, लोकतांत्रिक विमर्श लोकतंत्र की जननी के रूप में हमारे गौरव को और अधिक ताकत देंगे। आदरणीय सभापति महोदय जी, पिछले सत्र तक हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति जी और पूर्व सभापति जी इस सदन का मार्गदर्शन करते थे और उनकी शब्द रचनाएं, उनकी तुकबंदी सदन को हमेशा प्रसन्न रखती थी। भाग लेने के लिए बड़ा अवसर मिलता था। मुझे विश्वास है कि आपका जो हाजिर जवाबी स्वभाव है वो उस कमी को कभी खलने नहीं देगा और आप सदन को वो लाभ भी देते रहेंगे। इसी के साथ मैं पूरे सदन की तरफ से, देश की तरफ से, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। ऑनरेबल डेप्यूटी चेयरमैन। आदरणीय सभापति जी, उच्च सदन राज्यसभा के आज उच्च आसन ग्रहण करने पर आपको बहुत बहुत बधाई। शीतकालीन सत्र के पहले दिन बहुत गर्मजोशी व आत्मीयता से आपका अभिनंदन। सदन के इतिहास में इस आसन पर बैठने वालों का गौरवपूर्ण इतिहास है। अपने अपने तरीके से सदन के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने में सबका महत्वपूर्ण योगदान है। इनमें से कुछ लोग संसदीय बैकग्राउंड से थे, कुछ संसदीय जीवन के बाहर से भी आए, पर आपको पब्लिक और पार्लियामेंट्री लाइफ दोनों का विस्तृत अनुभव है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विस्तार से आपके जीवन के बारे में बताया।
आप साधारण किसान परिवार में जन्मे, स्कूल की आरंभिक शिक्षा गांव में हुई। इसके बाद तरह तरह के संघर्ष व कठिनाइयों के बीच अपनी प्रतिभा के बल आप सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ पहुंचे। वहां से प्रतिष्ठित महाराजा कॉलेज जयपुर से विज्ञान से स्नातक की पढ़ाई की। फिर लॉ की डिग्री आपने राजस्थान विश्वविद्यालय से ली। इसके बाद जिला स्तर से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लंबे समय तक वकालत की, यानी ग्रास रूट से लेकर ऊपर तक लीगल सिस्टम का भी लंबा और समृद्ध अनुभव आपको है। फिर आप विधानसभा और लोकसभा के सदस्य रहे। आप केंद्र सरकार में मंत्री रहे, जहां संसदीय मंत्रालय का कामकाज आपने संभाला। इसके बाद राज्यपाल का दायित्व भी संभाला। इस तरह गांव के परिवेश से निकलकर लीगल और संसदीय क्षेत्रों का लंबा और समृद्ध अनुभव लेकर आज आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं। पुनः आपका अभिनंदन और बहुत बधाई। ऐसा मानता हूं कि आपके रिच एक्सपीरियंस के साथ लंबा सार्वजनिक जीवन आपको इस सदन के संचालन एवं माननीय सदस्यों के संरक्षक जैसी चैलेंजिंग भूमिका का बहुत बेहतर ढंग से निर्वाह में मदद करेगा। आपके सौम्य स्वभाव और व्यवहार कुशलता के संदर्भ में हिंदी मुहावरे को पुनः मैं रिपीट कर रहा हूं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, सोने पे सुहागा जैसी बात है। सदन के कामकाज में हम सबका सहयोग आपको हमेशा मिलेगा। आपको पुनः बधाई व शुभकामनाओं के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। Honorable Leader of the Opposition. माननीय सभापति जी, विपक्ष के साथियों और अपनी ओर से मैं राज्यसभा के सभापति के रूप में आपका अभिनंदन करता हूं। देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति की जिम्मेदारी आपने 11 अगस्त 2022 को संभाल ली थी। वैसे तो व्यक्तिगत तौर पर आपसे मिलकर आपको बधाई दे चुका हूं, लेकिन अपर हाउस में सभापति के रूप में आपके स्वागत का मौका हमें आज मिला है। प्रधानमंत्री जी ने आपके कामकाज के बारे में और व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ हमें बताए और बहुत कुछ रोशनी उन्होंने डाली। मैं वो सभापति जी को आपको इस सदन की तरफ से और पूरे देश की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपने एक सामान्य परिवार से आकर के संघर्षों के बीच जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज जिस स्थान पर पहुंचे हैं, वो देश के कई लोगों के लिए अपने आप में एक प्रेरणा का कारण है। इस उच्च सदन में इस गरिमामय आसन को आप सुशोभित कर रहे हैं और मैं कहूंगा कि किठाना के लाल उनकी जो उपलब्धियां लोग देश देख रहा है, तो देश की खुशी का ठिकाना नहीं है। आदरणीय सभापति जी, ये सुखद अवसर है कि आज आर्म फोर्सेस फ्लैग डे भी है। आदरणीय सभापति जी, आप तो झुंझुनू से आते हैं। झुंझुनू वीरों की भूमि है। शायद ही कोई परिवार ऐसा होगा कि जिसने देश की सेवा में
अग्रिम भूमिका न निभाई हो। और ये भी सोने में सुहागा है कि आप स्वयं भी सैनिक स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं। तो किसान के पुत्र और सैनिक स्कूल के विद्यार्थी के रूप में मैं देखता हूं कि आप में किसान और जवान दोनों समाहित हैं। मैं आपकी अध्यक्षता में इस सदन से सभी देशवासियों को आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे की भी शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस सदन के सभी आदरणीय सदस्यों की तरफ से देश के आर्म्ड फोर्सेस को सैल्यूट करता हूं। आज संसद का ये उच्च सदन एक ऐसे समय में आपका स्वागत कर रहा है जब देश दो महत्वपूर्ण अवसरों का साक्षी बना है। अभी कुछ ही दिन पहले दुनिया ने भारत को G20 समूह की मेजबानी का दायित्व सौंपा है। साथ ही ये समय अमृत काल के आरंभ का समय है। ये अमृत काल एक नए विकसित भारत के निर्माण का कालखंड तो होगा ही, साथ ही भारत इस दौरान विश्व के भविष्य की दिशा तय करने में भी बहुत अहम भूमिका निभाएगा। आदरणीय सभापति जी, भारत की इस यात्रा में हमारा लोकतंत्र, हमारी संसद, हमारी संसदीय व्यवस्था, उसकी भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। मुझे खुशी है कि इस महत्वपूर्ण कालखंड में उच्च सदन को आपके जैसा सक्षम और प्रभावी नेतृत्व मिला है। आपके मार्गदर्शन में हमारे सभी सदस्यगण अपने कर्तव्यों का प्रभावी पालन करेंगे। ये सदन देश के संकल्पों को पूरा करने का प्रभावी मंच बनेगा। आदरणीय सभापति महोदय, आज आप संसद के उच्च सदन के मुखिया के रूप में अपनी नई जिम्मेदारी का औपचारिक आरंभ कर रहे हैं। इस उच्च सदन के कंधों पर भी जो जिम्मेदारी है, उसका भी सबसे पहला सरोकार देश के सबसे निचले पायदान पर खड़े सामान्य मानवीय के हितों से ही जुड़ा है। इस कालखंड में देश अपने इस दायित्व को समझ रहा है और उसका पूरा जिम्मेदारी से पालन कर रहा है। आज पहली बार महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के रूप में देश की गौरवशाली आदिवासी विरासत हमारा मार्गदर्शन कर रही है। इसके पहले भी श्री रामनाथ कोविंद जी ऐसे ही वंचित समाज से निकलकर देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचे थे और अब एक किसान के बेटे के रूप में आप भी करोड़ों देशवासियों की, गांव, गरीब और किसान की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, आपका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सिद्धि सिर्फ
साधनों से नहीं, साधना से मिलती है। आपने वो समय भी देखा है जब आप कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाते थे। गांव गरीब किसान के लिए आपने जो किया वो सामाजिक जीवन में रहे हर व्यक्ति के लिए एक उदाहरण है। आदरणीय सभापति जी, आपके पास सीनियर एडवोकेट के रूप में 3 दशक से ज्यादा का अनुभव है। मैं विश्वास से कह सकता हूं इस सदन में आप कोर्ट की कमी महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि राज्यसभा में बहुत बड़ी मात्रा में वो लोग ज्यादा हैं जो आपको सुप्रीम कोर्ट में मिला करते थे, और इसलिए वो मूड और मिजाज भी आपको यहां पर जरूर अदालत की याद दिलाता रहेगा। आपने विधायक से लेकर सांसद, केंद्रीय मंत्री, गवर्नर तक की भूमिका में भी काम किया है। इन सभी भूमिकाओं में जो एक बात कॉमन रही वो है देश के विकास और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए आपकी निष्ठा। निश्चित तौर पर आपके अनुभव देश और लोकतंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदरणीय सभापति जी, आप राजनीति में रहकर भी दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर सबको साथ जोड़कर काम करते रहे हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी आपके लिए सबका वो अपनापन हमने स्पष्ट रूप से देखा। मतदान के 75% वोट प्राप्त करके जीत हासिल करना अपने आप में अहम रहा है। आदरणीय सभापति जी, हमारे यहां कहा जाता है नयति इति नायकः, अर्थात जो हमें आगे ले जाए वही नायक है। आगे लेकर जाना ही नेतृत्व की वास्तविक परिभाषा है। राज्यसभा के संदर्भ में ये बात और महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इस सदन पर लोकतांत्रिक निर्णयों को और भी रिफाइंड तरीके से आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। इसलिए जब आपके जैसा जमीन से जुड़ा नेतृत्व इस सदन को मिलता है तो मैं मानता हूं कि ये सदन के हर सदस्य के लिए सौभाग्य है। आदरणीय सभापति जी, राज्यसभा देश की महान लोकतांत्रिक विरासत की एक संवाहक भी रही है और उसकी शक्ति भी रही है। हमारे कई प्रधानमंत्री ऐसे हुए जिन्होंने कभी न कभी राज्यसभा सदस्य के रूप में कार्य किया। अनेक उत्कृष्ट नेताओं की संसदीय यात्रा राज्यसभा से शुरू हुई थी। इसलिए इस सदन की गरिमा को बनाए रखने और आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत जिम्मेदारी हम सभी के ऊपर है। आदरणीय सभापति जी, मुझे विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में ये सदन अपनी इस विरासत को, अपनी इस गरिमा को आगे बढ़ाएगा, नई ऊंचाइयां देगा। सदन की गंभीर चर्चाएं, लोकतांत्रिक विमर्श लोकतंत्र की जननी के रूप में हमारे गौरव को और अधिक ताकत देंगे।
आदरणीय सभापति महोदय जी, पिछले सत्र तक हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति जी और पूर्व सभापति जी इस सदन का मार्गदर्शन करते थे और उनकी शब्द रचनाएं, उनकी तुकबंदी सदन को हमेशा प्रसन्न रखती थी। भाग लेने के लिए बड़ा अवसर मिलता था। मुझे विश्वास है कि आपका जो हाजिर जवाबी स्वभाव है वो उस कमी को कभी खलने नहीं देगा और आप सदन को वो लाभ भी देते रहेंगे। इसी के साथ मैं पूरे सदन की तरफ से, देश की तरफ से, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। Honorable Deputy Chairman. आदरणीय सभापति जी, उच्च सदन राज्यसभा के आज उच्च आसन ग्रहण करने पर आपको बहुत बहुत बधाई। शीतकालीन सत्र के पहले दिन बहुत गर्मजोशी व आत्मीयता से आपका अभिनंदन। सदन के इतिहास में इस आसन पर बैठने वालों का गौरवपूर्ण इतिहास है। अपने अपने तरीके से सदन के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने में सबका महत्वपूर्ण योगदान है। इनमें से कुछ लोग संसदीय बैकग्राउंड से थे, कुछ संसदीय जीवन के बाहर से भी आए, पर आपको पब्लिक और पार्लियामेंट्री लाइफ दोनों का विस्तृत अनुभव है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विस्तार से आपके जीवन के बारे में बताया। आप साधारण किसान परिवार में जन्मे, स्कूल की आरंभिक शिक्षा गांव में हुई। इसके बाद तरह तरह के संघर्ष व कठिनाइयों के बीच अपनी प्रतिभा के बल आप सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ पहुंचे। वहां से प्रतिष्ठित महाराजा कॉलेज जयपुर से विज्ञान से स्नातक की पढ़ाई की। फिर लॉ की डिग्री आपने राजस्थान विश्वविद्यालय से ली। इसके बाद जिला स्तर से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लंबे समय तक वकालत की, यानी ग्रास रूट से लेकर ऊपर तक लीगल सिस्टम का भी लंबा और समृद्ध अनुभव आपको है। फिर आप विधानसभा और लोकसभा के सदस्य रहे। आप केंद्र सरकार में मंत्री रहे, जहां संसदीय मंत्रालय का कामकाज आपने संभाला। इसके बाद राज्यपाल का दायित्व भी संभाला। इस तरह गांव के परिवेश से निकलकर लीगल और संसदीय क्षेत्रों का लंबा और समृद्ध अनुभव लेकर आज आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं। पुनः आपका अभिनंदन और बहुत बधाई। ऐसा मानता हूं कि आपके रिच एक्सपीरियंस के साथ लंबा सार्वजनिक जीवन आपको इस सदन के संचालन एवं माननीय सदस्यों के संरक्षक जैसी चैलेंजिंग भूमिका का बहुत बेहतर ढंग से निर्वाह में मदद करेगा। आपके सौम्य स्वभाव और व्यवहार कुशलता के संदर्भ में हिंदी मुहावरे को पुनः मैं रिपीट कर रहा हूं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, सोने पे सुहागा जैसी बात है। सदन के कामकाज में हम सबका सहयोग आपको हमेशा मिलेगा। आपको पुनः बधाई व शुभकामनाओं के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। Honorable Leader of the Opposition. माननीय सभापति जी, विपक्ष के साथियों और अपनी ओर से मैं राज्यसभा के सभापति के रूप में आपका अभिनंदन करता हूं। देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति की जिम्मेदारी आपने 11 अगस्त 2022 को संभाल ली थी। वैसे तो व्यक्तिगत तौर पर आपसे मिलकर आपको बधाई दे चुका हूं, लेकिन अपर हाउस में सभापति के रूप में आपके स्वागत का मौका हमें आज मिला है। प्रधानमंत्री जी ने आपके कामकाज के बारे में और व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ हमें बताए और बहुत कुछ रोशनी उन्होंने डाली।
मैं वो फिर से दोहराना नहीं चाहता। मैं एक जरूर कहना चाहता हूं कि अपर हाउस के संरक्षक के रूप में आपकी भूमिका बाकी भूमिकाओं से बहुत बड़ी है। आप जिस आसन पर बैठे हैं वहां देश के कई महान हस्तियां बैठ चुकी है। हमारे 6 सभापति बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने। आप भूमि पुत्र हो, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि किसान के पुत्र, तो मैं तो भूमि पुत्र कहूंगा। राजस्थान के एक गांव से उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जैसे बड़े ओहदे तक आप पहुंचे हैं। संसदीय परंपराओं को आप समझते हैं। 9वीं लोकसभा में आप चुने गए थे और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर में उपमंत्री रहे थे। राजस्थान विधानसभा में एमएलए और पश्चिम बंगाल में कई सालों तक आप राज्यपाल रहे। कोऑपरेटिव मूवमेंट में और कई खेल संगठनों में आप जुड़े रहे। पढ़ने लिखने में आपकी रुचि है। आपका प्रोफाइल बहुत बड़ा है। मैंने पढ़ा, हमारे देश में संविधान सबसे ऊपर है। संसद के लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार स्तंभ है। संसद के पास संविधान संशोधन का भी अधिकार है। राज्यसभा और लोकसभा मिलकर भारत की संसद बनती है। कोई अकेला सदन खुद में पूर्ण नहीं है। संविधान के दायरे में दोनों सदनों को अपनी प्रक्रिया और नियम तय करने का अधिकार आपको है। हमारी संसदीय प्रणाली में राज्यसभा को चेंबर ऑफ आइडियाज या विचारों का सदन कहा जाता है। ये परमानेंट हाउस है और राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यों की राजनीतिक तस्वीर यहाँ नजर आती है। शुरुआत से ही संसदीय क्षेत्र के तमाम दिग्गज यहाँ की शोभा बढ़ाते रहे हैं। राज्यसभा ने भारतीय लोकतंत्र में संवाद की परंपरा को मजबूती दी है। अलग अलग विचारधाराओं की राजनीति का केंद्र होने के बाद भी यहाँ सबका लक्ष्य देश की तरक्की और उन्नति के बारे में हम हमेशा सोचते रहते हैं और सभी यही चाहते हैं जनता के सवालों पर गंभीर चर्चा हो और समस्याओं का समाधान निकाले। आपको सभा के दोनों पक्षों की हालत, नियमों, मेंबर्स के अधिकारों और भावनाओं की जानकारी है। जैसे संसद 2 सदनों के मिलकर बनती है, उसी तरह लोकतंत्र सत्ता पक्ष और विपक्ष के 2 पहियों पर चलता है। दोनों का अपना महत्व है। इसीलिए तो लोकतंत्र, इसी को तो लोकतंत्र यशस्वी बनाया जा सकता है। बाबा साहब ने संसद की कार्यवाही को असरदार बनाने के लिए दोनों सदनों के लिए स्वतंत्र सचिवालय के गठन की बात कही थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के प्रयासों से राज्यसभा सांसदों को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स जैसी फिनेंशियल समितियों की सदस्यता मिली थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कभी राज्यसभा के अधिकार को कम नहीं होने दिया। 1953 में बजट सत्र के दौरान उन्होंने साफ कहा था कि लोकसभा और राज्यसभा मिलकर भारत की संसद बनाते हैं। हमारे संविधान के अनुसार दोनों सदनों की अथॉरिटी के बीच मनी बिल्स को छोड़कर कोई अंतर
नहीं है। आज जब मैं ये बातें कह रहा हूं तो हमें बहुत कुछ बातें याद आ रही है। विपक्ष के लोग संख्या बल में भले ही कम हो, लेकिन आप जानते हैं कि उनके अनुभव और तरक्कों में ताकत रहती है। लेकिन समस्या ये है कि इनकी जगह नंबरों की गिनती होती है, ना कि विचारों के बारे में सोचा जाता है। एक दूसरी दिक्कत ये भी है कि हाउस की सिटिंग्स कम होने के कारण जनता के मुद्दों पर चर्चा के लिए उचित समय नहीं मिल पाता। गरीबों, दबे कुचले और SC/ST, किसानों और अत्याचार के शिकार महिलाओं की हालत पर ढंग से बातें नहीं रख पाते और बिल्स भी बहुत जल्दबाजी में पास होते। पहले जहां संसद में साल के 100 दिनों से ज्यादा चलती थी, अब 60 से 70 दिन भी नहीं चल पाती। लेकिन हमारी आबादी, अपेक्षाएं और समस्याएं बड़ी है। पिछले एक दशक का आंकड़ा देखें तो 2012 में संसद की सबसे ज्यादा 74 सिटिंग्स हुई थी। इसके बाद 2016 में 72 सिटिंग्स हुई। हाउस में सिटिंग्स बढ़ेगी तो अच्छा नतीजा निकलेगा और मैं आपसे आशा करता हूं कि आपके नेतृत्व में चर्चा के दिन बढ़ेंगे। सभापति जी, आप तो कानून के जानकार हैं। आप इसे अच्छी तरह समझें कि कानून अगर जल्दबाजी में बनते हैं तो उनमें खामियां होते हैं और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जजेस है उनकी टीका टिप्पणी भी हम पे होती रहती है। कई जजेसों ने भी ये काम किया है, उनका सही तात्पर्य नहीं निकलता और ऐसे कानूनों की क्वालिटी पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की टिप्पणियां करता है कि हमारी संसद की प्रणाली की सेहत और इमेज को ठीक नहीं लगता। तो इसलिए हम चाहते हैं कि बिल्स को ठीक से एग्जामिन करने के काम को सेलेक्ट, ज्वाइंट और निचले सदन में स्टैंडिंग कमेटी इस विभाग संबंधी संसदीय समिति को ज्यादा से ज्यादा भेजा जाए और बिल्स को इन समितियों में भेजे जाए, वहां इन पर विस्तार से चर्चा हो। राज्यसभा का यही मुख्य काम भी है। मैं इस संदर्भ में 13 मई 1952 में हुई राज्यसभा की पहली बैठक में सभापति डॉक्टर राधाकृष्णन जी की कही इस बात को जिक्र करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था, हमें इस देश की जनता के लिए ये बात न्यायोचित ठहराने के लिए पूरी ताकत के साथ जुट जाना चाहिए कि जल्दबाजी में पारित किए जाने वाले कानून पर रोक लगाने के लिए सेकंड चेंबर की जरूरत है। इसीलिए इसके अध्यक्ष भी अब आप ये सेकंड चेंबर के बने। इस मौके पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मैंने कुछ बातें रखी है। उम्मीद करता हूं कि आप हमारी भावनाओं को समझेंगे। विपक्ष की ओर से हम यही कहना चाहेंगे कि आपको हम अपनी ओर से पूरा सहयोग देंगे। और मैं एक बात मैं कहना चाहता हूं, मुझे वो बात जरा खटक रही मुझे, क्योंकि जब कोई हमारे अपोजिशन के लोग मिलते हैं, हमारे पार्टी के लोग मिलते हैं, तो लास्ट यहाँ पर सदन में मैं कुछ एक शेर बोला था, शायरी बोली थी, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा आप ध्यान देकर मुझे क्यों ऐसा कहे ये बात आपने बार बार कहा है, लेकिन मैं ये दोहराऊंगा कि इसको भी आप बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये सदन का है। मेरे बारे में कोई राय मत बनाना गालिब, मेरे बारे में कोई राय मत बनाना गालिब,
मेरा वक्त भी बदलेगा, तेरी राय भी बदलेगी। तो ये कहते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और ये सदन बहुत सुरक्षित चलेगा और हम पूरी कोशिश करेंगे हर बात पर आपको सहकार देने के लिए। धन्यवाद। श्री डेरेक ओब्राइन। Just now I have informed the Secretary. First of all, on behalf of our party, All India Trinamool Congress, I extend warmest felicitations to Your Honor for being elected as the Honorable Vice President of India, as well as taking over the charge of the Honorable Chairman of this august House. For the past 4 years, we have experienced your style of functioning when you were the Honorable Governor of West Bengal. And personally speaking, I got the opportunity to exchange a few letters with you on some legal and constitutional issues, wherefrom I could understand that my friends who used to tell me that this governor is a constitutional expert and a legal luminary, I could find from the expressions made by Your Honor in those communications, actually that belief was further strengthened. Now that Your Honor has taken over the charge of this august House, we submit to Your Honor with all grace that from now on, we believe, हिंदी में तो कहावत है कि आप आए तो बाहर आए, so we will expect that with your elevation to this position will help strengthen the conducive atmosphere of this august House, and both the Treasury benches and the opposition bench will get adequate opportunity in the deliberations to be made on various issues, bills, etc. Now, I have some suggestions to make for your kind consideration. हमने देखा कि लोकसभा में कुछ बिल, कुछ मुद्दा बहुत देर तक चर्चा होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ कि हम राज्यसभा में उतना समय हम लोगों को मिलता नहीं है, जो कि जरूरी मुद्दा है देश के लिए, वो मुद्दा को जरा ज्यादा समय तक होना चाहिए। खास करके जो छोटे पार्टी है उनको 2-3 मिनट समय मिलता है। हम भी कभी कभी कुर्सी में बैठते हैं एज वाइस चेयरमैन। दिस टाइम आल्सो you have made me one of the vice chairman in the panel. So छोटे पार्टी के लिए बहुत दर्द होता है, महसूस करता हूं, क्योंकि उनको समय नहीं मिलता है। तो इसलिए इसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए समय, नहीं तो लोकसभा और राज्यसभा का रिलेशन, वो लोकसभा बने रहेगी, राज्यसभा पर लोकसभा ना बने, ये हमारा आशंका है। जिस तरह समय कम होते जा रहा है धीरे धीरे, मैंने पिछले 11 साल में देखा, तो इसको मेरा आपसे निवेदन है मेरा। दूसरा, जैसे कि हमारे ऑनरेबल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने बताया कि scrutiny of the bills, that is very important by the standing committees and at times by the select committee also. This is my second suggestion. And the third suggestion is, because it is required for better legislation, unless the bills are scrutinized properly, either by the standing committee or by the select committee at times, then mere discussion will not be helpful. Our party's further suggestion is that we require one short duration discussion or calling attention, either or, per week.
half an hour discussion or the short duration discussion or calling attention. And there is rule 267, which is very sparely adhered to for reasons not known to us. But there was time we have experienced that on greater issues, national issues, discussion on under Rule 267 was allowed very frequently. My only suggestion would be that at least per session, one issue under 267 may be taken up. Yes. This is my suggestion. And the opposition voice in a democracy, as we know, the voice of dissent is also to be listened. Otherwise, the concept of or the idea of participating in democracy will be a futile exercise. With these words, I wish you all the best for the coming years. Thank you, sir. Shri Tiruchi Shiva. Thank you, Mr. Chairman, sir. Sir, I bestow upon you my profound wishes profusely on behalf of the DMK party on your assuming the chairman of the second chamber in the parliament. Sir, when our party leader and Chief Minister of Tamil Nadu, Mr. M.K. Stalin, has met you to congratulate you on your having been elected as the Vice President, you have expressed your wishes how to run the House, and he has assured you that DMK will extend its fullest cooperation in running a smooth House. And I stand by his words, sir, and I assure you again on behalf of the members of my party here that we will ensure that we will cooperate in all the ways for a smooth running of the Parliament. Sir, you are the 14th Vice President of the largest democracy in the world. Nowhere in any other democracy does this system exist. By virtue of being the Vice President, you are a part of the executive. And as per the Constitution, you are the ex officio chairman of the Rajya Sabha, and by that, you are a part of the Parliament. So you wear two caps. You have dual capacity. You are a Vice President and part of executive, and you are part of the Parliament. Sir, everyone knows very well that you are an expert in the Constitution. You are thorough with the Constitution. For your legal track record is a very good example of that. And now we know, sir, during the intercession period, after you have won the elections, every day you were here in the Parliament, attending the office, and now we are sure that you are thorough with the rules of the procedures and rules of conduct in the Rajya Sabha. Sir, we expect a lot from you. We expect you to be impartial. The opposition parties should have the equal share as that of the treasury benches, and the numbers of the members in the House should not decide the quality of the debate. Sir, I have met you twice at your residence and yesterday in the BSc. And both the three occasions have made me to realize, which was very consoling, that you have very great concern for the smaller parties in the Parliament. The nominated members, the independent members, and members who represent the smaller numbers in the party. Their party may be bigger outside, but their numbers will be lesser here. So you said that time should be distributed to all of them, and that was a great consolation to all of us, because we were suffering all these days only because of that. Sir, we hope that the coming days would be very bright. Sir, India is the largest democracy, and the Parliament is the debating forum. And you asked me when I met you first, what is the way to avoid members to come into the well of the House? So you have inferred rightly what is happening here than what should not. So I told you very simply, if we are heard, we won't be compelled to come to the well of the House. Beautiful. Members of the Parliament come here to voice the people.
their issues, their concerns. And we are not, when we are not heard or when we are not led to speak, we have to resort to democratic process of coming to the well. That has happened for years together. So, sir, I think whenever we have an issue and we rise to say something, if we are heard for a minute or two, automatically we will cool down since we have let out our feelings. Sir, we have very much hope upon you, sir. And I should say that Maya Angelou, when Mr. Clinton took his office, what she said, the great African-American poet said, sir, with the grace of you, look upon the country, look upon our faces, and simply with hope say, good morning. Every new year dawns with a hope that the next year will be very prosperous. So every day dawns that the day will be very bright. And I wish you good morning every day, sir. And you also, please, wish us good morning. Not only that, ensure us that the parliament will be very productive in the coming days. And we are very hopeful. And once again, sir, I assure you that DMK will extend its fullest cooperation. Thank you very much. Honorable former Prime Minister Shri S.D. Devgowda. So you want to sit and speak? Sit down and talk. Respected Chairman, sir, I am the only one single member in this house. What the bitter experience from last 20 years. It is very difficult to get an opportunity to speak. The decision made by both the houses, a single member cannot take more than 2 to 3 minutes. That is a bitter experience I had either in this house or in the other house. Sir, being a farmer, coming from the rural area, I used to take a lot of time on the subject of farming community, on the subject of rural development. But unfortunately, the time fixed only 2 to 3 minutes. This is the bitter experience I have got. May I humbly request you, sir, whenever these issues are going to come, the experience I have got, only 2 to 3 minutes, that should be reconsidered when a subject belongs to the rural India or the farming community. Any development thing, I don't want to take unnecessary time of the house. This is only request I would like to make to the Honorable Chairman and the Vice President of India. With these words, I once again thank you very much, sir. If you allow me to speak few minutes more on the issue of farming community and also rural development. This is the humble request, Mr. Vice President and the Chairman of this House. Shri Raghav Chadha. सर, मैं आम आदमी पार्टी की ओर से, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और इस नई पारी के लिए आपको खूब सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपका सफर, जीवन का सफर एक बहुत बेहतरीन सफर रहा। एक साधारण से किसान परिवार में जन्म लेने के बाद आपने कई संघर्षों का सामना किया और एक विधायक के तौर पे, सांसद के तौर पे, मंत्री के तौर पे, राज्यपाल के तौर पे और अब देश के उपराष्ट्रपति के तौर पे, राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पे आपको अपनी सेवाएं देने का मौका मिला। हम जैसे लाखों युवाओं के लिए
आपका जीवन, आपका करियर एक प्रेरणा स्रोत है सर। इसी के साथ साथ मैं एक कृषि प्रधान सूबे का प्रतिनिधित्व इस सदन में कर रहा हूं, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव बनके इस सदन में आया हूं। और ये मेरा मानना है कि क्योंकि आप एक किसान परिवार से आते हैं, आपका परिवार सदैव से खेती और किसानी से जुड़ा रहा है, तो इस देश के किसानों के मुद्दे इस सदन में गूंजेंगे और उनके अधिकारों की बात होगी। इसी के साथ साथ सर, बीते कुछ हफ्तों में जब से आप उपराष्ट्रपति बने, आपने इस सदन के लगभग सारे सदस्यों से एक व्यक्तिगत रिश्ता सा बनाया है। मुझे भी सौभाग्य मिला 2-3 बार आपसे मिलने का, और जो प्यार, जो स्नेह, जो वार्मथ हमें आपसे मिली, मैं आज उसके आधार पे कह सकता हूं कि इस सदन के बहुत सारे सदस्य केवल पार्लियामेंट्री इश्यूज ही नहीं, बहुत सारे पर्सनल लाइफ के इश्यूज भी आपसे डिस्कस करने में हिचकिचाएंगे नहीं। सर, आप इस सदन के अध्यक्ष हैं, यू आर द एल्डेस्ट इन द हाउस। मैं सदन का सबसे कम उम्र का युवा सदस्य हूं, आई एम द यंगेस्ट इन द हाउस। तो जो परिवार का सबसे बड़ा होता है, वो परिवार के सबसे छोटे सदस्य का खास ख्याल रखता है सर। उसे ज्यादा प्यार देता है, उसे बोलने का ज्यादा मौका देता है, उससे ज्यादा इंटरवेंशंस देता है, उसके 0 आवर ज्यादा सिलेक्ट होते हैं, उसके स्टार क्वेश्चन ज्यादा लगते हैं, और उसे थोड़ी शैतानी करने की भी छूट होती है। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि आपका विशेष प्यार और विशेष स्नेह हमारी छोटी पार्टी और सदन के छोटे सबसे युवा सदस्य होने के नाते मेरे प्रति रहेगा सर। आपको इस नई पारी के लिए ढेरों शुभकामनाएं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। Those whom I love and respect, they suffer the most. Dr. Sasmit Patra. माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस घड़ी में जब हम आपको स्वागत कर रहे हैं, मैं मेरे पार्टी बीजू जनता दल की तरफ से, हमारे माननीय नेता और माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी की तरफ से हम आपको वेलकम करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और ये आश्वासन के साथ करते हैं मान्यवर कि जो लक्ष्मण रेखाएं हैं हमारी संसदीय विधि व्यवस्था की, वह लक्ष्मण रेखाओं को माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी ने कभी लांघने का कोई स्कोप नहीं दिया। और हमेशा से एक चीज हम सबको भी कहा है कि भी जब भी संसद में जाओ, मर्यादाओं की रक्षा करो और संसद उचित तरह से चल सके, इसका पूरा कोशिश करो। तो ये अवसर मैं लेना चाहता हूं मान्यवर, आपकी अध्यक्षता में, आपके मार्गदर्शन में, बीजू जनता दल इस सदन में जो गरिमा है, उस गरिमा को रखते हुए हमारे माननीय नेता श्री नवीन पटनायक जी के मार्गदर्शन में जो हमने सीखा है, उसके साथ हम इस सदन को स्मूथली और सुचारू रूप से चलाने में आपका पूरा सहयोग देंगे। मान्यवर, मैं ये अवसर लेना चाहता हूं ये कहने के लिए that you are a distinguished man of law who is presiding on the highest house of lawmaking. And as the distinguished man of law presiding over the house of lawmaking, आपकी जो rich experience है, जो vibrancy है, वो हम सबको एक अवसर देगा और सीखने के लिए। मान्यवर, कई माननीय सदस्यों ने आपकी इंटेलेक्ट के बारे में कहा, मैं आपके विशाल हृदय के बारे में 2 शब्द कहना चाहूंगा। मान्यवर, कुछ ही दिन पहले मैं अपने परिवार के साथ सदन में आया था और सदन बंद था तो उनको घुमाने लेके आया था, और जब मैं घुमान लेके आया यहां पर तो मुझे सुनने में आया कि आप चेंबर में हैं, आए हुए हैं। स्वाभाविक तौर से आप अध्यक्ष हैं, माननीय उपराष्ट्रपति जी हैं, तो अपॉइंटमेंट लिया जाता है, प्रोटोकॉल लिया जाता है और उसके बाद आपसे मिला जाता है। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे लगा आपसे मैं मिला 1-2 बार, मुझे लगा कि नहीं, मैं माननीय अध्यक्ष जी को एक स्लिप भेजता हूं कि मैं अपने परिवार के साथ आया हूं, क्या मुझे 30 सेकंड आपके मिल सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका इतना विशाल हृदय है कि आपने सिर्फ दरवाजे नहीं खोले, आपका दिल का हृदय खोला, पूरे परिवार को अंदर बुलाया, चाय पिलाई, गपशप करी और मेरे बच्चों को भी आपने इंस्पायर किया। ये बताता है कि किस तरह से आपका हृदय
आपकी सोच सिर्फ सांसदों के लिए नहीं, उनके परिवारों के लिए है, और आपके जो विश्वास है कि किस तरह से आने वाले दिनों में इस सदन को और आगे लिया जा सकता है, ये इसका एक प्रतिबिंब है। मान्यवर, आपने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कल एक बहुत खूबसूरत बात कही, मैं शांत होकर सुन रहा था। आपने कहा that whenever there is any matter, I'll first look to the opposition, then I'll look to the government, and then again I'll look to the opposition. That shows the strength, that shows your commitment, that shows your vision of running the house, sir. I thank you for that. मान्यवर, आखिरी बात कहूंगा, ये सदन काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, हम उड़ीसा से आते हैं और कई ऐसे विषय होते हैं जो कि सदन में स्टेट्स के बारे में चर्चा होती है। मान्यवर, जब प्राइवेट मेंबर्स की तरह हम लोग आते हैं, हमारे जीरो आवर आते हैं, हमारे स्पेशल मेंशंस आते हैं, कई बार एडजर्न हो जाता है, धुल जाता है। मान्यवर, तो एक अपेक्षा यह है कि हम जो रीजनल पार्टीज हैं, हमारे पास ज्यादा स्कोप नहीं होता बिल्स पे चर्चा करने के लिए, तो ये जो जीरो आवर्स रहते हैं, स्पेशल मेंशंस रहते हैं, अगर इसमें कोई प्रावधान आप करें जिससे कि रीजनल पार्टीज जो स्टेट से चल के आती हैं इस काउंसिल ऑफ स्टेट्स में अपनी आवाज को और रख सके, ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स का जो सोच है उस सोच को और गरिमा देगा। आखिर में मैं सिर्फ यही कहूंगा, उड़िया में दो शब्द कहूंगा कि आपको अनेक अनेक स्वागत, अनेक अनेक अभिनंदन, आमर समस्त शुभेच्छा आपन सहित रही, आपन सहित रहिबो, आपके साथ हमारी शुभेच्छाएं हैं, आपके साथ हमारा अभिनंदन है, और हम आशा करते हैं आपके मार्गदर्शन में हम और आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रामदास अठावले। आदरणीय महोदय, मैं तो अन्याय के खिलाफ लड़ा हूं, मैं तो अन्याय के खिलाफ लड़ा हूं, इसलिए आपको बधाई देने के लिए यहां खड़ा हूं। आपका अनुभव बहुत ही बड़ा है, आपका अनुभव बहुत ही बड़ा है, इसलिए आपने संघर्ष का पहाड़ चढ़ा है। मेरे पार्टी का मैं हूं अकेला, मेरे पार्टी का मैं हूं अकेला, लेकिन मेरे हाथ में है संविधान का पेला। मैं हूं मेरे पार्टी का अकेला, लेकिन मेरे हाथ में है संविधान का पेला। मैं तो हूं आपका सच्चा चेला, मैं तो हूं आपका सच्चा चेला, मुझे मत छोड़ो अकेला। जिन्होंने उपराष्ट्रपति का सर किया है गढ़, जिन्होंने उपराष्ट्रपति का सर किया है गढ़, उनका नाम है धनखड़। हमें मिलकर उखाड़ देनी है विषमता की जड़, हमें मिलकर उखाड़ देनी है विषमता की जड़, इसमें जरूर सफल होंगे आदरणीय धनखड़। हाउस में जो सदस्य करेंगे फ्रैक्शन, हाउस में जो सदस्य करेंगे फ्रैक्शन, उनके ऊपर होनी चाहिए कड़ी एक्शन। हमें तो मजबूत करना है भारत नेशन, हमें तो मजबूत करना है भारत नेशन। हंगामा करने की हमें नहीं चाहिए फैशन। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप बहुत बड़ा संघर्ष करते करते यहाँ पहुंचे हैं। गांव से आकर किसान के बेटे के माध्यम से आप इतने बड़े उच्च पद पर आए हैं। इसमें आपका अनुभव, आपका बहुत बड़ा संघर्ष है, बहुत बड़ा काम आपने किया है। आपने पश्चिम बंगाल में गवर्नर का जो काम किया है, बहुत बड़ा वहाँ चैलेंज था, वहाँ काम करना बहुत बड़ा मुश्किल था, लेकिन आपने बंगाल में बहुत अच्छा काम किया है और बंगाल में अच्छा काम आपने किया है, इसीलिए आपको यहाँ लाने की कोशिश जरूर हुई है। मतलब आप एक संघर्षशील नेता है, मतलब वहाँ अगर आपका काम ठीक नहीं होता था तो शायद ये पद आपको मिलना बहुत बड़ा मुश्किल था, लेकिन आपने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक बात है, बंगाल भी अपना ही है
सभी बंगाल के नेता भी अपने हैं, देश का एक वो राज्य है और कोई भी राज्य हो, यहाँ किसी पार्टी की सत्ता आती है जाती है, कोई मुख्यमंत्री होता है, कोई नहीं होता है। कभी हम भी मतलब 3 बार सांसद रहे लोकसभा में और मैं शिरडी में मैं हार गया, लेकिन मैं घर में बैठा नहीं, मैं घूमता रहा, मैं कांग्रेस पार्टी के साथ रहा। कांग्रेस पार्टी के मेरे सभी दोस्त हैं, समाजवादी पार्टी के मेरे दोस्त हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के मेरे दोस्त हैं और अभी बीजेपी के मेरे दोस्त हैं। मैं सब बीजेपी के साथ में आया हूँ और भारतीय जनता पार्टी के साथ में इसलिए आया हूँ कि मुझे शिरडी में हारा गया, मुझे मंत्री ने बनाया, फिर मैं उधर क्या करूं। तो इसीलिए मुझे मतलब कांग्रेस पार्टी को छोड़ना पड़ा और मैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास दिख रहा है, सारा प्रकाश, मतलब ये जो प्रकाश दिख रहा है, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मैंने निर्णय ले लिया कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी का अनुयायी हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सत्ता में आना चाहिए बताया है। मेरी अकेली पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती है, किसी के साथ मिलकर ही सत्ता में आ सकता हूँ। और मेरे पार्टी का मुझे लोग पूछते हैं कि तुम्हारा पार्टी का एक भी लोकसभा में मेंबर नहीं है, तो भी आप मंत्री कैसे हैं? तो मैंने बोला आप माननीय नरेंद्र मोदी जी को जाकर पूछो, मतलब मैं कैसा मंत्री हूँ। मतलब मैं अकेला हूँ, लेकिन मेरे पार्टी के लोग पूरे देश भर में है। नॉर्थ ईस्ट में मेरी पार्टी सभी पार्टी है और मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। मुझे मालूम है कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं और मैं आपको, हाँ, आप मुझे हर बार बोलते थे कि हमको कविता सुनाओ। अगर आप मुझे ज्यादा बोलने के लिए देंगे तो मैं कविता सुनाऊंगा, नहीं तो एक भी कविता नहीं सुनाऊंगा। तो ठीक बात है, तो इसीलिए मतलब कविता सुनाता भी रहूंगा और आप एक अनुभव है, तो इसीलिए अपोजिशन को भी आप मौका दीजिए, हंगामा करने के लिए मौका दीजिए, लेकिन एक आधा दिन हंगामा करने के लिए मौका दीजिए, दूसरे दिन एक्शन होना चाहिए और हाउस का काम भी मतलब चलना चाहिए। इसीलिए आप एक सर्वोच्च हाउस के आप चेयरमैन बन गए हैं। इसीलिए मैं, मेरी जो आरपीआई है, रिपब्लिकन पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, इस पार्टी की तरफ से मैं आपके साथ हूँ। मैं हमेशा आपको साथ देता रहूंगा और आप मुझे बोलने का मौका देते रहो। जय भीम, जय भारत। Dr. K. Kesav Rao. Thank you very much, sir. First of all, without risking the reputation, I would share the sentiments expressed by all my colleagues regarding your personality and the challenges that this house is going to perhaps throw at you. The little experience that I had yesterday with you, interface, in the BSc, assures me that things are going to be very peaceful and very normal. This I say, repeating, of course, what my honorable colleague said. You would look to the opposition first, to the ruling party, no doubt, because they have to respond, then go back to the opposition. This fulfills the very spirit of parliamentary democracy. We had the other day, yesterday morning, we had an all-party meeting. The total brunt of the discussion was this parliament should represent the voice of the opposition. This came from the TMC. I would rather say it is not opposition, but voice of the people, the sufferers, the people who are suffering. So everybody must get some chance to speak. And the answer to that was time management. Sir, I would not take much time, but except tell you, this is nothing but time management. Rules are rules, but some have to be kept by the spirit and some by their word. And I tell you, you might be an expert in constitution, which you are. We would not like to tell it, but always the rules of the constitution is not going to pay at all in deliberations like this. We need to understand the mood of the people, the spirit of their saying, and also the needs, because we are not at crossroads, we are at crossroads. Total things are crossed. So things require entirely different right. Sir, as far as the last sentence, I would say, there seems to be a big discussion yesterday morning and also yesterday evening with you on the small parties. Sir, we are small parties, no doubt, but in relative term, small is a very relative term.
But what I am concerned is about the union territories, northeastern states, where the membership is only one. This is not small party, it is all the party. So they need, it is a council of states. If the state is not represented in the council of states, there cannot be greater perplexing paradox than that. So we need to see in the small parties, we forget about them. We need to look to them from an entirely different angle because they need to be represented in this house. With these words, I tell you, sir, your wisdom and yesterday's your professorial talk to us on the constitutional ethos give us, reassure us. And I tell you, while sharing all the sentiments, I say it was understated because you deserve more than that. Thank you very much. Shri Premchand Gupta. आदरणीय सभापति महोदय, संसदीय लोकतंत्र के इस गरिमामयी पद पर आप आसीन हुए, इसके लिए मैं आपको मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद जी की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। श्रीमान जी, राष्ट्र के उपराष्ट्रपति और इस सभा के अध्यक्ष के रूप में हमें पूरी उम्मीद है कि आपके नेतृत्व में बहुत ही सुचारू रूप से ये सदन चलेगा, ऐसी पूरी आशा है। श्रीमान जी, आप ग्रामीण परिवेश से आते हैं, किसान परिवार से हैं, आपने बड़े संघर्ष किए हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं आपको पिछले 35 साल से जानता हूं। श्रीमान जी, मैंने आपका वो सफर देखा है कि आप किस प्रकार से आपने सभी बाधाओं को पार करते हुए और अपने लक्ष्य को हासिल किया। आप एक ट्रू कर्मयोगी हैं। आप श्रीमान जी, आप बहुत बड़े एक कानून के ज्ञाता हैं। आप यंगेस्ट एज में आप देश के सबसे उच्चतम न्यायालय के आप सीनियर काउंसिल अपॉइंट हुए थे। ये एक बहुत ही सौभाग्य की बात थी। और श्रीमान जी, शायद बहुत लोगों को नहीं मालूम कि आप आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल और नेशनल आर्बिट्रेशन में आपकी बड़ी भारी एक्सपर्टाइज है। श्रीमान जी, ज्यादा न कहते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि आपके नेतृत्व में इस गरिमामयी सदन का बहुत ही सुचारू रूप से संचालन होगा और हम सब लोगों को बात करने का, बोलने का मौका मिलेगा। इसके साथ एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। श्री इलामारम करीम। बटन वो दबाया, लाइट ये जल गई। Honorable Chairman, on behalf of Communist Party of India Marxists, I welcome the chairman post. Sir, as a well-experienced parliamentarian, I hope you can uphold the glorious past of our parliament. Our nation is defined as a union of states by the Constitution. Each member represents each states. The principles of Constitution such as federalism, secularism, democracy, and social justice are to be protected. If these principles are undermined, it may affect the unity of our nation. I hope, under your leadership, upper house of our parliament will discharge its duties, strictly honoring the Constitution principles and rules of business. I'm very proud to welcome you, sir, because you are coming from a farming community.
who are the annadatas of this country. Legislation is the prime duty of Parliament, so continuous disruption should be avoided. When I met you personally, you requested the functioning of the House should not be disrupted. I agree with you. But for that, the legislation process should be undertaken through a democratic process, strictly through democratic process. People's burning issues are to be reflected in the House. For that, ample opportunity should be obtained for the members. Debates on different issues will be done here in a healthy manner. Important bills should be referred to standing committees or select committees for scrutiny, which is nowadays not happening in this House. Nowadays, it is very unfortunate that Parliament's scrutiny is neglected. Sir, I hope you can uphold the concept of the Constitution and principles of the democracy. And the number is only the issue here, sir. Whether large number or small number, every group and party and individuals are to be respected and should be given opportunity to raise their reasonable issues in this House. I also request the Honorable Chairman of the House and the ruling bench, please cooperate with the Chairman and don't try to deface our Honorable Chairman. Thanking you, sir. Shri Ramnath Thakur. मैं अपने दल जनता दल यू हमारे नेता नीतीश कुमार जी की तरफ से और मैं अपनी तरफ से अपने परिवार की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं दो बातों की तरफ आपसे निवेदन के तौर पर रखना चाहता हूं। छोटे छोटे दलों को आप जिस तरह आप गरीब परिवार से आए हैं, किसान के रूप में, वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में, जब आपके यहाँ गरीब मुवक्किल आते रहे होंगे तो उनके प्रति जो आपकी हमदर्दी रहती होगी, उस हमदर्दी को रखते हुए आप छोटे छोटे दल के लोगों को अधिक समय देकर आप गौरवान्वित करने का अनुभव प्राप्त करेंगे, यह आपसे मेरा निवेदन है। अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो कुछ मेरे पास था तुझ तक ले आया हूं। देख देख दामन छोड़ के न जाना तू, याद रहे हम सबकी, यही कहने आया हूं। धन्यवाद। Dr. Thambidurai. Honorable Chairman, Vanakkam, sir. On behalf of ADMK Party and my General Secretary, Edapadi Palaniswamy, I congratulate you to occupy this highest position, sir. Sir, you know very well, as Prime Minister said, so many eminent persons served in the House, still serving eminent persons in the upper house. You are seeing the photograph opposite Dr. Radhakrishnan. He's a great philosopher and occupied that position which you are occupying now. Therefore, you are an eminent person and also you served as a minister in the 9th Lok Sabha. My association with you at that time where I also served the 9th Lok Sabha, as a minister you performed very well. Not only in the Lok Sabha, at the same time as a minister you visited the Rajya Sabha also. There it is not a new thing you. Sir, and also as I said, sir, eminent persons means, always I remember our Tamil Nadu great leader, Parent Anna, who occupied this in the house and gave many lectures here, many speeches also.
Same way, my leader, Madam Amma Jayalalitha also served in the same Rajya Sabha. Therefore, we are also on the opportunity to serve here under your leadership and your guidance, sir. As our honorable member said, this house is a part of the parliament. I accept that. At the same time, it represents the Council of States. Most of the members representing from various states, they have come over here, not only pass many legislation, and also they protect the states' rights, federalism. The federalism is the most concept. This is the house represents that, sir. And also, sir, as others said about you, you are coming from an agriculture family and also became an eminent lawyer and also served as minister also. Therefore, you know very well about the sentiment of the house. As other members said, sometimes maybe small number here, sometimes large number also. The politics, it may change. Therefore, small numbers cannot be treated as small members because people are always with the small members also in the higher level. That is the position in democracy. Therefore, as others requested, we have to give more time to others. And also one representation I want to make is humbly to make to you, sir. When you were calling for law, I also served as a presiding officer nearly 15 years in the Lok Sabha. As Deputy Speaker Lok Sabha panel of chairman, I served there 15 years. When I am presiding over, at that time we are taking the numbers of when allocating the time for the various political parties. At that time we have to call the small party, different numbers we have to take, sir. Here what is happening? Single member is called at the same time, 4 members we are also part at the same time. It is calling, it's not correct, sir. That I request you, the numbers has to take it. The Lok Sabha we have to take first numbers only. That according to that we are calling. But here the system is different. I request you please to consider it. And also, sir, I am having very affectionate with you. And I hope that on behalf of my party, I will be supporting you. And once again, I congratulate you on behalf of my ADMK party and of my General Secretary, Party Palnisam. Thank you very much, sir. Shri Praful Patel. मेरे सभी साथियों के जज्बातों के साथ अपने जज्बात भी जोड़ते हुए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई इस उच्च पद को ग्रहण करने के लिए। मेरा सौभाग्य रहा है कि आपके साथ 1989 से आपका और मेरा बहुत नज़दीक का संबंध रहा है और इसलिए आपके व्यक्तित्व को, जैसे कई लोगों ने अपने अनुभव में कहा, मैं भी उस बात को समझता हूं और जोड़ता हूं। ये सदन के बारे में और बाकी अपने अपने अनुभवों के बारे में कई हमारे साथियों ने यहाँ पर चर्चा की है, इसलिए उसी बात को या आपके व्यक्तित्व के बारे में दोहराते न हुए ये मैं कहूँगा कि लोकशाही में ये तो अलग बात है कि किसी के संख्या ज़्यादा होती, किसी की कम होती है। कई लोगों ने बोला है इस बारे में। देवेगौड़ा जी जैसे वरिष्ठ हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी बात कही। कभी हम भी पहली पंक्ति में बैठते थे, आज तीसरी पंक्ति में बैठते हैं। तो ये तो खैर समय समय की बात है, लेकिन अनुभव का कोई और पर्याय नहीं होता। अनुभव का कुछ ना कुछ फायदा अनुभव का इसका लाभ इस सदन ने लेना चाहिए और आप इस बात को भली भांति समझते हैं। इसके बारे में आपसे मेरी व्यक्तिगत चर्चा में भी इस बात को आपने हमेशा मान्यता दी है। केवल इतना ही कहूँगा कि आज तो आपको बड़ा वेल डिसिप्लिन क्लास यहाँ नजर आ रहा है। मुझे आज तो शिस्तबद्ध आपको सब लोग दिख रहे हैं। पहला दिन है इसलिए आपके सम्मान में कोई व्यवधान नहीं आने वाला है, लेकिन निश्चित लोकतंत्र में ये सब बातों का आपको भी धीरे धीरे जो आपने टीवी में देखा या आपके पुराने अनुभव में आपने जो देखा होगा उसका कहीं ना कहीं आपको
यहाँ पर ट्रेलर दोबारा दिखेगा जरूर, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा ये लोकतंत्र की ये एक बहुत बड़ी बात है। आप इसको एक कभी कभी प्रेशर कुकर में जैसे स्टीम छोड़ा जाता है, वैसा आप अगर उसको मॉड्यूलेट करेंगे तो निश्चित इस सदन को दोनों बाजू से आप चलाने में बहुत सफल रहेंगे। इतना मैं आपको जरूर विश्वास देना चाहता हूं। अंत में इतना ही कहूंगा कि हमारी पार्टी, हमारे नेता शरद पवार जी, एनसीपी की ओर से, हमारे सदस्यों की ओर से, कि हमने आज तक कभी ये लक्ष्मण रेखा जो पार्लियामेंट्री जो गरिमा है और जो हमारे जो रूल्स है, इसको ध्यान में रखते हुए कभी वो लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं किया है। हमारे ओर से आपको पूरा सहयोग मिलेगा, आगे भी रहेगा, हमेशा रहेगा। और आपको मेरे ओर से, मेरी पार्टी की ओर से, मेरे नेता की ओर से फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आपका सफल कार्यकाल रहे, इसकी प्रार्थना करते हुए आपसे रजा। Honorable members, the list is long. I'm overwhelmed. I would only suggest we economize time. Professor Ram Gopal Yadav. श्रीमान, मैं अपनी समाजवादी पार्टी और अपनी तरफ से आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। आपसे जब मैं पहली बार मिला तो आप जितना खुलेपन से मिले, क्योंकि इससे पहले जब मिलते रहे तो एक प्रोटोकॉल की जो दीवार बनी रहती थी, उतना ही मिलना, यहाँ बैठना, इतनी दूर बैठना, वो कुछ नहीं था। ये एक स्वाभाविक रूप से बहुत ही अच्छी बात थी और हमारे सारे मेंबर्स ने ये महसूस किया और उसकी तारीफ भी की। जहां तक के इस सदन की बात है, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब यहाँ बात होती है तो सब लोग सैद्धांतिक रूप से कहते हैं कि मैं सहयोग करूंगा, मैं सहयोग करूंगा, मैं सहयोग करूंगा, और कल आप देखेंगे बहुत सारे लोग सहयोग नहीं करेंगे। कारण ये होता है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो जन आकांक्षाओं के खिलाफ होते हैं, या तो गवर्नमेंट के आदेश या फैसले या कोई बिल जो आ रहे हैं उनमें ऐसे प्रोविजंस होते हैं जो आम लोगों के हितों को एडवर्सली प्रभावित करने जा रहे होते हैं। तब जनता, जिनके हम प्रतिनिधि हैं, उनकी अपेक्षा होती है कि हमारी बात को यहाँ बैठे हुए लोग कहें, और अगर इजाजत नहीं दी जाएगी तो ये साइलेंट नहीं बैठ सकते, और साइलेंट बैठेंगे तो वो कल हमसे कहेंगे हमारे हितों के खिलाफ जब कानून बन रहे थे तो आप क्या कर रहे थे हाउस में। ये मजबूरी विपक्ष के लोगों की समझने की आवश्यकता है सबको। इसलिए मैं आपको बधाई तो देता हूं, स्वागत करता हूं, लेकिन ये आपसे वादा नहीं करता हूं कि सदन में व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। अगर जनहित के खिलाफ कोई बात होगी तो निश्चित रूप से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी। सर, इस पे मेरा 2-1, हाँ, थैंक यू। ऑनरेबल चेयरमैन सर, मैं अपनी पार्टी की तरफ से, शिवसेना की तरफ से और पार्टी के अध्यक्ष श्री उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी की तरफ से आपको बधाई देना चाहूंगी और आपको शुभकामनाएं भी देना चाहूंगी कि आने वाले समय में आपका एक फ्रूटफुल टेन्योर रहे, सक्सेसफुल टेन्योर रहे। सर, राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स है। हम सब अपने अपने राज्यों से चुनकर आते हैं। राज्यों की जो तकलीफें हैं, जो दिक्कतें हैं, हम उसको एक नेशनल लेवल पे लाकर उसके पे व्यापक चर्चा चाहते हैं। और राज्यसभा एक सबसे इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है जहां हम अपनी राज्यों की दिक्कतें बता सकें। दुर्भाग्य ये है कि आजकल सुनवाई कम होती है और आरोप ज्यादा लगते हैं। तो आपसे, आपकी तरफ देखकर मेरी बस यही उम्मीद रहेगी कि आप इस पर संज्ञान लेंगे, विपक्ष को भी बोलने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ बहुत माननीय सांसदों ने कहा
कि हम लक्ष्मण रेखा नहीं पार करना चाहते हैं और लक्ष्मण रेखा पार भी नहीं करते हैं। कोई भी यहाँ पर विपक्ष में, मैं मानती हूँ, लक्ष्मण रेखा नहीं पार करना चाहता है, पर सर जब अहंकार धर्म के ऊपर हो जाता है तो लक्ष्मण रेखा पार करना विपक्ष की जिम्मेदारी हो जाता है। तो वो काम हमने निभाया है, निभाते रहेंगे और उम्मीद है कि आपके एक्सपीरियंस को आप ध्यान में रखकर हम सभी को हमारी पार्टी की बात रखना, हमारे राज्य की बात रखने को महत्व देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। श्री विनोय विश्वम। Thank you, sir. Sir, I welcome you. I bow my head before you, and I wish you all possible cooperation. Sir, I may request you, kindly cooperate with us, to cooperate with you. When I say this, I mean not only you, the government also has to cooperate with us. So we are here to raise the voice of the people. And we will be doing that task of ours. Sir, I represent a small party, but I believe the small party is a great party which always has stood for the cause of the people, cause of the country, the cause of the constitution, always held the values of the democratic norms, secularism, federalism, and this country's socialist goals. With this, we came here, and we have a right here, a duty here, to raise those tasks in our capacity as much as possible. So this is the parliament. And in this parliament, we are sure that we have a role as opposition. Only that role we will play here. We heard the Honorable Prime Minister in the morning. He talked about Amrit Kal, the G20 chairmanship. We all wish that in this Amrit Kal, during this period of chairmanship, India can come to the better position in the global hunger index. We stand for that. He talked about Adivasis, Dalits, and women, and we wish that all those promises made by the government for these sections, the poor sections, he fulfills. We argue for that. And for such activities, we expect that they will cooperate with us. Sir, you are a Kisan-oriented man. He also talked about the Kisan. We have a request. Kindly legalize the MSP for the Kisan. So the promise, sir, one more. Sir, short duration discussion, calling attention, Rule 267, all these are in the rule book. We ask only those items in the rule book. But many a time, when it is denied, we have no other option but to raise the voice. Kindly help us not to raise the voice. Sir, one more thing, sir. I cannot resist myself because I felt it very seriously. When we met yesterday for the first time, I thought that you would be a man of great protocol and great high-handedness. I came with that expectation. But you shattered all my expectations. You beheld me as a man known to me for so many years. I never expected a vice president, a chairman, to come to the car to see of a member. You did that. The first time yesterday, I told to my wife, I never report my parliamentary experience to my wife on a day-to-day basis. And then when I see her, I tell her. But yesterday, I thought that I should talk to her. I told her I met the chairman. And I told, he asked about you. He asked about our daughters. He knows everybody. Then she asked me how. I don't know how, but that is you. And my party have great trust on you, sir. And with this words, I conclude. Shri Ramji. श्रीमान जी, मैं अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से और अपनी तरफ से मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं।
श्रीमान जी, आपका जीवन वाकई संघर्षपूर्ण रहा कि आपने संघर्ष के दौरान तमाम विभिन्न पदों पर रह करके आपने देश की सेवा की है और आज एक छोटे से गांव से निकल करके आप इस देश के उपराष्ट्रपति बने और राज्यसभा के आप अध्यक्ष भी। वाकई ये आपका जो जीवन है, संघर्षपूर्ण जीवन, हम सभी लोगों के लिए एक प्रेरणादायक भी है और हमें पूरी आशा और विश्वास है कि आपका जो हम सब जो विपक्ष के भी लोग हैं और सत्ता पक्ष के भी लोग हैं, आपके लिए हम दोनों लोग बराबर ही हैं और तमाम ऐसे जनहित के मुद्दे आते हैं। हम लोग 0 आवर में हम लोग आपको एप्लीकेशन देते हैं बोलने के लिए, लेकिन तमाम उन मुद्दों पे हमें समय नहीं मिलता, हमारा नाम कर जाता है या समय नहीं मिलता, 10 लोगों का नाम सेलेक्ट होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि 0 आवर में सभी सांसदों की जेन्युइन बातों को टाइम दें ताकि जनहित के मुद्दे हैं उनको यहाँ पे आवाज उठाई जा सके। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और आपका लगाव हमारे पार्टी के संस्थापक माननीय श्री कांसीराम साहब के साथ बहुत रहा है और हमें पूरा विश्वास भी है आपका आशीर्वाद हम सब पर बना रहेगा जी। धन्यवाद। श्री कनक मेदला रविंद्र कुमार। Chairman, sir. Thank you for giving us opportunities. Sir, on behalf of Telugu Party and on behalf of our leader, Chandrababu Naidu, I congratulate you to see in the post and the chair. Sir, you hail from a remote village in Rajasthan and reached the heights of the second constitutional post of this as vice president of this one. Sir, apart from that, you are a constitutional expert and also constitutional safeguard. You have filed a position to protect the safeguard the provisions of the constitution. And sir, you belong to legal fraternity. I am very happy to know that you have practiced from magistrate court to district court, high court and Supreme Court. Sir, you know the importance of the time and giving the opportunity to the members and unlike advocates. If you are not, if the advocate did not get an opportunity, did not allowed by the judge to present his case, he may lose his case. So likewise, if the opportunity is being given to a member, then he will justify his, his duties as a member of the Rajya Sabha and examining in the same point, similar point. I hope that you will give opportunity to the smaller parties since I am the lone member from our party and I expect that you will give sufficient time to participate in the debates and all citizens. Thank you, sir. Once again, congratulations. Shri Abdul Wahab. आदरणीय सभापति जी, मेरे तरफ से और माय पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, मेरा पार्टी प्रेसिडेंट सादिक अली शिहाब तंगल से आपको कामयाब देते हैं। हम हिंदी में पहले दफा, अच्छा ना, सुस्वागत। Great future for you. ओके, हिंदी में पहले बार बात करता है इधर। मेरा DMK friends may not like this, but okay, Shivaji is hello. Okay, I am last time, last how many 12 years, I am known as a 1-minute speaker or 2 minutes maximum, even though I am allotted 3 minutes, 5 minutes. My only request to you, this one, instead of putting us the tail enders, you put just like what you call a sandwich. One party, then small party, then one party, then small party, so that it will be justified and we can tell something, some points. Otherwise, everything is told by everybody. So, मेरा request है, ये ऐसा करने के सब काम आपको नमस्कार। श्री वीरेंद्र प्रसाद वैश्य।
I, and on behalf of my party, AGP, Assam Gana Parishad, congratulate you for your election as the Vice President of India and Chairman of Upper House of our Parliament, sir. So it is known to everybody, you have a vast experience in your social and political life, sir. Started a career as a good lawyer. You served the nation as a law minister. You served the nation as a parliamentary affairs minister. Even you served the West Bengal as a governor of West Bengal, sir. Sir, it is a golden opportunity for us to welcoming you as a chairman of upper house of our parliament, sir. Sir, I am coming from the northeastern region of our country, sir. Sir, population structure of northeastern region, you cannot compare with the other parts of the country, sir. Our population is less, sir, which compare with the other state of our country, sir. So, I like to give one example. This is your first day, sir. Being a shortest population, Mizoram has only one member in Rajya Sabha, sir. Arunachal have one member in Rajya Sabha, sir. Nagaland, only two members in Rajya Sabha, sir. Problem is that although they elected from their, it is a council of state, sir. They elected. Sir, the point is registered. Yes, no, Point is they registered. registered. They represent Mizoram, sir. It means 100% they have elected, but they treated us as a small party. They are not getting time to speak. I like to, my submission is that kindly allow all the small parties also keep some time. At least they can address problems faced by respective state chair. With this, sir, I again welcome you and I wish all the success you as the chairman of the Rajya Sabha. Yes. Honorable Mr. Chairman, sir, I am so thankful to you for giving me this opportunity at the fag end of the discussion. Normally, we are the victims, small parties. Of course, we can express our views on this parliament, but whenever discussion takes place, the bigger parties are given more time, more than they deserve. The small parties, it should be given ample opportunity to protect the cornerstones of this constitution: secularism, federalism, social justice. Today, we are standing at the crossroads of the history. Secularism has become a question mark. Social justice has become a question mark. So what we are going to do with these questions, and because brutal majority should not bulldoze the basic concepts of this constitution, particularly social justice and secularism. If it happens, then the future of the country, the integration of the country will become a question mark. This is my perception, and I am so thankful to you. Once again, you are a legal luminary, and you have been handling so many portfolios, and as a minister, as a parliamentarian, as a jurist. Therefore, we also expect justice from the chair. I once again extend my heartiest thanks and felicitations and congratulations to you for having become the chairman of this house. Thank you very much, sir. Sri J.K. Vasan. Diversity is the strength of our country, sir. This house represents that exactly, sir. The members of this house, sir, represents various states, villages, towns, district headquarters and cities, sir. People of those areas expect members to echo their voice. That is the expectation of the members, sir.
You are a man of wisdom, sir. We are confident, sir, that you will definitely guide us getting the support of our people. Thank you, sir. Dr. Van Viroy Karluki. Sri K. Wallace Wana. Sri Jose K. Mani. Sri Jayant Chaudhary. सभापति जी, मेरे लिए व्यक्तिगत तौर से बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है कि आपके सानिध्य और नेतृत्व में मुझे इस सदन के एक सदस्य के तौर पर काम करने का मौका मिलेगा। सभी सदस्यों ने माना, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपके जीवन परिचय के बारे में बहुत बात बताई। खुशी इस बात को लेकर भी है कि आप एक गांव के परिचय से आते हैं और इसलिए जो किसान की पीड़ाएं होती हैं, जो उनकी मेहनत होती है, जो धरती की पुकार होती है, उस भाषा को आप भली भांति जानते हैं। आप ये भी समझते हैं कि अक्सर सरकार के दावे और इस सदन में की गई बातों से धरातल पे जो तस्वीर है वो भिन्न होती है, अलग होती है, और इसलिए हम आपका संरक्षण चाहेंगे कि कोई गरीब से जुड़ी बात, आदिवासी से जुड़ी बात, किसान गांव की कोई बात अगर कोई भी मान्य सदस्य यहाँ करता है तो उस बात को आप और वक्त दें, उस सदस्य को और समय दिया जाए। आपने बहुत प्रेम भाव के साथ जब उपराष्ट्रपति का दायित्व संभाला हम सबको बुलाया, और मुझे तो आपने इतना बड़ा ग्लास केसर के बादाम का दूध का पिलाया था और उसकी मिठास अभी भी मेरे जुबान पर है। बस आपका संरक्षण और आशीर्वाद चाहेंगे कि समय समय पर कुछ मीठी, कुछ कड़वी बातें इस सदन में हम उठा पाए। धन्यवाद। श्री अयोध्या रेड्डी। YSR Congress Party and our President Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy, we congratulate you and welcome you as a chairman of this August House. Sir, you are a role model when we look at your personal life, you know, the discipline, the commitment, the hard work with which you have grown, and also the professional life in which, you know, your wisdom and your experience, expertise was contributed, and then your social contributions that we have seen, and also the political contributions and the rich experiences that you have seen and served this nation makes you the real, you know, the role model for this country. And you are, when we look at you, I wanted to tell you, sir, through you, I wanted to communicate to this house that as the largest democracy, we have a greater responsibility, you know, to showcase to this world that India is not just the largest democracy alone, just in its constitution, but also in practice. They are going to showcase to the world. So a clear dimension and direction need to come under your leadership through this house, the way we are going to make ourselves present. Secondly, sir, during your leadership only, this country is going to be the third largest global economy. So we have to ensure that how a global leader has to present themselves and how the issues have to be raised in the house and how the house has to give the direction to the rest of the country need to be brought in. And also by 2047, when we achieve 100 years of our independence, the country is going to be second largest economy. So keeping those things in mind, the house also has to behave, and the house also has to make ourselves, you know, accountable to the rest of our country. So with those points, we welcome you, sir, and we wish you all the very best. Thank you very much. Government has to be here. Shri Ghulam Ali. मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेटेड मेंबर होने के नाते मैं चेयरमैन साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दूंगा कि आपके साथ जो हमारी 2-3 मुलाकातें हुई ओथ के टाइम पे,
या देश के वजीर आजम ने जो सुबह कहा, आपके विजन से, आपकी जिंदगी के इस तजर्बे से हमें एज ए न्यू मेंबर सीखने का मौका मिलेगा और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इस विजन का हमें भरपूर फायदा होगा और आप सबको यू कैन फीलिंग ऑफ ऑल द मेंबर्स। शुक्रिया, धन्यवाद। श्रीमती पीटी उषा। Sir, in a short span as the Vice President of India and the Chairman of this august House, you have won the confidence of people and people's representatives across the political parties. This is evident from the emotions poured in the speeches of leaders of both treasury and opposition. My special thanks to Honorable PM of India for his concern for the marginalized. It is a grace for the nation that our Honorable President of India belongs to tribal community. It is a great honor for the tribal community, and a son of a farmer is now Vice President of India. This is a new India where Republican spirit is now transferred from symbolism to substantive form. Your role and personality, your intellect and philosophy of life will create a history, add values to the second chamber. Sir, we are upper house. We are extended to play vital role as statesmen. Your leadership will be helpful to strengthen the glory of the house. With these words, I congratulate you, sir. Thank you. श्री प्रमोद तिवारी। माननीय सभापति जी, मैं आपका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं और इस बात का धन्यवाद भी देता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया। अनवर, जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, बहुत बड़ी बड़ी विभूतियां बैठी हैं, उनका पुराना इतिहास आपके सामने है। आज उनका नाम आदर से लिया जाता है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पहचान कुर्सी से होती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जब कुर्सी पे बैठ जाते हैं तो उस कुर्सी की गरिमा बढ़ जाती है। मैं यही कामना करूंगा कि जब आपको याद किया जाए तो राज्यसभा की गौरवशाली परंपराओं के लिए याद किया जाए। हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन ने साहब आपकी सारी खूबियां बताई और लोगों ने भी बताई। एक खूबी में जो छूट गई है, मैं उसे जोड़ना चाहता हूं। हम लोगों ने आपको सड़क पर विपक्षी नेता के तौर पर संघर्ष करते ज्यादा देखा है, सत्ता में कम देखा है। ये मैं अपना भविष्य ठीक करने के लिए बोल रहा हूँ, हम सबका भविष्य ठीक। सर, तो मैं समझ सकता हूं कि आपको विपक्ष की चिंताएं, परेशानियां और कष्ट का अंदाजा किसी और से बेहतर होगा, क्योंकि एक साधारण परिवार से यहां तक का सफर आपने तय किया। और अभिषेक भाई भी कह रहे थे, लीगल फील्ड में आपका बड़ा नाम था सर, लेकिन वहां एक फर्क था, यहाँ एक फर्क है। वहां तो आप प्रार्थना करते थे फैसला गरीब के हक में आए, पर सर अब तो यहाँ आपको फैसला करना है, और फैसला जो कभी बड़ों के खिलाफ होता है, और बड़ों से मेरा मतलब यहाँ तो सरकार से, तो सर ज्यादा दुआएं मिलेंगी, ज्यादा आशीर्वाद मिलेगा, ज्यादा लोगों को इतिहास आपका याद रहेगा। इतिहास तो सब पढ़ लेते हैं सर, मैं सर सिर्फ एक आग्रह करना चाहता हूँ, इतिहास में आप ना पढ़े जाएं सर, इतिहास आप बनाएं, इसके लिए पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा रहेगा, ये हम सब आपसे वादा करते हैं। के मनी। और एक बात कह के मैं जरूर बात अपनी खत्म करूंगा। सर, उत्तर प्रदेश से हूं, राजस्थान से चुन के आया हूं
अब ये कहने की जरूरत नहीं कि राजस्थान में आपने जन्म लिया है, वहाँ की विषमताएं हैं, मुकुल भाई भी राजस्थान से आए हैं। तो अगर आप हम लोगों का ख्याल रखेंगे तो आप राजस्थान का ख्याल रखेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि भविष्य में ऐसे ही आप मुस्कुराते रहें। सर मेरी तरफ देख लीजिए जरा, मुस्कुराते ऐसे ही आप मुस्कुराते रहें, ये हमारा प्रयास होगा। इनके चक्कर में मत पड़िएगा सर, इनके चक्कर में जो पड़ा हो गया। धन्यवाद। I extend my hearty congratulations in assuming the taking up the post of the chairmanship of the upper house. So we had a meeting yesterday with the all-party meeting of the leaders of the all-party. The great concern over there was the number of days are reducing, the working days are reducing in the parliament, and also the working hours are reducing. And there is an issue like every year, and before or after or in between the session, there could be an election as anywhere in the nation. Could be in one state or could be in another state. But the schedule of the parliament is shifted as per the election in the state. My only request is that irrespective of the election, the parliament is very important. You should not reduce the number of days and number of hours just because of the election in some state. This is actually unjust. You are doing unjust to the people of the nation. So it is injustice also. So I plead on behalf of all the parties over here. We should have number of days. Maybe it should be increased and increase the deliberations and the discussions so that the people will benefit. Thank you so much, sir. Sant Balbir Singh. Very briefly. बहुत बहुत धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਭ ਅਸੀਸਾਂ ਸਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਇਡੂ ਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਧਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਆਏ, 8 ਦਿਨ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਸੰਸਦ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਪਕਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। 8 ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਚਾ ਹੋ, ਰੌਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ ਪਰ 8 ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੋਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। थैंक यू ਧੰਨਵਾਦ। श्रीमती रंजीत रंजन। जी सबसे पहले मैं आपको राज्यसभा के सभापति बनने के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और मैं इससे पहले लोकसभा में थी, मुझे जो 3-4 स्पीकर्स याद है जो हमारे रहते। मैं सोमनाथ दादा को बहुत एडमायर करती हूँ, संगमा साहब को, यहाँ पे हमारे गार्जियन वेंकैया नायडू साहब थे। इन सब ने अपनी छाप छोड़ी थी। मैं आपसे एक बहुत बड़ी उम्मीद रखती हूँ सभापति जी कि दिनों दिन पक्ष हो विपक्ष हो, हमारे सदन की डिग्निटी, अच्छा कहे या बुरा कहे, धीरे धीरे नीचे आ रही है। ना पक्ष है ना विपक्ष है। हम सबको लगता है कि हम सबको बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर डिस्कशन होना चाहिए, बहस होनी चाहिए, एक दूसरे को सुनने का साहस होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। मुझे लगता है उसकी कमी है और बहुत उम्मीद है। मैं आपसे 2-3 बार मिली, बहुत पुराने भी हम लोग मिले, तो एक गार्जियन की तरह आपको देखती हूँ और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जिस तरह बाकी स्पीकर्स जो कुछ थे जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी को छिपा के भी आज यहाँ पर वो सभापति हैं,
तो सभापति का क्या फर्ज है उन्होंने निभाने का काम किया। मुझे बहुत उम्मीद है और विश्वास है कि सदन की गरिमा को बचाने के लिए आप एक अहम रोल अपनाते हैं, एक अहम जिम्मेदारी है। और हम लोगों की खासकर जो विपक्ष के रूप में हम लोग आज आपके बीच में है, हमारे कम मेजॉरिटी में हो ज्यादा हो, मुझे विश्वास है कि आप हमारे पूछने का राइट और सवाल पूछने का राइट, इस हक को आप मारने नहीं देंगे। इस विश्वास के साथ मैं आपको फिर से बहुत बहुत बधाई देती हूँ। नारजारी, थैंक यू। धन्यवाद। श्री रमन गवरा नारजारी, very briefly, sir. Thank you, sir. Chairman, sir. First of all, I thank you for your favor towards me, allowing a little moment to rise before you. And with due respect, I, on behalf of my party, United People's Party Liberal, and my party president Pramod Boro, would like to express our deep gratitude and honor the honorable chairman of this Rajya Sabha, and wish for your successful tenure in discharging as chairman of this August House. As I represent Assam from United People's Party Liberal, which is a small regional party and an NDA partner working in Bodoland Territorial Region, Assam, would like to welcome and express deep respect to your honor for and on behalf of the millions of people of Assam, and particularly from Bodoland Territorial Region. Sir, under your able leadership in this August House, I do hope your honor will give ample scope to raise important issues of our state as well as our region, praying your good health to Almighty, and with due respect, I take my seat in this moment. Thank you, sir. Thank you. Very briefly, Shri Vikramjit Singh Sahni, very briefly, sir. सर, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि तेरी रजा क्या है। This sums up your personality. Thank you. Thank And you. जैसे आपने माइक्रो मैनेजमेंट की है पिछले कुछ महीनों में, और हमारे जैसे गैर राजनीतिक व्यक्ति को भी गले लगाया, और सब एक एक व्यक्ति को एक एक इस अगस्त हाउस के मेंबर के साथ डायलॉग किया, इसकी कोई उदाहरण नहीं मिलती। और आप किसान पुत्र हैं, and I hope, sir, this house will be able to bring about significant changes in the plight of farmers. और कहते हैं इंसान वो आदमी वो बड़ा होता है जिसके साथ होने पे आप खुद छोटा नहीं महसूस करें। और खास करके जो आज आपने ये पंजाबी विच तुसी राज्य सभा बुलेटिन शुरू किया है, इदी भी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बधाई देना। और अमृत काल में एक नए इतिहास की रचना होगी, और आप उम्मीद करते हैं कि हर चीज, जैसे मैंने अपना 100 डेज का रिपोर्ट कार्ड दिया, हर चीज डायलॉग से, बातचीत से उसकी निवृत्ति होगी। कोई भी मेंबर वेल में आके अनवेल नहीं होगा। धन्यवाद। Thank you. श्री घनश्याम तिवारी। सभापति महोदय, मुझे इस बात का बहुत बड़ा गर्व और खुशी है कि आप जहां से आते हैं वहां से मैं आया हूं, और मैंने आपको बचपन से लेकर अब तक एक बहुत बड़ी शख्सियत के रूप में, एक नर से नारायण बनने की जो कहानी होती है, उस कहानी को आपने पूरा किया है। एक गांव झुंझुनू के से आपने जिस प्रकार राजस्थान की सेवा की, राजस्थान की विधानसभा में मैंने आपके तेवर देखे, लोकसभा के चुनाव में मैंने आपके सारे अभियान में मैं आपके साथ रहा, और फिर अन्य मामलों में चाहे कोर्टों में हो, सब जगह हो, मैंने आपका पूरा संघर्षपूर्ण जीवन और आपका I think we will have to decide whether we can let out secrets here. अरे सीक्रेसी नहीं है, ये लोगों के लिए प्रेरणा की बात, इसलिए मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि आपका जो जीवन है वो जीवन एक प्रतीक के रूप में है, एक ऐसे समाज में से जो समाज पहले जागीरदारी से पीड़ित रहा था, उस समाज में से उठकर इस स्थान तक पहुंचना, और उस समाज को भी बहुत प्रकार से आगे बढ़ाना, और अन्य समाजों के साथ सामंजस्य करके राजस्थान में जिस प्रकार का आपका नाम हुआ है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं एक बात कहकर समाप्त करूंगा सभापति महोदय,
सारी भाषाओं में कुछ कुछ लोगों ने कहा है, तो मैं आपके लिए संस्कृत में कुछ करना चाहता हूँ। शशिना निशया निशयाच शशि शशिना निशयाच विभाति नभय पैसा कमलम कमलेन पय पैसा कमलेन विभाति श्रय। माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार चंद्रमा से रात्रि की और रात्रि से चंद्रमा की और चंद्रमा और रात्रि दोनों से मिलकर आकाश की शोभा होती है, उसी प्रकार से पक्ष और प्रतिपक्ष की और प्रतिपक्ष और पक्ष से मिलकर आसन की, इन दोनों से मिलकर जो संसदीय लोकतंत्र की शोभा होती है, उस संसदीय लोकतंत्र की शोभा बढ़ाने का आप कार्य करेंगे। इन्हीं के साथ आपको बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर शिव दासन। Dr. Sir. Yeah, respected Chair. Sir, this is the Council of States. So here in the House, we shall hear the voice of states. Sir, this is the place of the discussion and debates. So I believe the chairman will protect the rights of the members, and he will, chairman will provide the opportunity for the proper discussion on bills and other subjects. So we request the proper time for the discussion and debates in this House. Sir, that is my humble request for you, sir. Congratulate you. Thank you. Because of the time factor, it is becoming difficult to accommodate some of you who wanted to say something. Very briefly, I would complete the list very briefly. Shrimati Rajni Patil. Ma'am, very briefly. थैंक यू सर। एक्चुअली हमारे विपक्ष के नेता खरगे साहब बोलने के बाद हमारे कहने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि हाथी के पाँव में सबके पाँव आते हैं। हमारे पार्टी की तरफ से वो बोल रहे थे, लेकिन सभी लोगों ने जो बोला उसमें एक बहुत ही बड़ी बात छूट गई है, जो मैं यहाँ पे उद्धृत करना चाहती हूँ। मैं और मेरी सहकारी वंदना चौहान जी जब आपको मिलने आए थे, तो जो हमने देखा और हमने जो महसूस किया, वो सबसे बड़ी बात जो एक महिला हो के मुझे लगी, वो मैं आपके बारे में बोलना चाहती हूँ। क्योंकि सब लोगों को रानी लक्ष्मीबाई चाहिए, लेकिन वो पड़ोस के घर में चाहिए, अपने घर में नहीं चाहिए होती है। आपके यहाँ हमने देखा कि जिस प्रतिष्ठा से, जिस अभिमान से आपकी धर्मपत्नी श्रीमती सुदेश धनखड़ को आपने हमें मिलवाया, और जितने प्यार से हमें इनके बारे में आपने हमें बोला, मैं और वंदना जी बाद में भी बहुत देर तक आपके लिए चर्चा कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने पीएचडी भी किया है, उनके लिए आपने बहुत अच्छा कुछ बोला। और हमें लगा कि बहुत सारे लोग सिर्फ घर में रखते हैं पत्नियों को और सिर्फ बोलते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष कृत्य में कुछ होता नहीं। तो इसलिए ये एक आपका पहलू मैं करना चाहती थी। और जो हमारे नेता खरगे साहब ने जो बोला, जो उन्होंने बोला, उसका एक सिर्फ उदाहरण देना चाहती हूँ कि एक श्लोक में कि जब हमारा दिन आएगा, उन्होंने बोला, तो जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला था कि मनुष्य न हो तो बलि, समय हो तो बलवान, बिल्लर चोरे गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। जब अर्जुन और बाण वही था, तो भी अर्जुन का जब हार हुई थी, तो वही अर्जुन वही बाण होता है, समय हर एक का आता है। धन्यवाद सर। ब्रीफली डॉक्टर साहब। मैं आपकी पर्सनैलिटी, धन्यवाद सभापति जी, और आपका स्वागत करते हैं। मैं आपकी पर्सनैलिटी दो पंक्तियों में पूरी करना चाहूंगा। वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को तालीम नहीं दी जाती उड़ानों की। तो आप वो शख्स हैं जो राजस्थान से आए हैं, और मेरे माताजी, मेरे पिताजी दिवंगत हैं, और वो भी राजस्थान से थे। वो बचपन से जो हमें कहानियां सुनाते थे कि राजस्थान की लाइफ कितनी टफ है, कितनी हार्ड है, वो सब करते हुए आप इधर आए हैं। एक और बात कि हम लोग राजनीति के स्कूल में नर्सरी में हमने दाखिला लिया है, और क्योंकि बिल्कुल हम छोटे हैं, तो हमें ज्यादा सीखने की जरूरत है, और हमें अब ज्यादा मौका देंगे और ज्यादा समय। अहमद अशफाक करीम। सर वेरी ब्रीफली। माननीय सभापति जी, मैं राष्ट्रीय जनता दल से हमारा ताल्लुक है। मैं आज आपका खैर मकदम करते हुए फख्र महसूस करता हूं। आपकी इज्जत अफजाई करते हुए, और जितना सभी माननीय सदस्यों से सुना,
और भी फख्र और भी सर ऊंचा होता है। कुछ रोज कबल आपने मुझे तबादला ख्याल करने का मौका फराहम किया था। आपकी गुफ्तगू से मैंने आपकी काबिलियत और आपकी इल्मी सलाहियत का कायल हो गया और उम्मीद करता हूं कि रैशनल अप्रोच के साथ आपकी सरपरस्ती में ये सदन चलता रहेगा और बहुस्न खूबी आगे बढ़ता रहेगा। थैंक यू। साबिक चेयरमैन की अलविदाई के मौके पर मैंने इसी सदन में कहा था, आप जैसे बावकार लोग बावकार चेयर दूसरों के हवाले कर देते हैं और आज हम सबों के बीच आप सभापति की कुर्सी को जीनत बख्श रहे हैं। मैं ईश्वर से दुआ करता हूं कि आप सेहत व आफियत के साथ इस सदन को आगे बढ़ाते रहें और बड़ी खुशी होती है जब मुझे बैठाल कर कोई मेरी तारीफ करता है और सच्चाई बयान करता है और कितना खुश हूं कि आप बैठे इस जीनत भरी कुर्सी पर हैं और सारे लोग आपके ताल्लुक से बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। ये बड़ा ही बहुस्न खूबी का मौका है। बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान प्रतापगढ़ी। आदरणीय सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत स्वागत है, खैर मकदम है। ये वो पहले शब्द हैं जो मैं इस हाउस में पहली बार बोल रहा हूं। पिछली बार विदाई समारोह था तो ऐसा मौका आया था कि मैं बोलूं, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मैं स्वागत समारोह में बोलूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं बस 1 मिनट आपका समय चाहता हूं। बस मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि मैं सदन में दूसरा सबसे छोटा, सबसे कम उम्र का सदस्य हूं, तो मेरी गुजारिश आपसे यह है कि ये जो दीवारें हैं ये सिर्फ ईंट गारे और लकड़ी से बनी हुई नहीं है। इसमें न जाने देश के करोड़ों लोगों की भावनाएं और जज्बात शामिल हैं। ऐसे में देश चाहता है कि यहां अच्छी बातों पे बहस हो, बातचीत हो, और आप हमारे परिवार के मुखिया हैं, राज्यसभा का जो परिवार है उसके आप मुखिया हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम सारे लोग यहां से अवाम की बात उठाएं तो आप हमें महफूज रखें और हमारी नुमाइंदगी करते हुए हमें बोलने का मौका दें। क्योंकि आप देश की उच्चतम न्यायालय में आपने इंसाफ की लड़ाई लड़ी है और यह देश का उच्च सदन है, तो हमें उम्मीद है कि आप हमें यहाँ इंसाफ की लड़ाई लड़ने देंगे। ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस। माननीय सभापति महोदय, आज हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है। क्या आप इस उच्च सदन के सभापति के रूप में इस प्रतिष्ठित पद पर आसीन हो रहे हैं। मैं दिल की गहराइयों से आपको बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी अभी हमें याद दिलाया कि आज आर्म फोर्सेस फ्लैग डे भी है। मुझे याद आ रहा था एक अंग्रेजी फिल्म स्टार वॉर्स, जिसमें एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य हुआ था, मे द फोर्स बी विद यू। आज तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली गई हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने आपको चक्कर में ना आने की भी सलाह दी। अभी अभी एक युवा सदस्य ने कहा आपकी जिम्मेदारियों के बारे में आपको याद दिलाने की कोशिश की। ये अलग बात है कि जिम्मेदारी तो हम सबकी बनती है कि सदन अच्छा बने, अच्छी तरीके से चले। आपकी जिम्मेदारी तो हम सबका ख्याल रखने की है। सदन अच्छा चलना तो हम सबके हाथ में, और मेरा विश्वास है आज जो अच्छी अच्छी बातें रखी गई हैं, जिस प्रकार से उत्साह के साथ सबने आपका स्वागत किया है, आगे आने वाले दिनों में हम यही भावना हमारे कार्यकाल में भी रखें, काम में भी रखेंगे। और क्लियरली आपके साथ लगभग सभी सदस्यों का मिलना जुलना हो चुका है। एक ना एक मौके पे हम सब आपको मिल चुके हैं। तो मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि इट्स अ जॉय टू बी विद यू, टू मीट यू, टू एक्सचेंज नोट्स विद यू, टू टॉक टू यू। अब पता नहीं वो राजस्थान से आप लेके आए हैं या सिटी ऑफ जॉय से, जहां से आप बहुत ही सफल अपना गवर्नर का कार्यकाल कर कर दिल्ली आए। पर वास्तविकता यह है कि आपकी अध्यक्षता में इस सदन में मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत सारे जॉयफुल ओकेजन्स हम सब मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। इस सदन की काम की महत्वता देखते हुए हम सब कोशिश करेंगे कि किसान पुत्र जो आज देश के उपराष्ट्रपति बने हैं, जो एक प्रकार से हम सब के लिए प्रेरणा का स्तोत्र भी है, जिस प्रकार से इन्होंने
एक बहुत ही विपरीत परिस्थितियों से अपना जीवन शुरू करके आज इस उच्च पद तक की जर्नी ट्रैवर्स की है। मेरा पूरा विश्वास है कि हम सब भी उससे बहुत कुछ सीखेंगे, अपने कार्य में भी, अपने काम में भी उसकी झलक आपको दिखाने का कोशिश करेंगे। हम सब बहुत गर्व महसूस करते हैं कि आपकी जो बुद्धिमत्ता है, जिस प्रकार से आपने एक बहुत वरिष्ठ वकील के रूप में देश की सेवा की, न्यायालय की सेवा की, शायद यू मस्ट हैव बीन द यंगेस्ट to become a senior advocate in the Supreme Court within 11 years of your practice. मैं समझता हूँ शायद उस समय जजेस ने भी कुछ स्पार्क देखी होगी, कुछ ऐसा अलग देखा होगा जिसके कारण आपको ये बहुत बड़ा एक प्रकार से स्थान मिला और बहुत बड़ी सर्टिफिकेट उच्च न्यायालय से आपको दी गई। एक नई परंपरा जो अब इस देश में स्थापित हो रही है, बड़े सामान्य घर से सामान्य जीवन बिताने वाले सामान्य साधारण परिवार के राजनीतिक नेता या समाज के नेता आज बड़े बड़े पदों पर हैं। हमारी महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी एक टीचर थी, छोटे से स्कूल में टीचर के पद से उड़ीसा के वनवासी क्षेत्र से आकर आज वो इस देश के सर्वप्रथम पद पर है। आप एक किसान पुत्र, धरती पुत्र, जिन्होंने एक छोटे से गांव में, आज बताया गया सैनिक स्कूल से शिक्षा लेके 12 किलोमीटर दूर रोज चल के जाना, शायद ये भी एक कारण है कि आप इतने फिट हैं आज भी, और आज इतने उच्च पद पर उपराष्ट्रपति के रूप में। हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी एक चाय वाले के घर पे पैदा होकर रेलवे स्टेशन पर चाय अपने बचपन में बेचकर अपनी शिक्षा प्राप्त करके उन्होंने पूरा जीवन और आज 5 दशक से अधिक देश की सेवा में, समाज की सेवा में अपने आप को पूरी तरीके से झोंक दिया। ये जो नई परंपरा है कि समाज के अंदर ये चेतना जगी है, समाज में एक विश्वास जगा है कि सभी के लिए इस देश में स्थान है। आज सरनेम के हिसाब से पद नहीं, लेकिन क्षमता और कार्य के हिसाब से लोगों को मौका मिलता है। मैं समझता हूं उसका एक प्रतीक आप भी हैं और आगे आने वाले दिनों में आपके इस लंबे अनुभव का, आपके इस कार्यशैली का लाभ और मार्गदर्शन हम सभी सदस्यों को मिलता रहेगा। जैसे कहा जाता है और अभी अभी हमारी बहन ने कहा कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ फोर्स, अ पावर, और वो पावर आपके घर में हमने देखा, हम सबका मैं समझता हूँ ये अनुभव रहा कि जिस प्रकार से आपने सम्मान दिया परिवार के अंदर भाभी को, जिस प्रकार से आपने हम सब के बीच नारी शक्ति की बात कही, तो मुझे याद आया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 15 अगस्त के अपने विचार रखते हुए उद्बोधन में ये बात रखी थी कि देश को जब हम विकसित बनाने की बात करते हैं तो नारी शक्ति को हमने और सशक्त बनाना होगा। और मैं समझता हूं बहन रजनी जी ने ठीक कहा कि उसका भी एक अच्छा उदाहरण हमें आपके घर पे देखने को मिला। ऊर्जावान व्यक्तित्व, सदस्यों से जिस प्रकार से आपने निजी जुड़ाव बनाया है, आपका सहज मुस्कान, आपके सोचने की प्रक्रिया और क्विक विट और ह्यूमर हम सबको आपके प्रति आकर्षित करता है। मुझे विश्वास है ये जो इन्फेक्शियस स्माइल है आपका, ये आगे चल के सदन को भी चलाने में सुविधा देगा और आप जरूर हम सबको सही रास्ते पे रहने का मार्ग भी बताते रहेंगे। एक प्रकार से कल जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक चल रही थी, हमने आपका स्कॉलरली और रीजन्ड अप्रोच
कल देखने का एक पहला मौका पहली बीएससी में हमें मिला। मैं बड़ा इंप्रेस हुआ कि आपके कमेंट से कि स्टैटिस्टिक्स नहीं डिटरमिन करती है कि विषय को आगे कैसे लेके जाना है। स्टैटिस्टिक्स पे नहीं निर्भर होगा कि कोई बिल स्टैंडिंग कमिटी में जाए या सिलेक्ट कमिटी में जाए। स्टैटिस्टिक्स हैव देयर ओन प्लेस, पर सब्सटेंस विल मैटर। सब्सटेंस के ऊपर तय करना पड़ेगा कि आगे कार्रवाई में किस प्रकार से आगे बढ़ना है। समय भी बहुत जरूरी होता है, समय वेस्ट ना हो, समय का सदुपयोग हो, और आखिर कोई ना कोई कानून या कोई ना कोई कार्य हम सबके समक्ष जब रहता है हाउस में, तो जरूर कोई ना कोई उसकी इंपॉर्टेंस है, उसकी समय की इंपॉर्टेंस है। और कई विषय ऐसे हैं जिसमें आम सहमति बन सकती है, आम सहमति से कार्य आगे तेज गति से बढ़ सकता है। क्योंकि अगर हमें इस अमृत काल में इस देश को विकसित बनाना है, और जिसमें मैं समझता हूं देश का हर सदस्य एकजुट है, एक मत का है, तो स्वाभाविक रूप से समय की भी अपनी अहमियत है। और जो निर्णय देश हित में है, जनहित में है, वो त्वरित लेने का भी एक बहुत बड़ा मैसेज देश को जाता है, समाज को जाता है। माननीय सभापति जी, मैं आपका एक और विषय के लिए तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने जिस प्रकार से हम सबका मान रखा और इस उच्च सदन का, वास्तव में पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मान रखा, जब आपने एक विषय जो कई वर्षों से सबको पीड़ा दे रहा था कि क्या पार्लियामेंट में पास किया हुआ कानून, और ऐसा कानून जिसमें सर्वसम्मति थी, लोकसभा में सर्वसम्मति, राज्यसभा में एक एब्सटेंशन छोड़ दे तो सभी राजनीतिक दलों की और सभी बाकी सदस्यों की, जब सर्वसम्मति से कानून पारित होता है तो उसकी एक अहमियत है। और जो आपने वी द पीपल का उद्बोधन दिया, जिस प्रकार से आपने द विल ऑफ द पीपल के बारे में अपने एक रिसेंट भाषण में बात रखी, मैं समझता हूं इस सदन के हर सदस्य के लिए और हर सदस्य के आत्मसम्मान की आपने उस दिन चिंता की। आपने इंश्योर किया कि हमारा भी एक प्रकार से हौसला बने कि हम आगे चल के भी कानून देशहित और जनहित के बनाते रहे। माननीय सभापति महोदय, आपके जो 2 ओवरसीज विजिट्स रहे, वो भी वास्तव में हम सबको बहुत गौरवान्वित करते हैं। आपको देखते हुए वहां पे बड़े बड़े विश्व नेताओं के साथ चर्चा करते हुए, और बाद में मुझे जानकारी मिली आपने किस बहुत तीव्रता से जो देश ने कोविड की महामारी की लड़ाई लड़ी, किस प्रकार से जो कल ही उच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में भी जिस बात का उल्लेख किया गया, जिस बात की तारीफ की गई कि कैसे पूरे देश ने मिलके, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, सब ने मिलके कोविड महामारी के सामने लड़ाई लड़ी, कैसे केंद्र सरकार ने भुखमरी नहीं होने दी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से देश के कोने कोने तक 80 करोड़ से अधिक भारतवासियों को मुफ्त में अनाज पहुंचाने का जो काम किया, उसकी कल सुप्रीम कोर्ट में भी काफी विस्तार से तारीफ हुई है। आपने ये बात जब विश्व नेताओं के सामने और विश्व के सबसे बड़े और आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत नेताओं के सामने जब आपने रखी और आपने बताया कि उन्होंने सबने तारीफ की भारत की, तो मैं समझता हूं हर मेंबर का, हर सदस्य का सीना चौड़ा होता है, क्योंकि हम सबका भी उसमें एक छोटा योगदान है। माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूं when great people set the direction, others follow them. Under your leadership, we will work with the high ideals, high principles with which you will set the direction. And I'm sure the work of the Rajya Sabha, the work that we do in this upper house, the House of Elders, the House of States, will also resonate in the other houses, in the other assemblies across the country. I'm sure the way we are all working for a developed India, we are all working to take prosperity to the last man at the bottom of the corridor.
the last man at the bottom of the pyramid, जो गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए अंत्योदय की भावना से आज हम सब काम कर रहे हैं कि देश में कोई वंचित ना रहे, कोई शोषित ना रहे, कोई पीड़ित ना रहे, समाज के हर वर्ग का बिना भेदभाव से उत्थान हो, उस काम में पूरा देश आज देश में भी और दुनिया में भी अपना वर्चस्व बना रहा है। आज पूरी दुनिया भारत की प्रशंसा भी कर रही है, भारत की ओर देख रही है, विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को गति देने के लिए, प्रगति देने के लिए। आज पूरा विश्व देख रहा है कि हमारे 140 करोड़ लोगों में जो क्षमताएं हैं, जो संभावनाएं हैं, उससे पूरा विश्व आकर्षित भी होता है और उनको उम्मीद भी भारत के ऊपर टिकी हुई है। और ऐसे में मैं समझता हूं इस सदन की भी भूमिका बहुत अहम रहेगी। आपके कुशल नेतृत्व में, आपकी बुद्धिमत्ता से हम पूरे देश को ऐसा संदेश देंगे कि हम एक अच्छा सदन अच्छी तरीके से चलेगा, अच्छी तरीके से काम करेगा और जो देश के करोड़ों लोगों की आशाएं, अपेक्षाएं हैं, जो सपने हैं, उनको पूरा करने में हम सब अपना दायित्व निभाएंगे। आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं सदन के हर सदस्य के बिहाफ पे कि हम अपनी जिम्मेदारी, अपने दायित्व का जरूर निर्वहन करेंगे और इस सदन की कार्रवाई को अच्छी तरीके से चलाएंगे। आपका पुनः इस आसीन पर पद ग्रहण करने पर हम सब की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। Honorable Leader of the House, Shri Piyush Goyal ji, Honorable Leader of the Opposition, Shri Mallikarjun Kharge ji, Honorable former Prime Minister, Shri S.D. Devgowda ji, Honorable Ministers, Honorable Leaders of respective parties, Honorable Members. Deeply moved and touched by the indulgent words of welcome by the Honorable Prime Minister, Honorable Leader of Opposition, Leader of the House, and those who followed. Grateful to the Honorable Members of Parliament for affording opportunity to be in service of Bharat as Vice President of India and Chairman of this august House. Looking forward to contributing to growth trajectory of the largest vibrant democracy in the world and vindicate its trust and confidence. Honorable members, availing this historic opportunity to share some concerns with the distinguished members of this august House. Terms Upper House and House of Elders, though not part of the official glossary, amply reflect uniquely significant importance of this institution. Nation justifiably expects the House of Elders to take decisive directional lead in reaffirming and enhancing the core values of the Republic and set up the traditions of parliamentary democracy, exemplifying the highest deliberative, emulative standards. Today, as we are in Amritkal, we cherish one of the world's finest constitutions as our own. Members of the Constituent Assembly were enormously talented with impeccable credentials and immense experience. The Constituent Assembly, given the scenario then, was as representative as was practicable. Honorable members, with each election, there has been progressively authentic enhancement in the representation gradient. Presently, the Parliament reflects with authenticity the mandate and aspiration of the people as never before. Honorable members, Constituent Assembly addressed sensitive, complex, and critical issues, exemplifying sublimity
engaging in dialogue, discussions, deliberations, and debate marked with cooperative and consensual attitude. Diverse issues were traversed without there being any disruption, any rancor. Obstruction and disruption of proceedings of parliamentary practice or option are antithetical to democratic values. Contemporaneous scenario on this count is concerning and makes it imperative for us to follow the high standards set in the Constituent Assembly. We need to be cognizant of severe public discomfort and disillusionment at the lack of decorum in the temple of democracy. Honorable members, democracy blossoms and flourishes when its three facets, the legislature, the judiciary, and the executive, scrupulously adhere to their respective domains. The sublimity of doctrine of separation of powers is realized when the legislature, judiciary, and the executive optimally function in tandem and togetherness, meticulously ensuring scrupulous adherence to respective jurisdictional domain. Any incursion by one, howsoever subtle, in the domain of the other has the potential to upset the governance apple cart. We are indeed faced with this grim reality of frequent incursions. This House is eminently positioned to take affirmative steps to bring about congeniality amongst these wings of governance. I'm sure the honorable members will reflect and engage in way forward stance. Honorable members, a sense of democracy lies in the prevalence of the ordainment of the people, reflected through legitimized platform. In any democracy, parliamentary sovereignty is inviolable. We all here are under oath to preserve it. Power of the parliament of the day to act in exercise of its constituent power, to amend by way of addition, variation, or repeal any provision of this constitution in accordance with the procedure is unqualified and supreme, not amenable to executive attention or judicial intervention, except for the purpose of deciding any case involving a substantial question of law as to interpretation of the Constitution, envisaged in Article 145(3) of the Constitution. Using this constitutional power to amend, Parliament enacted wholesome structural governance changes to further spinally strengthen our democracy. This has been by way of incorporation of Part 9, 9A, and 9B in the Constitution, providing comprehensive mechanism for Panchayati Raj, municipalities, and cooperative societies. Honorable members, in similar vein, the Parliament, in a much needed historic step, passed the 99th Constitutional Amendment Bill, paving way for the National Judicial Commission. There was unprecedented support to the above. On August 13, 2014, the Lok Sabha unanimously voted in its favor, with there being no abstention. This House too passed it unanimously on August 14, 2014, with one abstention. Rarely in parliamentary democracy there has been such massive support to a constitutional legislation. This process fructified into a constitutional prescription. After 16 state assemblies out of the 29 states ratified the central legislation,
The President of India, in terms of Article 111, accorded his consent on December 31, 2014. This was culmination of a basic, fundamental parliamentary process. This historic parliamentary mandate was undone by the Supreme Court on October 16, 2015, by a majority of 4:1, finding the same as not being in consonance with the judicially evolved doctrine of basic structure of the Constitution. Honorable members, there is no parallel to such development in democratic history, where a duly legitimized constitutional prescription has been judicially undone. A glaring instance of severe compromise of parliamentary sovereignty and disregard of the mandate of the people, of which this House and the Lok Sabha are custodians. Honorable members, we need to bear in mind that in democratic governance, basic of any basic structure is the prevalence of the primacy of the mandate of the people reflected in the parliament. Parliament is the exclusive and ultimate determinative of the architecture of the Constitution. It is disconcerting to note that on such a momentous issue, so vital to democratic fabric, there has been no focus in the parliament now for over 7 years. This House, in concert with the Lok Sabha, being custodian of the ordainment of the people, is duty bound to address the issue, and I'm sure it will do so. Honorable members, authorities in constitutional positions in any institution are required to exemplify their conduct by high standards of propriety, dignity, and decorum. Time for all constitutional institutions to reflect and give quietus to public display of adversarially challenging stance, trading or exchange of advisories emanating from these platforms. I urge the members of the House to proactively catalyze evolution of wholesome, cordial ecosystem, ending this aberration. It is institutional, seamless, correct, marked with mutual trust and respect that generates ecosystem best suited for serving the nation. This House needs to catalyze this wholesome environment to promote synergic functioning of constitutional institutions, emphasizing need to respect Lakshman Rekha. Honorable members, as Vice President, I had the honor to represent the country at the India, ASEAN, and East Asia summits in Phnom Penh, Cambodia on November 12 and 13, 2022, and at the FIFA World Cup inaugural ceremony in Doha, Qatar on 20th November 2022. I share with you my deep sense of pride and satisfaction of the level of respect India commands amongst world leaders, and their hope and expectation that our growth trajectory generates global peace and prosperity. Honorable members, I look forward with hope and expectation to pleasant and fruitful association so that we all in togetherness optimally serve the nation. Once again, I thank you most earnestly for your generous felicitations, and I would do my utmost to come up to your very high expectations.
As foot soldier of the Constitution, आप सबको प्रणाम कर कर मैं अपने कार्य का श्री गणेश करता हूं। I'm sharing with you, honorable members, as this session commences, all members will be aware that India has taken over the presidency of the G20 with effect from December 1, 2022. This is a matter of great pride for the entire nation. It is also occurring as we welcome Azadi Ka Amrit Mahotsav. The G20 summit will, of course, be an unparalleled event in our diplomatic history. What is noteworthy, however, is that the almost 200 events at various levels will be spread across the length and breadth of the country. It will provide an opportunity to showcase India's rich and diverse culture, to demonstrate the vigor of our democracy, and to highlight the progress of our development. We should all appreciate that broad sections of the society are being involved through a Jan Bhagidari approach. During these challenging times in global affairs, it is appropriate that we have chosen the theme, I quote, "One Earth, one family, one future," unquote. This is much in keeping with our traditional belief in Vasudhaiva Kutumbakam. Such a conviction of our global oneness will surely guide the shaping of the agenda and achievement of outcomes. I am sure that the entire House joins me in expressing our fullest support for the success of India's G20 presidency. The House stands adjourned for 1 hour.
आज बात करेंगे भारत के संसद के बारे में। आमतौर पर भारतीय संसद के 3 सत्र होते हैं। सरकार के पास संसद का सत्र बुलाने का अधिकार है। सरकार जब सत्र बुलाना चाहती है तब राष्ट्रपति के पास अनुशंसा पत्र भेजकर सत्र बुलाने की स्वीकृति हासिल करती है। संविधान के अनुच्छेद 85 में संसद सत्र बुलाने का प्रावधान है। 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होता है। आमतौर पर भारतीय संसद के 3 सत्र होते हैं: बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। बजट सत्र साल का सबसे पहला सत्र बजट सत्र कहलाता है, जो आमतौर पर जनवरी महीने के आखिरी सप्ताह में शुरू होकर अप्रैल तक चलता है। बजट सत्र 2 भागों में चलता है। आमतौर पर पहला भाग बजट पेश करने का और दूसरा भाग उस पर चर्चा करने के लिए होता है। बीच का अंतराल इसलिए होता है ताकि सांसद, संसदीय समितियां बजट के प्रावधानों को समझ सकें और उसके बारे में अगले भाग में चर्चा कर सकें। मानसून सत्र दूसरा सत्र 3 सप्ताह का मानसून सत्र है, जो आमतौर पर जुलाई माह में शुरू होता है और अगस्त में खत्म होता है। शीतकालीन सत्र यानी तीसरे सत्र का आयोजन नवंबर से दिसंबर तक किया जाता है। ये सत्र सबसे कम दिनों का होता है। खास बात यह है कि इन तीनों सत्रों के अलावा किसी भी आपातकाल या किसी खास मौके पर विशेष सत्र बुलाया जाता है। Hello and welcome to Sunset Television. I am Akhilesh Suman and you are watching a special report on the takeaways for India from the G20 summit that concluded in Indonesian city of Bali in November. The G20 summit was held on 15th and 16th November 2022 in Bali, one of the major tourist destinations and scenic spots of the world. The host and chair of the summit was Indonesian President Joko Widodo. मैं एक बार फिर अपने मित्र राष्ट्रपति जोकोवी का अभिनंदन करना चाहता हूं। उन्होंने इस कठिन समय में G20 को कुशल नेतृत्व दिया है। The city of Bali was suitably decked up for the occasion, with all the arrangements in place to ensure comfort and convenience of the high-profile guests. Official welcome by His Excellency the President of Indonesia. We have been working very closely with Indonesia to support their presidency, and we have also worked with Indonesia to give a larger voice to the global south in the G20. This was the second time since 2018 that the G20 summit was taking place in a developing country, when Argentina had hosted it. The summit was also taking place at a time when the world is facing an acute food and energy crisis due to the Russia-Ukraine war. जियोपॉलिटिकल तनावों, आर्थिक मंदी, खाद्यान्न और ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों और महामारी के दीर्घकालीन दुष्प्रभावों से एक साथ जूझ रहा है। ऐसे समय विश्व G20 की तरफ आशा की नजर से देखता है। No wonder these two issues came up for heated discussions in the very first session of the summit on 15th November. Intervening in the discussion, Prime Minister Narendra Modi categorically mentioned that the supply chains of the world are in shambles. He pointed out that this was especially problematic for the poorer countries that had no financial capacity to handle the situation. Prime Minister Modi's statement was virtually a mirror to the global community that had seen devastation by the 2-year-long COVID-19 pandemic.
during the session on food and energy security. The text of this has already been shared. You would have seen in Prime Minister's intervention the emphasis on the impact of contemporary developments on the developing world. He particularly underlined the criticality of resilient supply chains for food, fertilizer, and energy, and the need for affordable finance for smooth energy transition for the global south. Prime Minister Modi also highlighted India's effort. No wonder then that the Bali Declaration recognized in full the distortions in the world food market. The declaration set down what India had said and practiced all along, both during and after the pandemic period, in helping the poor and the developing countries. The G20 declaration said member nations will avoid adversely impacting food security deliberately. They also commit to facilitate humanitarian supplies for ensuring access to food in emergency situations. To further food security for our own citizens, as also for the needs of other developing countries, and in this context shared India's own achievements and experiences, including the practices of natural farming, and called upon the G20 members to celebrate the International Year of Millets 2023. Prime Minister later attended the second session on the health. Prime Minister Modi drew the attention of the G20 members to the sanctions regime that has had a crippling effect mainly on the developing countries. He said no restriction should be imposed on the supply of energy. Asserting that India is the world's fastest growing economy, the Prime Minister said G20 leaders must ensure stability in the energy markets of the world. For international economic cooperation and underlined the importance of G20 continuing to demonstrate its capacity to bring together major economies to overcome the global challenges. Earlier, opening the floor for discussion, Indonesian President urged all member countries to abide by the rule of law and the UN Charter. In stating this, he was echoing what India had been saying since the beginning of Russia-Ukraine war. Widodo reiterated the need for a ceasefire and the return to diplomacy. The final declaration at the summit echoed Prime Minister Modi's counsel to the Russian President Putin a few months ago that this is not an era of war. The declaration reiterated today's era must not be of war. Being responsible means respecting international laws and principles of the UN Charter consistently. Being responsible means creating not zero-sum situations. Being responsible here also means that we must end the war. If the war does not end, it will be difficult for the world to move forward. The G20 summit debated these issues long and hard. Divergent views came up on the Ukraine war. India urged the parties concerned to bring the talks initiative center stage instead of violence. The Bali Declaration stated that there was a need for ceasefire, even though not everyone condemned the Russian military operation in Ukraine. The second session of the summit was dedicated to health. All members at the summit recognized that in the wake of COVID-19 pandemic, every country is facing the brunt of healthcare unpreparedness. They also felt that health facilities continue to be uneven even after the pandemic. The Indonesian president expressed his frustration at the uneven health facilities, urging rich countries to invest in the health sector of developing countries. He also urged a relaxation in the TRIPS waiver for developing countries. The waiver will help nations like India to acquire new technology for health facilities and infrastructure. Prime Minister Modi's call of One World, One Health was also reflected in the final draft. The draft underscored the implementation
of the One Health approach. The G20 members also deliberated climate change issues. There was consensus that the developed countries need to honor their commitments. Members also sought transparency in fulfilling the commitments by different countries in containing carbon emissions. In the words of the declaration, members affirmed that they support continued deliberations on an ambitious new collective quantified goal of climate finance from a floor of $100 billion per year to support developing countries that helps in fulfilling the objective of the UNFCCC. प्राकृतिक संसाधनों पर ओनरशिप का भाव आज संघर्ष को जन्म दे रहा है और पर्यावरण की दुर्दशा का मुख्य कारण बना है। प्लेनेट के सुरक्षित भविष्य के लिए ट्रस्टीशिप का भाव ही समाधान है। इसमें लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अभियान एक बड़ा योगदान दे सकता है। इसका उद्देश्य सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को एक जन आंदोलन बनाना है। The second day of the summit was devoted to the session on digital transformation. Prime Minister Modi showcased India's progress in the field of digital transactions. India's success in UPI transactions has been unique in that it has served not only the poorest of the poor, but the rich as well in equal measure, providing consumer comfort as well as helping SMEs. The G20 declaration supported and declared its own financial inclusion framework in harnessing digitization on the lines adopted by India. This is an area where India is a global leader, and Prime Minister used this opportunity to highlight actions taken by India and offered to share our expertise in this space. Prime Minister Modi highlighted the importance of technology and an open, inclusive, and empowering public digital infrastructure in fostering global economic transformation, building inclusive societies, empowering billions of people, and improving livelihoods. Digital transformation will also feature among the key priorities during India's G20 presidency that commences on 1st of December. In the closing session, Prime Minister Modi received the presidency of G20 for the next 1 year. This will be effective from 1st of December 2022 and will last till 30th November 2023. Accepting the presidency, Prime Minister Modi said the Indian presidency will be action-oriented. India will have 200 meetings of G20-related activities across the country. The exercise will boost internal infrastructure and facilities in the nation. आज मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत की G20 अध्यक्षता इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। एक्सेलेंसी, अगले 1 साल में हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करे। Prime Minister Modi was given the baton of the G20 presidency by Indonesian President. Widodo said as part of the Troika, Indonesia will support India with its experiences in holding the presidency as the former president of the grouping. Prime Minister Modi also assured G20 members that India's presidency will work towards mainstreaming developing countries on the world economic map. भारत अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान इंडोनेशिया के सराहनीय इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने का भरसक प्रयत्न करेगा। आज आवश्यकता है कि विकास के लाभ सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी हो। हमें विकास के लाभों को ममभाव और समभाव से मानव मात्र तक पहुंचाना होगा। G20 adopted the leaders' declaration that asked for the immediate withdrawal of Russian forces from Ukraine. However, it recognized differences on the interpretation and the assessment of the situation
and the sanctions regime. The leaders concluded that security issues could have significant consequences for the global economy. Again, it was India that prevailed on Russia to accept the declaration and let it be adopted by consensus. Even White House in Washington, D.C. recognized the contributions of India in negotiations. As a matter of fact, it was India who could enjoy proximity with all the parties concerned, and India contributed in successful consensus statement at the end of G20 summit. Also big on the mind of the leaders were the problems of jobless growth. The G20 declaration advocated coordinated action to advance an agenda for a strong, inclusive and resilient global recovery and sustainable development that delivers jobs and growth. Member nations decided to make public investments in sectors that will improve job situations. They also resolved to promote private investments and strengthen multilateral trade and resilience of global supply chains to support long-term growth. Further, they recommended efforts by individual central banks to achieve price stability. G20 members suggested that countries across the world strengthen dialogue between producers and consumers. This is aimed at reducing the communication gap between groups that often create political instability and chaos in some countries. Trade was another subject that came up for intense debate among the G20 members. The members recognized that one or two countries alone cannot bear the burden of supplies around the world. Advocating the need for decentralization in the global supply chain, member countries urged the creation of level playing fields to ensure fair competition. India is expected to benefit from this in enhancing its trade as well as manufacturing capacities. The G20 declaration decided to continue with focused consultation on issues related to reforms in WTO that is for most part tilted towards Western nations. The Indonesian presidency had taken initiative to hold discussions on policy coherence between trade, investment, and industry. Now, as the president of G20, it will be India's turn to take it forward and pursue member nations to provide a level playing field in industrial sectors too. Prime Minister Modi was one of the major figures of the G20 summit. With India being the biggest democracy as well as the biggest open market, PM Modi occupied the lead chair as member of the Troika along with the Indonesian president. The Prime Minister spent 45 hours in Bali along with External Affairs Minister S. Jaishankar and National Security Advisor Ajit Doval, holding bilateral meetings and interactions with counterparts. One of the major meetings of the Prime Minister Modi was with US President Joe Biden. The informal tone of interactions underlined the chemistry between the heads of governments of the oldest and biggest democracies. Prime Minister reviewed the continuing deepening of the India-US strategic partnership and expressed satisfaction about the ongoing strong cooperation between the two countries in groupings such as the Quad, ITU2, etc. Prime Minister Modi and President Biden agreed to maintain close cooperation during India's G20 presidency. Another highlight of Prime Minister Modi's bilateral meetings was his talks with newly elected Prime Minister of United Kingdom, Rishi Sunak. This was the first interaction of Rishi Sunak as Prime Minister with PM Modi. According to the officials of the Ministry of External Affairs, both leaders discussed issues related to trade, economy and defence. Prime Minister Modi apprised the British Prime Minister of opportunities for private investment in India's defence manufacturing. In other meetings, Modi met French President, Italy's newly elected Prime Minister, Australian Prime Minister, German Chancellor, Spanish Prime Minister, Singapore Prime Minister, and Indonesian President. A striking visual from the summit was Prime Minister Modi shaking hands with Chinese President Xi Jinping when they encountered each other at the dinner. You know, between nations, especially those which are neighbors, you have very high level of contestation, very high level of even conflict. But you know, you have to keep open the doors of diplomacy and the doors of talking to each other. And the Prime Minister did well to walk up to Xi Jinping, greet him. Let's see how things work out. The President of China also needs to realize that India is not just a neighbor. India is an important, big, and a significant neighbor. And good neighborly relations would do China as much good as it would do India. More than the formal discussions,
Multilateral fora like G20 summit provide a space for leaders to meet and exchange their views in a more personalized setting. Such interactions allow leaders to develop personal chemistry with their counterparts. Prime Minister Modi's visit, along with other G20 members to Indonesia's Mangrove, was a reiteration of the importance that India gives to issues relating to green cover and maritime protection. The Prime Minister also planted a sapling that will age in step with the grouping. In all, the Bali Declaration had 52 recommendations that will further understanding among countries that matter. India is all set for the world stage, spearheading global responsibility that will enhance its credibility among the Committee of Nations as the president of G20. And that's all in this report. Thank you for watching. Those in favor, please say aye. जो सदस्य विरोध में ना गए, I think the ayes have it. हवालों के पक्ष में ayes have it. The bill is passed. India became free 75 years ago. We all know we have fundamental rights. Do you also know we have fundamental duties? The duty towards our nation, to defend the country and render national services when called upon to do so. Jai Hind.
माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, विद्वानों के बीच में आना पड़ता है ना। आइटम नंबर 13 CBL वर्मा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, Yes, allow you. No, बाबू जी। 6 जुलाई 2021 को नए सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद माननीय प्रधानमंत्री के सहकार से समृद्धि के विजन को अकल्पनीय तरह से पूरा करते हुए हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने की ओर से जो प्रस्ताव किया है कि मैं प्रस्ताव करता हूं कि बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। Sir, I rise to oppose the introduction of the Multi-State Cooperatives Amendment Bill 2022 under Rule 72(2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha and as per the provisions of the Constitution of India. Yes, sir, I'm coming to. इस पर कभी इस पर डिबेट हो जाना चाहिए। ये डिबेट हो जाना चाहिए। जो कानून आप पढ़ते हो 72(2), ठीक है ना। डिबेट क्या है कि इस संसद को इस कानून को पास करने की विधायी क्षमता है ना, ये विषय है ना। अब मेरे शायद में आपसे ज्ञानी कोई नहीं है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट जब से बना, मैं कोऑपरेटिव में रहा हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है और राज्य का कोऑपरेटिव एक्ट है, यही है ना। बोलिए इनके प्रेमचंद्र जी। Thank you. I fully agree with you, Honorable Speaker, sir. I am on technical points. Yes. And on the basis of the constitutional provisions, I am opposing the introduction of the Multi-State Cooperatives Bill 2022. Sir, the first point which I would like to make is, you may kindly go through Article 243, Z capital H, Clause C and Clause D of that definition. That is the Constitution of India. Article 243, capital Z, capital H, and subclause C and D. Subclause C of the provision clearly defines what is a cooperative society. Means a society registered or deemed to be registered under any law relating to cooperative societies for the time being in force in the state. And multi-state cooperative society, as rightly Honorable Speaker has just now mentioned, it is as per the law passed by the Parliament and it belongs to the Union of India. My technical point is, this bill is against the spirit of this definition incorporated in Part 9B of the Constitution, that is newly added amended provision, the cooperative societies. A chapter is also there, in which there is no particular specific provision by which a cooperative society which is incorporated under the state law can be merged into a multi-state cooperative society. That is my technical objection. For which a particular, because Chapter 9B, a newly added chapter in the Constitution, is with a specific provision to distinguish between a cooperative society of the state and a multi-state cooperative society being governed by the Government of India or the Union of India. This is the clear distinction by which a cooperative society is being governed by the state legislature or an act of the Parliament by the multi-state cooperative society, and another one is by the state legislature or the legislative assembly. Here in this case, you may kindly see, my basic political point is, it is against the federal principles of the Constitution, because the federal structure has to be protected. Here in this case, at any time, see clause 6 of the bill. Sir, you have rightly pointed out clause 6 of the bill. If you go through the clause 6, it is very interesting that it is indirectly the central government is encroaching into the rights of a state cooperative society. How it is see in clause C, in section 7 of the act is to be amended, in which a new provision is being, any cooperative society may by a resolution passed by a majority of not less than 2/3 of the members present and voting at a general meeting of the society decides to merge into an existing multi-state cooperative society. This is the provision by which we are disputing. That means a state cooperative society can at any time be merged
into a multi-state cooperative society, but the state cooperative society is being governed by a law passed by the state legislature, and it is indirectly coming into the domain of the Union of India, by which it is against the basic spirit of the Constitution, by which Part 9B of the Constitution is being incorporated as an amended chapter. That is a technical objection which I would like to make. And second one is, so and 243, along with this 243, another provision also, sir, one second. In a 243 ZI, that is very clearly what is the incorporation of a society. What is an incorporation of a society under the state law is also well mentioned in 243 capital Z capital I. Incorporation of cooperative subject to the provisions of this part. The legislature of a state may by law make provisions with respect to incorporation, regulation, and winding up of a cooperative society. That is also being governed by a state law or the legislative assembly's law made by the state legislative assembly. So when a particular specific provision regarding the state cooperative society and distinctly a multi-state cooperative society is there, here indirectly the Union of India, the government of India is coming with a legislation with an intent to make all the state cooperative societies be merged with the multi-state cooperative society, by which the taking the right of the state governments, it is against the federal character and the federal polity, which is a basic character of the Constitution. The basic features of the Constitution cannot be amended. That is why I am saying that it is outside the scope of the legislative competence of this House. Hence, I am opposing the introduction of this bill. Thank you very much, sir, for providing this much of time. माननीय मंत्री जी, एनके प्रेमचंद्र जी जो विषय उठाया कि कोई भी सोसाइटी को, एक मिनट बस मैं मंत्री जी को, कोई भी सोसाइटी को जो विषय उठाया गंभीर कि राज्य की कोई भी सोसाइटी को क्या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में बदल सकते हैं, ये अधिकार इसमें ले रहे हो क्या? आप जब भाषण, अभी नहीं बोल रहा मैं, जब बोले तो ये पॉइंट क्लियर करना। सी थॉमस जी नो, डी रवि कुमार जी नो, मनीष तिवारी जी। Thank you very much, Mr. Speaker, sir. I rise to oppose the introduction of the Multi-State Cooperative Societies Amendment Bill, as this bill violates the object of the 97th Constitutional Amendment, Article 243ZI, inserted by the 97th Constitutional Amendment Act 2011 and Article 43B of the Constitution. Mr. Speaker, sir, with your permission, I will point out to 5 specific clauses of the bill which are beyond the legislative competence of this House, and therefore we are opposing the introduction of the bill. First, clause 6. अभी तो आप विद्वान है, अभी तो केवल इतना ही डिस्कस करना है अपन को कि संसद को इसकी विधायी क्षमता है या ना। जब आप पूरा विषय जब इस पर डिस्कस हो तो पूरा स्पीकर साहब, मैं वही प्रावधान के और आपका ध्यान दिलवा रहा हूं जो प्रावधान सीधा इस सदन के लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के बाहर है। मैं उससे बाहर जाने की कोशिश नहीं कर रहा। First, clause 6 of the bill inserts subsection 10 into section 17, creating an ambiguity by allowing any cooperative society to merge into an existing multi-state cooperative society. This is beyond the legislative competence of the Union, as state cooperative societies are within the exclusive jurisdiction of the states. Number 2, Mr. Speaker, sir, clause 13 substitutes section 35 to now prohibit the redemption of shares of multi-state cooperative societies without the approval of the government. This strikes at the very heart of the principles of autonomous functioning of cooperative societies, which the 97th Amendment sought to introduce by virtue of Article 45B of the Constitution. Third, Clause 17 completely usurps the object of the Parent Act as well as the 97th Amendment by substituting Section 45 with a central election authority to be appointed by the central government. Fourth, a fund is sought to be created by virtue of Clause 24 of the bill, inserting Section 63A, 63B, and 63C into the Parent Act. Again, by putting an additional burden on cooperatives, infringes upon the cardinal principle of autonomous functioning as provided in Article 43B of the Constitution. Finally, Mr. Speaker, sir, and I thank you for your indulgence, Clause 45 provides for an overriding of the board
and appointing an administrator in its place who may not even be a member of the society. This clause also substantially contravenes the 97th Amendment to the Constitution. Mr. Speaker, sir, I would very, very humbly like to urge the Treasury benches that this bill should be withdrawn, it should be reconsidered, because it violates the federal spirit of the Constitution. It actually attacks the federal spirit of the Constitution with a sledgehammer. Thank you very much, Mr. Speaker. श्री अधीर रंजन चौधरी जी. Sir, I rise to oppose the introductions of the bill under the nomenclature of Multi-State Cooperative Societies Amendment Bill 2022 under Rule 72/2. Sir, already the explicit reasons of opposing the legislative document has been deliberated by our colleagues. Sir, I would like to draw your attention that cooperative society is a state subject under 7th schedule via NT 32 of the state list in India in the Constitution. It has been already inserted. So it is basically a state subject. Absolutely, that you are also raising a very pertinent argument, which also needs to be delved into. But here in this issue, so there is a clear indication that the central government has been encroaching upon the territory of the state government. That is why Euror and uproarious protestation has been cropping up across the nation. Sir, because this government has always been pleading for cooperative federalism, so this should have been reflected before the preparation of this legislation. I don't know whether all the stakeholders, I mean state government, have been consulted upon before the preparation of this legislation or not. Sir, in the Cooperative Rehabilitation and Construction Fund to be constituted according to this bill, the profit-making multi-state cooperative has to pay 1 crore or 1% of the net profit. Strangely, the government is not paying a single paisa. This is illogical way one profit-making cooperative society shall pay for the revival of another loss-making cooperative society. This does not happen in the Companies Act also. So that is why, sir, we are opposing the bill, because the central government has empowered itself with the vast powers under the present bill. This may lead to concentration of power with the central government, which may impact the autonomy and functioning of multi-sectoral cooperative society and may create potential for misuse. So take for example, under the present bill, the cooperative ombudsman will be appointed directly by the center without any apparent monitoring system to prevent corruption. And ombudsman is supposed to be unbiased. Sir, हो गया? Sir, हो गया? Sir, हो गया? Sir, एक मिनट. Sir, हो गया? Sir, हो गया? Sir, हो गया, sir. An ombudsman is supposed to be unbiased and keep a check on the government by preventing them from abusing power. However, where an ombudsman is appointed directly by the government itself, it creates scope for undue influence over the decision of the ombudsman. That is why, sir, my only submission before you and the government, that given the intricacies, given the ramification and encroachment upon the state territory, this bill should be referred to the standing committee, sir. This is my only submission before you, so that it could be further scrutinized and all the controversies could be wiped off before presentation of the bill afresh. A.F. Arif ji. Cooperative Societies Amendment Bill 2020. As per the constitutional list and also judgment from Supreme Court, the central government can make any law without the consultation of the states in cooperative societies. The amendments in the bill is a proposal for the complete centralization of authority, and this is a frontal attack on the federal principle of our constitution. Necessary consultation is needed to the state governments. So I also support the members who are raised the arguments against the introduction of the bill. The bill may be sent to the subject committee, concerned as a committee.
Sogat Rai ji. Under Rule 72(1) of the Rules of Procedure, I beg to oppose the introduction of the Multi-State Cooperative Societies Amendment Bill 2022. Originally, in 2002, when the bill first came, it was intended to facilitate the voluntary formation and democratic functioning of cooperatives as people's institutes. But it seems that with this bill, the central government is planning to take away the powers of the state government with regard to cooperatives. So it has four proposals. One, setting up of cooperative election authority. Earlier, cooperative elections were looked after by the state government. It takes that away. Two. No. Sir. चलो आप मैं भी कोऑपरेटिव में रहा हूँ, इसलिए मैं भी कोऑपरेटिव के सिस्टम को जानता हूँ. मैं जानता हूँ, आप बहुत एक्सपर्ट है. कोटा में जो कोऑपरेटिव बना उसमें आप मेंबर थे, अब सेक्रेटरी भी थे. मुझे पता है सर. तो आपके बारे में हम लोग सब कुछ जानकारी लेके ही बोलते हैं. Sir, they are proposing a cooperative revival fund. And three, as Odin mentioned, they are planning to set up a cooperative ombudsman. Four, they are increasing monetary penalties on multi-state cooperative societies. Sir, एक ही चीज आपको संज्ञान में लाऊं कि 2011 में 97 अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी आ गया. देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी became part of the constitution. Sir, उसमें क्या बोलता? Incorporation of cooperative society कौन करेगा? ये स्टेट करेगा. ये clearly mentioned है. ये कॉन्स्टिट्यूशन अपन इस पे डिटेल डिस्कस हो जब कर लें. सर, एक मिनट में खत्म कर दें. And the 243ZR gives an application to multi-state cooperative societies. ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में लाए. ये बिल में बोला गया, बिल में ऑब्जेक्शन रीजन में बोला गया कि वो अमेंडमेंट के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद, in view of the insertion of the said part, it has become imperative to amend the act. It's not clear to me how the act is related to the constitution amendment. 2011, the amendment came. This government has been in power for 8 years. They have not amended. Suddenly, Mr. Shah comes forward with amendment of this. Sir, this bill impinges on the rights of the state. It impinges on the right of people to form cooperative on their own will, and it basically will act in bringing more control over multi-state cooperative societies by the central government. I am totally opposed. It's undemocratic, it's anti-constitutional, and it violates the spirit of cooperatives and cooperation in the... So send it to a standing committee, please. You have the power. If you write one line, then everything will go to standing committee. ये आप कर दीजिए. I am not a lion like other members. I am on a point of common man's view. This Multi-State Cooperative Societies Amendment Bill 2022 was stoutly being opposed by me because of the reason. Sir, actually, it gives an impression as though the chairman and vice chairman and members and the secretary are just selected by the central government only. There is no democratic policies or principles adopted. Yes, sir. That is why the objection is there is no point of view from the democratic elected public. It is intended for the
betterment of opportunities that has been extended to the. No, this is nothing but, I will conclude, don't worry, I am not going to intrude in any other thing. Actually, the common man has got the opportunity by using the cooperative movement. He has to say what has to be served by the government by distributing the usual way of small helps by way of cooperative movements. But this movement is totally, it has to be reckoned by democracy means only. But there is no democracy. Actually, government is making everybody, the heads of the institution are appointed by the government only. This is not fair. So that is a main objection from us. This may be not, since it has to be referred to standing committee. माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय सदस्यों द्वारा कुछ प्रश्न आए हैं, तो सबसे बड़ा प्रश्न है कि संसद की क्षमता इस विधेयक को लाने की है कि नहीं। तब मैं कहना चाहता हूं कि अभी माननीय सदस्य ने एक प्रश्न किया था कि स्टेट के पर यह हमला हो रहा है। मान्यवर इस प्रकार का नहीं है। एक राज्य में जो सहकारिता की सोसाइटी काम करती हैं वो राज्य की होती हैं, और एक राज्य से ज्यादा में जो काम करती हैं वो मल्टी स्टेट होती हैं। तब मैं कहना चाहता हूं कि खंड 6 में राज्य सहकारी समितियों के बहुराज्य सहकारी समिति में विलय का प्रावधान पहले से है, परंतु ये राज्यों के सहकारी सोसाइटी में नियमों के अधीन ही है। 2002 के अधिनियम में भी राज्य सोसाइटियों के बहुराज्य सोसाइटी में परिवर्तन करने का प्रावधान पहले से ही आपके यहाँ है। दूसरा, एक प्रश्न आया कि संविधान के 97 संशोधन को हम उच्च न्यायालय में निरस्त कर दिया गया था, पर सर्वोच्च न्यायालय ने जुलाई 2021 में ये निर्णय दिया गया, ये संशोधन बहुराज्य सहकारी समितियों पर लागू होगा, इसलिए इस संशोधन विधेयक की आवश्यकता पड़ी। दूसरा, हमारे यहाँ चुनाव प्राधिकरण का जो सवाल आया है, ये प्रावधान में संविधान के 97 संशोधन के अनुसार है, और शेयर्स के मोचन का जो प्रावधान अंकित मूल्य पर प्रस्तावित है, जो कि सहकारिता के सिद्धांतों के अनुसार। दूसरा, माननीय अध्यक्ष जी, इन सहकारी समितियों के उद्देश्य केवल एक राज्य तक ही सीमित है, वो सूची 2 राज्य की प्रविष्टि 32 में आती है, एवं राज्यों के सहकारी समितियों के पंजीकों द्वारा पंजीकृत की जाती है। यह विधेयक बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए है जिनके उद्देश्य एक से अधिक राज्यों में है, जो संघ सूची की प्रविष्टि 44 के अंतर्गत आती है, और केंद्रीय पंजीयक द्वारा इसके पंजीकृत किया जाता है। यह विधेयक पूर्णतः संसद की विधायी क्षमता में है। यह विधेयक संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 1 संघ सूची की प्रविष्टि 44 के अंतर्गत प्रस्तावित है। बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 व उससे पहले बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1984 में भी इस प्रविष्टि के अंतर्गत संसद में ये पारित किए गए हैं। अतः ये विधेयक संसद की विधायी क्षमता में है। बाकी प्रश्नों के बारे में विधेयक पर खंडवार चर्चा जब होगी तब उसको उत्तर दिए जाएंगे। अतः मैं बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022 के पुनर्स्थापन का अनुरोध करता हूं। बात करेंगे, आप सबसे इस विषय पर चर्चा करेंगे। आप निश्चिंत रहे, नहीं, आपको सबसे विचार करेंगे इस विषय पर लाने के पहले, फिर विचार करेंगे। प्रश्न ये कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों पक्ष में। अब मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। मैं बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022 के पुनर्स्थापन का अनुरोध करता हूं। आइटम नंबर 14 नियम 377 के अधीन आज सभी मामले बोलने का मौका मिलेगा। 377 के अधीन श्री गौरव गोगोई जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। The prime reason for India's poor performance in combating air pollution
is the insufficient capacity building of municipal corporations and district subdivision administrations under the National Clean Air Program. Sir, reportedly, most of the cities mandated to submit their respective city action plans have only replicated each other's initiatives. Some local governments have either underspent or diverted the majority of funds towards projects not at all related to the National Clean Air Program. Comprehensive monitoring mechanisms must be developed by the union government to prevent such activities of the local governments. From the financial year 2022-23, presenting evidence for the increased number of good days and reduction in PM10 annual average concentration is mandatory to receive the 15 Finance Commission recommended grants. This requirement neglects the need for essentials such as building a robust monitoring framework. Only 69 out of the 132 NCAP cities have real-time monitoring stations. In 2020-2021, the NCAP was clubbed with other items under control of pollution, and the budget was marginally reduced. Many mostly polluted cities are provided with reduced NCAP funds or no funds at all. Thus, the states must be provided freedom in NCAP funds allocation, since the top-down approach is not apt to reduce air pollution. Thank you very much. रोडमल नागर जी। मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान मां माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, Honorable members, I refer with profound sorrow to the passing away of Sri K.R. Jayadevappa, Sri Syed Sibte Raji, Srimati Jayanti Patnaik, Sri Ahmad Saeed Malihabadi, Srimati Ila Ramesh Bhatt, and Sri A. Jinnah, former members of this House. Sri K.R. Jayadevappa passed away on the 23rd December 2021 at the age of 84 years. Born in March 1937
at Malakera village in Devnagari district of Karnataka. Sri Jay Devappa served as legal advisor to the city municipality, agriculture produce market committee, and several banks of Devnagari, Karnataka. He represented the state of Karnataka in this house from April 1992 to April 1998. In the passing away of Sri K.R. Jayadevappa, the country has lost a proficient advocate and an able parliamentarian. Sri Syed Sifti Raji passed away on the 20th of August 2022 at the age of 83 years. Born in March 1939 in Amethi district of Uttar Pradesh, Sri Raji was actively involved in child and youth welfare and upliftment of weaker sections of the society. Sri Syed Sifte Raji represented the state of Uttar Pradesh in this house for 3 terms during 1980 to 1998. He also served as the governor of the states of Jharkhand and Assam during 2004 to 2009. In the passing away of Sri Sifte Raji, the country has lost a dedicated social worker, an able administrator, and a distinguished parliamentarian. Srimati Jayanti Patnaik passed away on the 28th September 2022 at the age of 90 years. Born in April 1932 at Aska in Ganjam district of Odisha, Srimati Patnaik was actively involved in espousing the cause of women and the promotion of sports. She has the distinction of being the first chairperson of the National Commission for Women, an office she held from 1992 to 1995. Srimati Jayanti Patnaik served as a member of the 7th, 8th, and 12th Lok Sabha and as a member of this House, representing the state of Odisha from April 1996 to March 1998. In the passing away of Srimati Jayanti Patnaik, the country has lost an eminent social worker, a sports enthusiast, a champion of the rights of women, and a distinguished parliamentarian. Sri Ahmed Sayyid Maliabadi passed away on the 2nd October 2022 at the age of 92 years. Born in October 1930 at Maliabad in Lucknow, in Uttar Pradesh, Sri Maliabadi had worked with Mahatma Gandhi during his stay at Kolkata in 1947 during pre-partition and post-partition of India for peace and communal harmony. A journalist and a writer, Sri Maliabadi served as the chief editor of Azad Hind and Urdu Daily, published from Kolkata. For over 6 decades, he represented the state of West Bengal in this house from April 2008 to April 2014. In the passing away of Sri Ahmed Said Maliabadi, the country has lost a veteran journalist, a scholar, and an able parliamentarian. Srimati Ila Ramesh Bhatt passed away on the 2nd of November 2022 at the age of 89 years. Born in September 1933 at Ahmedabad, Gujarat, Srimati Ila Ramesh Bhatt lived by the Gandhian spirit of trusteeship, non-violence, and self-reliance. In 1972, she founded the renowned self-employed women's association, SEWA, one of the largest women's cooperatives with over 2 million members from across the country and in neighboring nations. Srimati Ila Ramesh Bhatt was the recipient of several national and international awards. Both PMs renewed the commitment towards enhancing India-Japan strategic and global partnership
and to work towards promoting regional and international cooperation. The Secretary General of the United Nations, His Excellency Antonio Guterres, paid an official visit to India from 18-20 October and joined Prime Minister in Kevadia to jointly launch the Lifestyle for Environment (LIFE) initiative. Heads of state and governments from France, UK, Estonia, Georgia, Maldives, Nepal, Madagascar, Mauritius, Argentina, and Guyana contributed with the messages of support for the LIFE initiative. Allow me, Chairman, sir, to now turn to the subject of G20. As the House is aware, the Prime Minister attended the Bali G20 summit recently, and we soon thereafter assumed its presidency. G20 is the premier forum for global economic cooperation, representing around 85% of the global GDP, over 75% of worldwide trade, and about 2/3 of the world's population. Prime Minister has noted that India's presidency of the G20 during the year of Azadi Ka Amrit Mahotsav is a matter of pride for every Indian. The G20 meetings have already commenced in India, and our endeavor is to organize about 200 of these meetings in 32 different sectors in multiple locations across India. The G20 summit is to be held next year, and it would be one of the highest profile international gatherings to be hosted by this country. During the G20 Bali summit held under Indonesia's presidency, India extended fullest support to ensure its success. Our contribution to finding a common ground among members in a polarized environment was widely appreciated. Prime Minister also held discussions with counterpart leaders on key issues of global concern. They focused mainly on reviving global growth, ensuring food and energy security, promoting technology, preserving environment, and addressing public health and digital transformation. As is customary, many of these opportunities also provided an occasion to take stock of our bilateral relationships. Since we are assuming that responsibility, this was also a time to seek the support and cooperation of all G20 members for the success of India's presidency. Honorable members are aware that the G20 is taking place in the larger context of a geopolitical crisis. Food and energy insecurity, slow progress on sustainable development growth, mounting debt burden, and challenges to climate action and climate justice. Our endeavor is to build consensus within the G20, champion causes, especially of the global south, and shape the setting of the agenda. This will also be an occasion for us to highlight the 3 Ds of India: development, democracy, and diversity. In our global engagements, we have discerned strong interest in India's digital delivery, public health response, green growth and development, as well as the empowerment of all sections of society. There is also an enhanced interest in our democratic traditions, which go way back in our pluralistic and consultative culture. We envisage the G20 presidency as an occasion to showcase India to the world. This will be done through cultural activities, regional festivals, technology programs, sustainability initiatives, millet promotion, one district, one product promotion, community engagement, and civil society activities. Our presidency will witness a Jan Bhagidari, where all of India would not just participate, but celebrate this occasion. As the House is aware, government has briefed leaders of political parties in this regard. We see this as a truly national endeavor and seek the cooperation of everybody to make it a success. I would also like to highlight that India will provide a stronger voice to issues of interest of the global south. This is very much a part of our DNA. It was in evidence most recently during the vaccine Maitri. Our emphasis will be on sharing the India story, caring for all, and taking collective action.
It will focus on emphasizing our achievements and priorities such as digital India, clean energy, sustainable lifestyles, women-led development, and multilateral reforms. Prime Minister's initiative on lifestyle for environment, and India's millet initiative, which has resulted in the UN declaration of the year 2023 as the International Year of Millets, would also be prominent in India's approach towards addressing the SDGs. Today, we are building stronger bridges with both developing countries and advanced economies. Apart from our G20 presidency, we are members of a growing number of groups and mechanisms. Some of them are relatively established, like the BRICS and Commonwealth. Others have been more recent, like the Quad and SCO, and still others are emerging, like the I2U2 and the Indo-Pacific Economic Framework. We are also increasingly engaging the world in group formats, reflecting the growing interest on their part to cooperating with India. This could be with the ASEAN, with Africa or the Pacific Islands, or indeed the Nordic nations, CARICOM, CELAC, or Central Asia. Our growing collaboration with the European Union is of particular importance. Chairman, sir, I would like to share with the House that the ministers of MEA have been equally active during this period. I have myself hosted the foreign ministers of Maldives, France, Singapore, Botswana, United Kingdom, Ghana, Gabon, Belarus, Syria, UAE, and Germany in this period. I would also highlight the India-Singapore Ministerial Roundtable and the collective interaction with 12 African ministers dealing with education and skills who were here at the invitation of my colleague, Dharmendra Pradhan, that took place in Delhi. It would give the honorable members a sense of the breadth of our engagement and the growing global interest in India. This was also in evidence during my outgoing visits to Thailand, Brazil, Paraguay, Argentina, UAE, Japan, Saudi Arabia, Uzbekistan, USA, Australia, New Zealand, Egypt, and Russia. It was my privilege to represent India at the UN General Assembly high-level segment this year. I took the occasion to engage with the G4, the L69, Quad, IPSA, BRICS, CELAC, and CARICOM, and hold multiple trilaterals and bilaterals. Our ministers of state have been equally vigorous in promoting India's interests abroad. Sri Muralidharanji went to Brazil, Senegal, USA, Oman, Djibouti, Kenya, Eritrea, and Nigeria. Srimati Meenakshi Lekhiji represented India at the SICA summit at Kazakhstan and visited Georgia, Norway, Iceland, and Malta. Dr. Rajkumar Ranjan Singhji was our representative at the IORA Ministerial and visited Indonesia. So, the House would also be aware that as the chair of the Counter-Terrorism Committee of the UN Security Council, India hosted its special meeting in October. All 15 members participated and paid homage to victims of the 26/11 terrorist attack at the Memorial Wall in the Taj Mahal Palace Hotel. This was the first time that the UNSC held a meeting in India. The Delhi Declaration emphasized the need to display zero tolerance towards terrorism and to combat it in all its forms and manifestations. Chairman, sir, I'm happy to inform the House that after a gap created by COVID, India will be hosting the 17th Pravasi Bharatiya Divas at Indore from 8 to 10 January 2023. This year's theme acknowledges the contributions of Indian diaspora as, quote, diaspora, reliable partners for India's progress in Amrit Kal, unquote. The 32 million Indian diaspora is a great source of support for our country. India's 4C commitment of care, connect, celebrate, and contribute would be on display during these celebrations. His Excellency President Mohammad Irfan Ali of Guyana will be the chief guest of the Pravasi Bharatiya Divas 2023. Where Republic Day 2023 is concerned, we have invited His Excellency President Abdel Fattah al-Sisi of Egypt as the chief guest. He has graciously accepted the invitation. Honorable members would also be glad to know that the 12th World Hindi Conference will be jointly organized by India and Fiji from 15 to 17 February 2023 at Fiji.
This will be the first occasion for hosting this event in the Pacific region. Chairman, sir, foreign policy today is no longer just an exercise of a ministry or even simply that of the government. It has a direct impact on the daily lives of all Indians. This may be in ensuring that our products have market access or that our talent gets into the global workplace. But it is equally an effort to ensure that technology, best practices, and capital flow into India. Our endeavor in a difficult global situation is that the welfare of the Indian people is ensured, however challenging the circumstances. This may be in exceptional situations like Operation Ganga in Ukraine, or the ability to access key necessities like energy and fertilizers on affordable terms. Or indeed, in concluding migration and mobility partnerships, as we have just done with Germany. Indian foreign policy is there to serve the Indian people. We will do whatever it takes to discharge that responsibility. It could be in ensuring international support for our policies or in the acceptance globally of our interests and objectives. These may be difficult times, but it is also an occasion to display our leadership and make a strong contribution to global peace, stability, growth, and security. Honorable members know this well and understandably approach the ministry sometimes with their particular concerns and issues. It has been our earnest effort to respond as effectively and as sincerely as possible to their communications. We are extremely conscious that foreign policy must respond to the requirements and demands of our society. We demonstrate that as much through the activities of our embassies abroad as we do at home through improved passport and immigration services. I have every confidence that this August House does appreciate both our promotion of national interests abroad as well as our responsiveness to the daily requirements of our people. I conclude with the expectation that the House will continue to extend its fullest support to our efforts and encourage our success in the G20 presidency in particular and foreign policy in general. Thank you so much. सर G20 में भी मुलाकात हुई होगी, कई जगह मुलाकात हुई होगी। क्या जहां हमारे 20 जवानों की शहादत हुई, उस चीन सीमा के संदर्भ में जहां चीन ने बलपूर्वक कब्जा किया, कोई वार्ता आपकी हुई है? बस इतना ही जानना चाहता हूं। आप बताना चाहें बताएं, और अगर बताने लायक ना हो तो मत बताइएगा। I think one second. One second. I had made an appeal to the honorable members, and you are more cognizant than I am. This is a House of Elders, the upper house. We are required to conduct our proceedings in a manner that generates an ecosystem of emulation all over. The Honorable Minister has imparted a very thorough statement. Members of the House are entitled to seek clarifications. In a methodical manner, input has been made available to me. I would be happy that others also follow the same system. Dr. Amar Patnaik. Thank you, Chairman, sir. I'd like to thank Honorable External Affairs Minister for a very detailed and expansive statement about India's foreign policy outreach, as well as meeting domestic requirements. I have just two clarifications to ask to Honorable Minister at paragraph number 12. There is a general statement at number of paragraphs regarding India's leadership role in the technology front. On the specific question of trusted cross-border data flow,
as well as to deal with virtual digital assets, would India be considering promotion of a global body to have a principle-based global order on the lines of the WTO, or would it like to do this entire thing within the ambit of WTO? The second clarification, sir, is that all over the world, wherever I travel, the question of inequity, particularly in the areas of health, area of education, digital inequity, these arise, but in Africa, for example. Would India be taking the lead in putting this particular ethos in the G20 and represent the least developed countries of Africa, Asia, and Southeast Asia to the global north? Thank you so much, sir. Honorable Minister. So, with regard to the clarification sought on digital. Minister, finally, the Honorable Minister would respond. I have another list with me, just given to me, Shri Waiko. We have three more names, Honorable Minister. Initially, there was one. Honorable Mr. Chairman, sir, the statement given by the minister shows very clearly that our mutual interest with other countries and our positive approach towards other countries. But I would like to know, Geneva, under the United Nations, it is a very important organization. There, when the voting took place regarding Sri Lanka, for what reasons India abstained from voting? This is my first clarification. I want to reply from you. Second thing, at our doorstep, the genocide took place. Lakhs and lakhs of Tamils were killed, and women were raped, and children were killed, and the previous government gave weapons. That is different. But now, when all these things have happened, you are giving support now to Sri Lanka. But Sri Lanka has leased out Hambantota port to China, and recently also Chinese warship landed in the port, compromising our national security and coastal security. It will have a serious bearing on India's security and economic and strategic interests and maritime and coastal facilities. On this important issue, what steps you have taken to protect the interests of India? Professor Manoj Kumar Jha. Thank you, Honorable Chairman, sir. My compliments to you on assuming a charge. My first compliment to Honorable Minister, sir. It is very comprehensive. You almost touched every aspect of it. But there are certain concerns which I would like to know from you. Many a time when we read about Government of India's stand or position paper, it seems that the foreign policy has only been shaped by after 2014. So this 2014-centric approach of foreign policy undermines the people and the processes which were involved since 1947. Number one, sir. Number two, India had a very stated position, Honorable Minister, sir, through you, Honorable Chairman. In a conflict between oppressor and the oppressed, India never was neutral. Between a fight between an elephant and an ant, if your neutrality helps the elephant, I think there somehow, recent developments in Gaza, I think I didn't hear anything from Government of India. And finally, between Ukraine and Russia, it was a very, very delicate chapter. We have our versions different from you, but whatever I think you could create a space, you did, but it could have been better. Thank you so much, sir. Dr. John Bittas. Thank you, sir. Thank you, sir. Let me also congratulate you taking this opportunity. I'm glad that the Honorable Minister made a very detailed statement touching every point. At the same time, I support my colleague, Mr. Manoj Jha, that he has avoided dealing with the Palestinian cause, for which
India has been always steadfast. So I would request the Honorable Minister to have his response on that. So the second clarification is that there have been a lot of talk regarding the extent of pressure exerted by the West on India with regard to the purchase of oil from Russia. The minister has been very diversionary on that point. I would request him to obviously pronounce his mind on that. So the third point is that there has been a price cap imposed by the European Union with regard to the oil price from Russia. How it is going to impact the purchase of oil from Russia vis-a-vis India and Russia. So the fourth point is that, is it not a fact that the chairmanship of G20 is on a rotational basis? And if so, the theme that one earth, one family, one future, will the government respect the diverse culture of India while campaigning on this slogan? And the last point, sir, not the least, sir, there have been thousands of students who have come back from Ukraine. And there was a statement by the Honorable Minister last time. I would like to know from the Minister whether all these students have gone back to Ukraine or how he has facilitated the study further. Thank you, sir. Shri Tiruchi Shiva. Thank you, Mr. Chairman, sir. Sir, we appreciate our Prime Minister's voice at Samarkand, declaring that this is not an era of war. But the Ukraine war is still going on. The people there are undergoing so much of struggle. They are struggling for basic food and everything. Other than the students who have come here, whose future is still in a question and they have not yet been resolved. In a humanitarian consideration, India has always intervened wherever there is some problem for any human being in the world. So in this context, what are the steps our government is taking to put an end to this war and save the people of Ukraine, as well as to restore the students who have returned from there, to find a way for those students who have returned from Ukraine? Thank you, sir. Shri Thambi Durai. Thank you very much for giving the opportunity. Sir, our Honorable Minister gave detailed explanation and a statement regarding the foreign affairs thing. I appreciate him. And also, especially G20, which is going to take place, is a very is a good for our Indian country. Our Modi ji has taken a lot of efforts, appreciate. But, sir, as our Honorable Member Vaiko ji raised on issue, Sri Lanka Tamil issue, apart from that, Sri Lanka and India had a pact to solve the Sri Lankan Tamil issue. That I'm giving some amendment and protect the rights. What is the stage now? That is, at the time, Jayavardhane and Honorable former Prime Minister Rajiv Gandhi, they made an agreement. Whether the government is very seriously insisting that to get the, because when we are conducting a program, the G20, it is a prestige for India. At the same time, our neighbor, our brothers who also has said died and also for certain causes. But what is the fate of that fact? Whether government India has taken a serious step on this thing? Mr. Sujit Kumar. Sir, I will certainly commend the Honorable Minister for his detailed statement on India's foreign policy and for providing competent leadership. Sir, I have a specific query for him. Sir, while all eyes are on the World Cup in Qatar, sir, little is known about the fate of 8 Indian ex-naval officers who are in detention in that country for close to 100 days now. Sir, as per newspaper reports, they were picked up in the middle of the night from their home and are kept in solitary confinement since 30th of August. And consular access was provided to them only on 3rd of October. Sir, the family members have expressed serious concerns about the health, mental harassment of the ex-heroes of our country. And sir, it seems that MEA is not very forthcoming on what dialogue is going on with the Qatari government to secure and seek their release and repatriation. And also, sir, it is believed that this has been done
and they have been charged with espionage, apparently at the behest of one of our neighbor, unfriendly neighbor. So, sir, from you, through you, sir, I would like to know from the Honorable Minister, what are the steps being taken by the Government of India to seek the release of our former heroes? Thank you. Mr. Pramod Tiwari. No, he was interrupted. I asked him to take seat because it had not come through a method. Go ahead. सर, मेरा सिर्फ एक विनम्रता पूर्वक राष्ट्र हित में एक सवाल है कि मिले होंगे आप, वहां अच्छी बात भी हुई होगी, G20 में भी मिले थे और जगह मिले थे। हमारे 21 जवानों की शहादत हुई है भारत चीन सीमा पर। कुछ भूभाग भी उन्होंने काफी कब्जा कर रखा है। क्या उसके संदर्भ में कोई वार्ता हुई हो तो आप अवश्य बताएं, पूरा राष्ट्र जानना चाहता है, ये आवश्यक है। बहुत ही बहुत धन्यवाद। Mr. Vinod Vishwam. Sir, thank you. Sir, the statement made by the Honorable Minister Jaishankar ji is so important to the contemporary times. And the keen interest the House extended to him shows that how important it is for this House also. I am grateful to the Minister and for his broad-heartedness. So on certain questions, I share the views raised by my colleagues like Anush Kumar Jha and John Bittas and some others. Sir, certain questions, India has to be very clear that on Palestine, always we were having a position. We stood with the people of Palestine. We regarded them always as our friends and sons and daughters. Now we feel whether there is a tilt of our voice in that matter. Kindly be clarified. Sir, just like that, the concerns of the students who came from Ukraine is haunting all of us. I know that the minister also tried his level best, but still they are having anxiety of their future, their families too. Kindly adjust them. Sir, the third point is that the SAU, South Asian University, run by the SAARC countries. India is hosting it in Delhi. Sir, the SAU students and the teachers are facing a problem. That has to be settled. I am very sure that the diplomatic skill of our minister can help it. I am very sure that he has intervened. I wrote to him, he replied to me also. But I am very clearly telling you, the matters are yet to be answered clearly. So please, sir, serve the issue. My next point is that regarding the, I went through the agenda of G20, and now you are the chairman. The chairmanship is rotation, sir. Last year it was Indonesia. Next year somebody else will come. It will come. So it is very good that India is now the chairman. Of course, by rotation. During this chairmanship, we believe that our great country will make its own impact on the G20 countries and all over the world. In that regard, I may ask the government. In the agenda of the G20, I read women empowerment is an important issue. Women empowerment. Will the government be positive enough to enact the Women Reservation Bill during this period? My question. Next question is that regarding the environment. He also mentioned it. The agenda of the G20, environment and climate change is very properly focused. And now we see that in Nicobar Islands, my friends knows it. Subhandar Yadav knows it. Big disastrous steps are being taken there. Lakhs and lakhs of trees are being cut off. And the balance of the island and the whole situation area is the Clarification. So I request the, no. So I focus the point. I am focusing on you, sir. I am focusing on you, and I am focusing on you of the protection also. Sir, some friends there, out of their voice or enthusiasm, they want to raise voice and make people silent. I can tell you, that's not the way of the house. I want to conclude that. Let me conclude. Let me finish the question. No, sir. Let me finish it. Let me finish it. Let me finish it. I was from the chairman. Okay. One sentence more. Sir, one sentence more. Point of order. One sentence more. 1 second. Sir, Rule 240. Rule? 240.
240. Yes. Sir, irrelevance. The chairman, after having called the attention of the council to conduct of a member who persist in irrelevance. Sir, ये completely जो foreign policy का issue है, हमने regulation से कोई चीज पास करी। Go ahead. पार्लियामेंट में मैं क्वेश्चन का जवाब दूंगा। जो इनका irrelevant विषय सर, पहले वो कार्रवाई से हटाया जाए सर, क्योंकि irrelevant चीज आप डिबेट में नहीं बोल सकते सर। Rule is very much clear. Honorable members, it is, I think, third time on the first day, I'm required to appeal to you. I seek your cooperation. I have indicated with clarity the kind of anguish, disillusionment which the proceedings are imparting in public at large. More than any other theater of legislature, this theater has to take the lead. This theater has to set standards that are to be emulated by any other center in the country. I would therefore urge you to confine to dignity, decorum, and be in a focused manner. I have carefully gone through every word is spoken by the Honorable Minister, and you will find a spinal strength of the foreign policy which he has articulated in a focused manner. I personally have had the occasion on my 2 visits abroad, the kind of reflections that have affirmatively evoked. I would appreciate that while you raise your concerns, he is the right person to respond to your issues by way of imparting clarification. We must also be cognizant that we are dealing with a sensitive issue of national importance that has impact in the country and outside. Your concerns reflected are critical and important. They would be responded. But if there is any diversion, dilution, or some kind of a distraction, that will not be in consonance with the upper house or the House of Elders. I would now call upon Okay. Last sentence. No. Okay, 1 second. Last sentence. Go ahead. Please conclude. If there is no mention in the G20 agenda on the women empowerment and climate change, I withdraw my position. If there is, I ask the government, what you do in Nicobar Islands are anti-environment. Disaster to environment. Kindly stop it. Okay. Lieutenant General Dr. D.P. Watts. Sir, through you, I want to clarify from the MEA. Indian diaspora is the biggest in the world, but still it needs to expand. And lakhs of students, especially with technical know-how, they want to go on work visa, on study visa. What MEA is doing to encourage such technocrats who want to achieve the know-how, expertise, and be beneficial to us in earning foreign exchange. Sri Syed Nazir Hussain. Sir, thank you, sir, for giving me this opportunity. Sir, as you know, and most of the members of the House knows, that in last couple of sessions, we have been raising this issue of Indo-China border dispute. And we have been raising this issue through the rule of the House, and on several occasions, it was not allowed to be discussed in the House. I would have liked the External Affairs Minister to have dwelled upon this issue in his statement. It's an important issue. And I wish he not only clarifies today, and I wish he gives a separate statement on the state of affairs on our border. One.
Second, sir, I had already written a letter to the External Affairs Minister on South Asian University. He had replied back to me, which was not very satisfactory. I think, though the South Asian countries are involved in that university, since it is situated in India, especially in the national capital, when the students are agitating and the teachers are also involved, and a couple of them happens to be my friends also, my classmates also. So I think that should have been taken up seriously, and it should have been resolved instead of punishing the students. The third issue is, sir, as many of our friends stated, on the issue of Palestine, we have a well-stated foreign policy. Our stand is very clear from last 40, 50 years. I think we should be moving in that direction. There should be more clarity from the days of our freedom struggle. So I think there should be more clarity, and there should be some clarification on that issue also. Thank you so much, sir. Shri A.A. Rahim. Sir, the MD Heroic Aiden is an oil tanker which is currently detained in Nigeria along with its crew. The crew consists of 26 sailors, of whom 16 are Indians. Sir, the sailors has been detained since 8th August. Sir, sir, this is a very aggressive matter. No. I am, see, no. See, so Honorable members, this is a concern. honorable members, Sir, this is a concern. honorable members, would you please take your seat? Take your seat. Once, settle down. I am here to take care of the situation. If you start dealing amongst yourselves directly, I don't have to tell you the importance and relevance of the chair. What can be more unwholesome? There is a simple method of putting across one second. There is a method where you can put your point very firmly, persuasively, moderately, in any manner you like. It has to be through the chair. And we will be saving precious public time and getting good response by way of input from the Honorable Minister. If there is formulation in precise terms, you raise your point. Thank you, sir. Please. Thank you, He is on legs. Thank you very much, sir. You see, it does not look nice for me on the first day that I suffer these kind of interruptions. I am here to accommodate everyone. I am going to an extreme degree. But that accommodation has to be on rational premise and on some rationale. So don't have interest exchanges. I am the one you have to address. I am the one who has to call upon. Please conclude. Sir, once again, I would like to salute you, sir. Please. Sir, since 4 months, 16 Indians are illegally detained. This is my concern. This is my question. Sir, these 16 parents and families are absolutely, they are under panic. So what are you taking the steps regarding this issue? This is my question. I already wrote a detailed letter to Honorable Minister, and I hope that the government will take this issue with a serious manner. Thank you, sir. Mr. Vishwadram. Yes, please. Thank you, sir. Sir, here in this document, Minister has very detailed manner. He made the Pravasi Bharat Divas and the programs. So here, I request the Minister for the clarification regarding the government is aware of the number of the Indians in different countries and the number of Indians that their jobs and also how many are lost their jobs in this recent crisis. This thing is, if Minister is ready to explain here, that is very helpful for us. Honorable members, there are no further names. So you should be happy to note that
on this issue of critical importance where the Honorable Minister has imparted his statement, I have given you full operational play. The Honorable Minister. Honorable Minister. Honorable Minister. So, I'd very quickly like to respond to the request for clarifications from multiple members, even if they couched it sometimes in a non-clarificatory way. Starting with Shri Amarpat Naik ji, sir. The question of cross-border digital flows is not a direct foreign policy issue. It is under the domain of my colleague, MeitY Minister. It is a matter on which government's views have been put in the public domain for comments. So I think it is obviously something that will evolve as public comments come in and the matter will be pursued. Regarding his second clarification, inequity, will we speak up for Africa? Will we take up Africa's cause and interest in the G20? Absolutely, the answer is an unambiguous yes. Regarding Sir Vaikoji's two questions. One about our abstention in the UN Human Rights Commission. This has been a long-standing position by India, keeping in mind what not just this government, but its predecessor governments have also thought is the most constructive way of addressing and advancing the interests of the Tamil community in Sri Lanka. That continues to be our approach. Regarding the support we have given to Sri Lanka, please, I would request the honorable member to appreciate. We have given support to the entirety of Sri Lanka, which also includes the Tamil community, the Sinhalese community, the other communities. So we have not taken a communal approach to giving support. To have a neighbor in this kind of serious economic situation, we would be shirking our responsibilities if we did not step forward at that moment. And that is exactly what we have done. If I could move on, sir, to Dr. Manoj Kumar Jha's observations. One, he asked, the view of foreign policy is to 2014 centric. I don't think that is accurate. I think if you look at everything that I have said, it is not that, in some way I'm suggesting that what has been a continuing strain in our foreign policy, and I'll come to the Palestine issue, particularly in that context. But since you are asking me, I would say, yes, 2014 was a watershed moment. Yes, things have changed better after 2014. Yes, our foreign policy has become more dynamic, more effective, more prominent after 2014. So I think I'm so glad you picked up the 2014 issue, and I hope you will be supportive of it. On the Gaza issue and the Palestine issue, because some other members also raised it. We are very clear on Palestine. We support, sir, a two-state solution. We want a two-state solution with the two states living peacefully side by side. Some of the members suggested somewhere that our support or empathy for the Palestinians had changed. In fact, our financial support for the Palestinian Refugee Welfare Agency has gone up in the tenure of this government. I hope that honorable members would appreciate that. The issue was also raised about the neutrality, not my word, sir, this was the honorable member's clarification request, on the Ukraine situation. And Professor Jha suggested that he could do my job better. I mean, that is certainly he is free to hold that opinion. What I do want to say is we have been clear, publicly clear at the Prime Minister's level that this is not an era of war. We have consistently urged dialogue and diplomacy. When it comes to the impact of the war on Indian people or in the rest of the world, we have also done the right things about that. We have taken measures to soften the impact, whether it is of fuel or whether it is of food inflation, whether it is of fertilizer costs. So if
it is your contention that our position has been in putting the interests of the Indian public first, I plead guilty to it. Yes, I put the interests of the Indian public first. It is my duty to ensure that fuel, fertilizer, food, the Indian public does not pay the cost of some other country's actions or some other region's actions. I think that is the way, in my view, at least foreign policy should be conducted. If I could turn then, sir, to Mr. John Brittas's comments. One, the Palestine issue I have already addressed. The pressure from the West, I think I have addressed publicly. I have said again what I have just mentioned. I would like to clarify. We do not ask our companies to buy Russian oil. We ask our companies to buy oil. What is the best option that they can get? Now, it depends on what the market throws up. If tomorrow the market gives us more competitive options, again, please do understand, it's not just we buy oil from one country. We buy oil from multiple sources. But it is sensible policy to go where we get the best deal in the interest of the Indian people. And that is exactly what we are trying to do. Regarding the oil cap, the impact of this is not very clear to us. Our concern is really what would it do to the stability and the affordability of the energy markets. That is a concern. On his clarification regarding diversity in the G20, absolutely yes. I mean, the fact that we are going to celebrate the G20 across the states of India in multiple cities in a manner in which we have never done any international event before. I think that is a greater statement of proof of diversity, of our commitment to diversity that I can make. And it is spread without discrimination across every state of every region of this country. And finally, because again, multiple members asked about this, where on the Ukraine students, some of the students have gone back, some have looked for other solutions. In some cases, the Ukrainian authorities have offered some solutions. So it is a very mixed picture. Unfortunately, there is no clean and simple answer here, but the government is doing what it can in this situation. That was also a concern which Trichy Shivaji raised about the Ukrainian students. If I could turn then, sir, to the clarification sought by Thambi Doreji about the India-Sri Lanka agreement of 1987. It is still an agreement. It is an agreement which has been the basis for changes in Sri Lanka, including provincial councils which have come about as a result. In our view, it is still an agreement that continues to remain the foundation of how both our relationship with Sri Lanka is conducted and how Sri Lanka itself looks at its own future. So I would like to assure him that we continue to, it is very much on our radar. We are very, very supportive of it. Then, sir, if I could turn to the clarification sought by Shri Sujit Kumarji. This is a very sensitive case. I'm referring to the detention of some of our ex-servicemen in Qatar. I can only say, because their interests are foremost in our minds, I can only assure him we have been seized of the matter. Our ambassador, senior officials have been in continuous touch with the Qatari government on this. Our effort is obviously to ensure that they are not treated unfairly and that if the sooner we can bring them back home. So I assure you that they are very much, very strongly in our priorities in respect of Qatar, and it is something that we will be pursuing. Regarding Shri Pramod Tiwari ji's clarification request on China, and I think Nazir Hussain ji also brought up the same issue. Diplomatically, we have been very clear. We have been very clear with the Chinese that we will not tolerate, we will not countenance attempts to unilaterally change the line of actual control, and that
So long as they continue to seek to do that, and if they have built up forces which in our minds constitute a serious concern in the border areas, then our relationship is not normal. And the abnormality of that has been in evidence in the last few years. Meanwhile, the military commanders continue to engage each other, and I think given the sensitivity of that matter, it is something which is left to the military commanders to deal with, and I think the House should be understanding of the national sensitivity of such a delicate matter. Regarding Vinay Vishwamji's issue, I think the Palestinian issue I have addressed, the Ukrainian issue I have addressed, but I think two members, sir, had concerns about the South Asia University. He did and Nazir Hussain ji did. I would like to assure the members, we would like obviously to not see this kind of situation. But the South Asian University is not under the direct jurisdiction of the Government of India or the Ministry of External Affairs. It is something which is run by a collection of countries. And part of the problem is that some of the countries have not made the payments which they were required to do for the university. So the university is going through a period of very severe financial stress. Now, beyond that, there are issues of management and academic freedom for the university, because it is an international university. It is not the policy of the Government of India to interfere in the workings of an international university. But we will, whatever influence and counsel we can give them to sort out any problems in an amicable and non-stressful way, certainly we would do that. On the issue of agenda of G20, yes, women-led development would certainly be high among our priorities, as will be a set of sustainability issues, including, as my own statement said, lifestyle for environment. I think it's not, again, my direct subject. My colleague Bhupender Yadav ji will bear out that at COP27, what we are doing in environment is, I think, today increasingly recognized. I had the privilege, along with him, to be with the Prime Minister at COP26 as well. So I think we should look really at today at how the world sees our contributions and progress when it comes to climate action and climate justice. So I would not take the very pessimistic view which the honorable member has done. Regarding General Wats's point about study visas, we are very concerned that a number of countries, for reasons which have to do with finance and their processes, have slowed down issue of visas. We have taken up with many of these countries. I myself have done at the ministerial level with the US, with the UK. Yesterday, I did it with Germany. In many cases, our intervention has led to an improvement. I still think there is some distance to go, but it is certainly, as I said, we run a people-centric foreign policy in the Modi government, and certainly today facilitating the faster issue of visas would be very, very high among our priorities. Finally, on the heroic Idum, the ship issue, sir, the one in Nigeria, even though it is not a policy issue, as my colleague recognized, I would like the member to know we have been in touch with the crew since August. It was detained, the people were initially detained in Equatorial Guinea. They were then brought to Nigeria. They are facing charges in court. There are a number of charges, including oil smuggling against them. We have given them consular support. Our High Commissioner has gone to see them. It is again our endeavor to ensure that they are not unjustly treated, that they have full access to all recourse of law, and that they have the ability to communicate with their family. The last question, the loss of jobs. How many Indians are there abroad? Our estimate is that there are 3.2 crore persons of Indian origin and Indian nationals living abroad. But regarding their job loss figures during the COVID, that is not something, because the data is not maintained by Government of India, so I cannot honestly answer the question. And I hope, sir, I have provided full clarification to all the questions. The Wildlife Protection Amendment Bill 2022, Shri Bhupender Yadav to move a motion for consideration of the Wildlife Protection Amendment Bill
2022. Time allotted is 4 hours. Respected Chairman, sir, I move that the Wildlife Protection Amendment Bill 2022 as passed by the Lok Sabha to further amend the Wildlife Protection Act 1972 be taken into consideration. Honorable members, Honorable Minister, if you like to say about the bill, you may speak. मैं कुछ बोलना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, भारतीय वन्यजीव संरक्षण विधेयक जो 1972 में पारित किया गया था, उसमें मैं संशोधन के लिए विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तावित करता हूं। दुनिया में जो एक विभिन्न देशों के बीच में संधि है, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑन एंडेंजर्ड स्पीशीज, जिस प्रकार से वन्य जीव और वन्य संपदा दुनिया में विलुप्त होती जा रही है और कुछ संपदाएं इस कगार पे आ गई हैं कि उनका संरक्षण करना आवश्यक है, इसको लेकर के दुनिया के सभी देशों के अंतर्गत एक संधि 1976 में हुई थी। हम सब जानते हैं कि वन्य जीवों का जो अवैध व्यापार होता है उसको रोकने के लिए और उसके साथ ही साथ उसमें रेगुलेशन लाने के लिए हर देश के अंतर्गत नियमों को बनाने का और कानून को पारित करने का प्रावधान किया गया था। भारत सरकार भी इस अंतर्राष्ट्रीय संधि के सदस्य है। हालांकि हमारे देश में जो इस प्रकार का अवैध व्यापार होता है उसको कस्टम एक्ट के तहत, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट और रेगुलेशन एक्ट के तहत और एग्जिम पॉलिसी एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत नियंत्रित किया जाता है। परंतु इस संधि के अंतर्गत दुनिया के सभी देशों के लिए ये कहा गया था कि एक अलग से वन्य जीवों का एक स्ट्रक्चर ढांचा बनाया जाना चाहिए। मैं कहना भी चाहूंगा कि तत्कालीन यूपीए सरकार ने ये एश्योरेंस भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिया था, लेकिन उन्होंने पूरा नहीं किया। और चूंकि इस अंतर्राष्ट्रीय संधि को 2005 में हमने एश्योरेंस दिया था, पूरा करना आवश्यक है और अतएव इस बिल को लोकसभा में रखा गया है, जिसको सर्वसम्मति से पारित किया गया और मैं ये चाहता हूं कि ये बिल इस राज्यसभा में भी सर्वसम्मति से पारित किया जाए। इस बिल की प्रस्तावना को रखते समय माननीय सभापति महोदय, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अभी हाल ही में 14 से 25 नवंबर 2022 में पनामा में दुनिया में साइटिस की जो कॉप है वो 19 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी। हमारे देश में विशेष रूप से फॉरेस्ट में जो हमारे ऑफिसर्स और साइंटिस्ट हैं, उनके प्रयासों के कारण भारत ने जो प्रस्ताव किया और हमारे जो 2 स्पीशीज है टर्टाइल, नेमली रेड क्राउन रॉफ टर्टाइल और सॉफ्ट शेल टर्टाइल, उसको एंडेमिक में अपेंडिक्स 2 से अपेंडिक्स 1 में किया गया। माननीय सभापति महोदय, आप जानते हैं कि विशेष रूप से राजस्थान और हरियाणा के क्षेत्रों में शीशम का वृक्ष बहुतायत से पाया जाता है और स्थानीय कारीगर जो हैं उसके द्वारा विभिन्न चीजों का निर्माण करते हैं और हमारे राजस्थान के भी बहुत अच्छे कारीगर इसका निर्यात करते हैं। हम ये चाहते थे कि ये शीशम निर्यात से पूरी तरीके से इसको, जिसको डेल्बर्जियस सिस्को इसका एक बॉटनिक नेम है, हमने इस प्रस्ताव को भी किया। हालांकि प्रस्ताव पास नहीं हुआ, फिर भी हमको इस बार साइटिस से क्लैरिफिकेशन मिला कि 10 केजी के आइटम तक के निर्यात को हम लोग प्रोवाइड कर सकेंगे और एक तरीके से हमको इस साइटिस में और हमारे जो छोटे कारीगर हैं उनको एक बड़ी अच्छी राहत भी मिली है। इस बार ये भी अच्छा रहा कि भारत को स्टैंडिंग कमेटी में एशिया रीजन की तरफ से भारत ने अपना स्थान पाया। लेकिन एक और विषय जो टाइगर कंजर्वेशन में, आजकल दुनिया के कुछ देशों में टाइगर की फार्मिंग भी हो रही है और उसके कारण उसका इलीगल ट्रेड बढ़ रहा है। भारत के उस प्रस्ताव को भी वहां पर रखा गया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके सामने ये भी कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार पूरी तरीके से
वन्य क्षेत्र के संरक्षण के लिए, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। हमने पिछले दिनों में अभी हमारे देश में विशेष रूप से टाइगर कंजर्वेशन के लिए काम किया और मुझे बताते हुए खुशी है कि दुनिया का जो 70% जो वर्ल्ड वाइल्ड टाइगर है वो हमारे देश के अंतर्गत है। अभी हमारे एस्टिमेशन का कार्य चल ही रहा है। उसके साथ ही साथ भारत ने 1950 में जो हमारे यहाँ से चीते विलुप्त हुए थे उनको वापस लाकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जिसको इकोलॉजिकल रॉन्ग जो हमारे देश में हुआ था, इकोलॉजिकल हार्मनी को स्थापित करने के लिए कार्य किया है। हमारे देश के जो टाइगर रिजर्व्स है उनको TX2 का अवार्ड भी इंटरनेशनली मिला है। हमारे 16 टाइगर रिजर्व्स को इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन भी मिला है। और कई बार मैं ये कहता हूं कि जब टाइगर कंजर्वेशन की बात हम ये कहते हैं तो कई बार ये विषय उठाया जाता है कि हम इतना जोर क्यों दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने एक अभी मैप रिलीज किया है कि हिंदुस्तान की जो मुख्य रूप से दक्षिण क्षेत्र में निकलने वाली नदियां है, जो हमारे टाइगर रिजर्व के जो कंजर्वेशन एरिया है, वहीं से उनका उद्गम का स्रोत है। और इसलिए उन जंगलों को बचाना, वहाँ की इकोलॉजी को बचाना, वहाँ की इकोलॉजिकल सिस्टम को बचाना, ये बहुत आवश्यक है। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे विशेष रूप से बंगाल के क्षेत्र में जो सुंदरबन टाइगर रिजर्व एरिया है, उसको भारत और बांग्लादेश के सहयोग के साथ बायलैटरल पार्टनरशिप हमने करी है, उसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब चीता इंट्रोडक्शन के साथ ही साथ हमारे देश में प्रोजेक्ट लायन के ऊपर काम किया जा रहा है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले से घोषित भी किया गया था। और पूरी दुनिया का जो 100% एशियाटिक लायन है वो भारत के अंतर्गत है। हमारे देश में जो रिवर क्षेत्र में एक बहुत बड़ा जो हमारा एक संरक्षण का क्षेत्र है, वहाँ पे प्रोजेक्ट डॉल्फिन है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन को कंजर्वेशन को लेकर भी काम कर रहे हैं। हमारे कई सदस्यों के पत्र भी मेरे को लगातार मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर लगातार आते हैं। हमारी सरकार के द्वारा फरवरी 2021 में इसको लेकर के एक सर्कुलर जारी किया गया था। और उसके साथ ही साथ जो बाकी के विषय हैं उनको भी मैं विस्तार से आपके सामने, जब हमारे सदस्य इस विषय को रखेंगे, मैं आपके सामने विस्तार के साथ रखूंगा। लेकिन इस जो संशोधन है, इस संशोधन को लाने के हमारे दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य जो हमारा इंटरनेशनल ट्रीटी है, उस इंटरनेशनल ट्रीटी का भारत जो सदस्य बना और अभी हाल ही में जो हमारे भारत का प्रतिनिधिमंडल जाके आया है, उसकी आवश्यकता और भारत के नेतृत्व की क्षमता को देखते हुए उसको हमारे लीगल प्रोविजन में लाना आवश्यक था। उसके साथ ही साथ जो हमारे वन्य क्षेत्र में लंबे समय से रहने वाले जो ट्रेडिशनल कम्युनिटीज के जो लोग हैं, जो ट्राइबल लोग हैं, जब हम उनका विस्थापन करते हैं तो उनके जो उनके मवेशियों के लिए और बाकी लोगों के लिए जो उनके परंपरागत अधिकार है, उसमें कुछ हद तक कुछ विषयों पे संरक्षण, जब तक उनका पूरी तरीके से पुनर्स्थापन ना हो, देना आवश्यक था। इस प्रकार की एक संवेदनशील सरकार के द्वारा कि हम वन के विकास के साथ ही साथ वहां पे रहने वाले जो स्थानीय समुदाय हैं उनके संरक्षण और उनके विषयों को भी आगे लेकर के चलें, क्योंकि हमारे देश में प्रकृति के साथ रहने की एक परंपरागत सोच है। प्रकृति के साथ जीवन जीने का हमारे यहाँ एक जीवन पद्धति है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया का जो क्लाइमेट चेंज का जो संकट आया है, उसके लिए भी पूरी दुनिया को एक मिशन लाइफ का विजन दिया है। वह विजन भी प्रकृति के साथ, और हम ज्यादातर जिसको माइंडफुल कंजम्पशन कह सकते हैं, माइंडलेस यूटिलाइजेशन की दर है वो है। और इसलिए ये जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है, इसमें ये जो संशोधन है, ये आज के समय की अंतर्राष्ट्रीय संधि के अंतर्गत भी आवश्यकता है। और कुछ हम अपने स्थानीय प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को सुदृढ़ करने के लिए, स्थानीय समुदाय को रियायत देने के लिए हम इन संशोधनों को लेकर के आए हैं। मैं सदन से आग्रह करूंगा कि वो सर्वसम्मति से इसको पारित करें। इतना ही कह के मैं इस बिल की प्रस्तावना आपके सामने रखूं। मोशन मूव्ड श्री विवेक तनखा। First of all, this is my first debate before the Honorable Chairman, and I hope the Chairman is still there for the debate.
Yeah, it's okay. I thought the safest way to take a respite is when a distinguished member of the same fraternity, a senior advocate, who normally on the first day will have no option but to be indulgent. Sir, before I start, let me give a little brief background of this law. I'm sure most of the members would know this. Sir, this wildlife protection concept was the first time enacted by way of a law in 2012 when we brought Wild Birds and Animal Protection Act 2012. And that continued for many, many years. This power to enact on wildlife was basically reserved for the states. ये state का power था, state legislature का, but with the 42nd constitutional amendment in 1977, this power was transferred to the concurrent list from the state list. Earlier it used to be entry 20 of the state list. Now it is entry 17, 17A, 17B of the concurrent list. So आज के दिन, on this subject, both the state as well as the center can legislate. But if there is an overlapping field, then the state legislation can only come into effect with the assent of the president. That's the law. 1972, before the amendment of this act, the Wildlife Protection Act was enacted. Even though at that time, the power was with the state, because about 11 states passed resolutions at that time that we want a central enactment. This is an all India subject, and this subject is something which has to be addressed nationally. So that is why in 1972, the parliament, under the constitutional power, made a law in terms of a state subject, which was called the Wildlife Protection Act, 72. इस Protection Act में बहुत सारे amendments हुए बीच में. Now, this is one stage at which broad-based amendments have come. These amendments deal with Rio Treaty also. These amendments deal with many, many conventions. But I think the basic facet of this entire amendment is, as the Honorable Minister said, to fill up the loopholes, to fill up the gaps in the various sections across various chapters. But कुछ बातें ऐसी हैं जो मेरी ओपिनियन में आपसे छूट गई, क्योंकि कितना भी आप concentrate करके law बना लीजिए, if it doesn't go to a standing committee or a select committee, there will always be areas which get left out. So I'm going to basically be speaking on areas जो छूट गए हैं, which are left out. Now, let me start with section 43. Section 43 is the section जिसमें सबसे ज़्यादा विवाद है इस वक्त. This is the section, sir, in which you permit the transfer and transportation of elephants. ये हमारे गणेश जी हैं, और गणेश जी का ट्रांसफर और ट्रांसपोर्टेशन आपको अगर करना है तो उसके लिए आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा. प्रॉब्लम अरोज बिकॉज जो एक्ट इन्होंने प्रोवाइजो लाए हैं, जो प्रोवाइजो सेक्शन 43 पे प्रपोज्ड है, इट सेज this can be done. ये elephant transportation and transfer can be done for religious, वो तो ठीक है, or for any other purpose. और any other purpose section 63 में ये कहते हैं कि हम rules के through deal करेंगे. Now that has left a big gap. आप any other purpose करके आपने इसको इतना vague कर दिया है, depending on who is in power, who thinks how. ये चीजें में even touch human sensibility. Elephant has been an issue with the, आपको मालूम है पहले elephant used to be, हाथी एक domestic animal जैसे treat किया जाता रहा under the act.
It's only the last 30, 40 years that the elephant became an endangered species or a protected species. Not an endangered, but a protected species. आज problem ये है कि अगर हम elephant को, if we allow elephant to be used for any other purpose, तो उसमें इतने बड़े issues हो जाएंगे. आपको अंदाजा है 2675 एक्टिव elephants इंडिया में है. 2675 और उनमें 1251 that is 1251 के पास ही ओनरशिप सर्टिफिकेट है अंडर सेक्शन 42. These are PETA figures which I have taken, sir. The problem is आपके पास एक huge elephant का congregation है जिसकी ओनरशिप सर्टिफिकेट्स भी अभी तक डिसाइडेड नहीं है. The problem which is going to arise is अगर आपने इसको, इस प्रोवाइजर को इतना वीक छोड़ा और इतना indeterminate छोड़ा, तो this is going to cause problem in the times ahead. आज तो आप लॉ पास कर देंगे, बट आगे चल के ये एक इशू इस देश में बनेगा. इसी तरह आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो प्रोवाइजो है, एक्चुअली इट्स अ प्रोवाइजो टू 43(1). आप अगर सेक्शन देखेंगे, ये प्रोवाइजो एक्चुअली फिट्स इनटू 43(1) एंड नॉट 43(2). वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, but possibly it should have been a proviso to 43(1) and not 43(2). The next point that I would like to make is about section 49M. Now, ये बड़ा interesting है sir. 49M में you have to give a self declaration. मतलब आपको खुद डिक्लेयर करना पड़ता है कि अगर शेड्यूल 4 के एनिमल्स अगर आपके पोजेशन में है, तो यू हैव टू मेक अ डिक्लेरेशन टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. देखिए मेरे घर में कोई डियर है या टाइगर कब है या एनी एंडेंजर, वो जितनी स्पीशीज वहां स्पेसिफाइड है, बहुत बड़ी लिस्ट है वो, स्पेशली बर्ड्स की भी बहुत बड़ी लिस्ट है. आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है, और हाउ दैट डिक्लेरेशन इज टू बी मेड, वो 49M के बाद बहुत सारे सबसेक्शंस हैं. प्रॉब्लम इसमें दूसरी भी है कि आपने वो तो आदमी व्यक्ति के लिए तो बोल दिया कि ही शुड गिव अ डिक्लेरेशन. द प्रॉब्लम इज दैट आपने थर्ड पार्टी को कंप्लेंट करने का हक नहीं दिया इन अ सेंस. तो अगर हमने सपोज डिक्लेरेशन नहीं दिया, तो एक्ट में कॉन्ट्रवेंशन होगा. कॉन्ट्रवेंशन में पनिशमेंट होती है अंडर सेक्शन 51. दैट वो किक स्टार्ट तभी होगा जब कोई फॉरेस्ट अथॉरिटी उसको डिस्कवर करेगा. सर, जिस बिल्डिंग में मेरा ऑफिस है, सिल्वर आर्च, आज से 10 साल पहले वहां ऑस्ट्रिच मिली थी. सालों से वो ऑस्ट्रिच वहां रहती थी. सडनली एक दिन डिस्कवर किया गया कि ऑस्ट्रिच वहां किसी ने पाल के रखी है. That is an animal or a species that has to be declared. तो somewhere एक ये provision भी अगर आप करें, it might help in the declaration process कि third party जिसको knowledge है, नेबरहुड में जरूर नॉलेज होता है कि आपके नेबर के पास कौन से एनिमल्स हैं, और नेबर जरूर जाके बता सकता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को दैट सर इनके पास ये है और इसके लिए ही मस्ट बी आस्क्ड टू डिक्लेयर. तो कुछ ये प्रोविजंस को अगर आपको स्ट्रिक्टली एनफोर्स करना है, तो आपको पॉसिबली पब्लिक पार्टिसिपेशन को भी इसमें इनकरेज करना पड़ेगा. इसी तरह एक इशू है अबाउट entry of issue of every national park and sanctuary. Now this is something जो आपको completely आपने मिस कर दिया. Sir, there is what you call a 1 kilometer eco sensitive zone rule. ये 1 kilometer eco sensitive जो zone rule है, ये सुप्रीम कोर्ट ने के जजमेंट से आया. अब क्या हो गया, द सुप्रीम कोर्ट ने अभी 30 नवंबर को एक ऑर्डर किया in the context of Tungareshwar Wildlife Sanctuary, मुंबई के पास है, that this 1 kilometer eco-sensitive rule will not apply as it is. मतलब it is flexible. इसके पहले on 28 September also, Supreme Court के पास जब ये मैटर गया था, तो Supreme Court in the context of Sanjay Gandhi National Park and Thane Creek Flaming Sanctuary, it had relaxed this rule.
अब आपने एज ए पार्लियामेंट यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी, यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू अमेंड. इस इशू को आपने डील नहीं किया. अब प्रॉब्लम यह है कि ये दिस लॉ गो बाय जुडिशियल वर्डिक्ट, केस बाय केस. नेशनल पार्क्स के पास जिनको इश्यूज आएंगे वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. गोदा वर्मन की एक परमानेंट बेंच चलती है, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर उससे परिचित भी हैं. वहां आप एप्लीकेशन लगाएंगे और वो फिर रिलैक्स करेंगे. 1 किलोमीटर के अंदर से इको सेंसिटिव जोन में रिलैक्स करा जा सकता है कि नहीं करा जा सकता, किन चीजों के लिए किया जा सकता, क्या यहाँ होटल आ सकते हैं, होटल आएंगे तो किस प्रकार के होटल आएंगे, क्या यहाँ पर वेलनेस सेंटर्स आएंगे, जो भी करना है इको सेंसिटिव जोन में आप जो भी करेंगे उसको आपको इको सेंसिटिव वे में ही करना पड़ेगा. तो उसके भी रूल्स बनने, उसके बारे में भी सोच होनी चाहिए थी. तो एक बहुत बड़ा एरिया जो कि एक अपॉर्चुनिटी थी टू एड्रेस, ये इस वक्त इनसे मेरे ओपिनियन में छूट गया है, बिकॉज ये एरिया इज नाउ बीइंग डेल्ट बाय सुप्रीम कोर्ट रादर देन द पार्लियामेंट और द एग्जीक्यूटिव. एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस इज एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, बिकॉज इको सेंसिटिव एरिया जो है इसका इट इज पार्ट ऑफ आवर हेरिटेज सर. हमारी जो नेशनल हेरिटेज है उसका वो पार्ट है. हम पूरा जो हेरिटेज है 3 प्रिंसिपल्स पे वर्क करते हैं. प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल होता है कि हम चीजों को खराब ना होने दें, हम चीजों को बिगड़ने ना दें. दूसरा होता है पॉल्यूटर पेज, जो व्यक्ति इकोलॉजी को खराब करता है उसको आप दंडित करते हो. यू टेक फाइन फ्रॉम हिम, यू टेक पेनल्टीज फ्रॉम हिम एंड मेक इट सो सिवियर दैट ही विल नॉट डू इट अगेन. एंड थर्ड इज इंटरजेनरेशनल इक्विटी. मतलब हम ये जो सब कर रहे हैं, rightly so, as the honorable minister said, we are doing this all for the future. ये हम अपने आगे वाली generations के लिए कर रहे हैं. And as he rightly said, tiger farming is a concept. Southeast Asia में it's a concept which thousands of people go and enjoy. वहां पर tigers are tamer than dogs. I mean, आपके Indian dogs are more ferocious than a Thailand tiger. तो as I said, वाइल्ड लाइफ का कॉन्सेप्ट भी चेंज हो रहा है, इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट भी चेंज हो रहा है. वाइल्ड लाइफ इज ऑल्सो नाउ अ रेवेन्यू अर्निंग मशीन. कई अफ्रीकन कंट्रीज थ्रू वाइल्ड लाइफ, दिस इज दैट मेन इकोनॉमी. असली जो पूरा उनका जो अर्निंग है इज आउट ऑफ दैट वाइल्ड लाइफ. तो हमको उसको भी ध्यान में रखना है, हमको अपनी इकोलॉजी को भी बचाना है, हमको बहुत सारी चीजों पे ध्यान रख के ही इस चीज को आगे बढ़ाना है. तो जितना एग्रेसिव हम इस चीजों को, but this aggression has to be a very consultative aggression. It can't be an aggression जिसमें आप किसी चीज को रोक दो. I still remember, हम तो गोदावरी केस में I was appearing for years as counsel for Madhya Pradesh, and हम लोग की तो सबसे ज्यादा एप्लीकेशन वहां पेंडिंग होती थी. मेरा शहर जबलपुर कि all around eco sensitive parks हैं. There's Kana on one side, Bandhavgarh on one side, Pench on another side. आप जहां जाएं उस सब तरफ हमारे सेंचुरीज हैं, टाइगर रिजर्व्स हैं. तो ये भी एक बहुत बड़ी अर्निंग का जरिया बन सकते हैं. तो as you rightly said, sir, that it is correct that law amendments are necessary, but when we make these laws, we also should not lose opportunities which the law gives us to make in an intergenerational future. क्योंकि हम जो लॉ आज बना रहे हैं, this is not only for us, it is also for the future. Our children are going to enjoy this law. Not only the law, the environment of which creates out of this law. तो मेरा यही कहना है, while nobody will be objecting to this bill per se, but there are so many gaps in this bill, whether it be 43M, and this Supreme Court judgment which has not been taken into consideration. I would like the minister to take these facts into consideration before finalizing the bill, so that at least when you finalize a thing, you have a comprehensive picture before you. Thank you, sir. Thank you, Mani Vinay Tankhaji. Dr. Kanimoji, please. Honorable Chairman, sir, wildlife wealth is the world's natural wealth. The protection and conservation of wildlife is the need of the hour
and is one of the most important duties of the government and people to protect our wildlife wealth. Sir, the Wildlife Protection Amendment Bill amends the Wildlife Protection Act 1972 and seeks to increase the species protected under the law and implement the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Sir, the human population has grown exponentially over the past 200 years to more than 7 billion people today, and it continues to grow rapidly. This means the natural resources are being consumed faster than ever by the billions of people on the planet. This growth and development and also endangers the habitats and existence of the various types of wildlife around the world. So humans are being the current rate of species extinction, which is at least 100 to 1,000 times higher than the nature intended. According to the WWF's Living Planet Report 2018, the world has witnessed an astonishing 60% decline in the size of populations of mammals, birds, fishes, reptiles, and amphibians in just over 40 years. In a healthy biome and biodiversity, world humans are the culprits. Their greed for development and advancement has made detrimental to the world wildlife. Therefore, any law which is aimed to protect and conserve wildlife population is absolutely necessary. So there is a conflict of interest between Forest Rights Act and the Wildlife Protection Act. Protection of wildlife is important. At the same time, protection of the forest rights of the scheduled tribes and other traditional forest dwellers living near the protected wildlife zones. A near total ban on grazing, coupled with the system that undo the FRA has made life difficult of locals, stripping them their rights. Sir, cattle grazing has been recognized under the Tamil Nadu Forest Act 1882. The court then revised its order on March 17th. Now cattle grazing became legally permissible in forests outside tiger reserves, sanctuaries, and national parks. In effect, the verdict removed 8,101.79 square kilometer or 35.42% of forests and 6.23% of the state total's area from Tamil Nadu grazing area, even from those who were illegitimate right holders. The court thus rewrote the provisions of two major laws that the Parliament has enacted in 2006, the 2006 Amendment to the Wildlife Protection Act and the Wildlife Protection Act of 1972, rendered tiger reserves a statutory category and prescribed provisions for the notifications. The government has since notified 52 tiger reserves, both of which were designed to protect, preserve, conserve, and manage forest, wildlife, and biodiversity. According to the Wildlife Protection Act, Tamil Nadu has to prepare a tiger conservation plan to protect the agricultural, livelihood, developmental, and other interests of the people living in the tiger reserves. The core area, the critical tiger habitat, is to be established without affecting the rights of the scheduled tribes or such other forest dwellers, while the buffer area should promote coexistence between wildlife and human activity with due recognition of livelihood, development, social and cultural rights of the local people. Separately, the scheduled tribes and other traditional forest dwellers recognize grazing and traditional seasonal resource access of nomadic communities. That is, it accorded community rights to the village to be regulated by its Grama Sabha and not an individual grazing permit to be granted on payment of the prescribed fees by the forest department. This has to be followed without any hindrances to the tribal population and traditional forest dwellers. Sir, in the vast country like our India, different regions will have different wildlife population. The wildlife species living in Western Ghats are not expected to be seen in the Aravalli ranges of the north. The wildlife in the Northeast India is much different from those in the Eastern Ghats. Therefore, the state governments are better equipped to act upon the wildlife protection and conservation. I urge the Union government to have a consultation with the state governments in forming the management authority and to provide adequate representation from the states in the composition of the authority. Sir, the pristine environment of the forest are deteriorating due to the unregulated tourism. Untreated sewage and plastic wastage have endangered the environment. Only if the people realize the importance of the clean environment and cooperate with the local administration, the natural resources can be protected. In Tamil Nadu, the Eastern Ghats and the Western Ghats are natural boon to protect fauna and flora
typical to this weather and environment. We have tremendous coastal and marine habitat. Therefore, in protecting the wildlife Tamil Nadu plays an important role for DMK government in Tamil Nadu. Several wildlife sanctuaries and wildlife park, zoos, bird sanctuaries have been established in Tamil Nadu over the last 50 years. The project Save Tigers and Save Elephants have been successfully implemented in Tamil Nadu. Tamil Nadu is one of the best served countries in the countries as far as the wildlife protection is concerned. I take this opportunity to urge the union government to provide rupees 2,000 crores for the government of Tamil Nadu for enhancing its wildlife protection and conservation activities. With this, I conclude. Thank you, sir. Thank you, Dr. Kanimoji. Mani Brijlal ji. Thank you, Deputy Chairman, sir. I thank you for giving me opportunity to speak on the Wildlife Protection Amendment Bill 2021, which proposes to amend the Wildlife Protection Act 1972 so as to incorporate the necessary changes to appropriately implement CITE, Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora in India, that is called CITES. In addition to this, certain other amendments have also been proposed so as to make the Act more comprehensive. Deputy Chairman, sir, India is a signatory to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, which requires the parties to take appropriate measures to enforce its provision and prohibit trade in violation thereof. CITES regulate trade in over 38,700 species of wild animals and plants. Currently, 183 countries are signatory to CITES. Non-compliance by a country to adopt appropriate legislation to implement CITES may result in a recommendation from CITES to suspend trade in CITES-listed species with such country. Such a recommendation was made in respect of India, as a minister told, in 2004, but was withdrawn in March 2005 following an assurance by India. India has been implementing CITES through the Custom Act 1962, Foreign Trade Development Regulation Act 1992, the EXIM policy, and the Wildlife Protection Act 1972. However, the CITES Secretariat has noted certain gaps in India's implementation of the CITES. India has been identified by the CITES Standing Committee as one of the parties requiring attention as a matter of priority regarding the national legislation. A recommendation to suspend trade with India for CITES-listed species would affect India's export and imports, such as species including agarwood, sesame, red cedar, wood, medicinal plant, aromatic plants, etc. अभी मंत्री जी ने कहा कि एक प्लांट हमारे यहाँ डलवर्जिया लेटिफोलिया जिसको हम रोज वुड कहते हैं, कि ज्यादा इसका प्रोडक्शन केरला वहाँ होता है, कर्नाटक में, हरियाणा में, और इसके प्रोडक्ट बड़े कॉस्टली हैं और ये साइट की लिस्ट में है. अगर हमने लेजिस्लेशन ना किया तो वो हमारा प्रोडक्ट जिससे हम फॉरेन एक्सचेंज कमा रहे हैं वो सस्पेंड हो सकता है. इसी तरह से द अदर स्पीसीज व्हिच इज इन द साइट लिस्ट इज कॉल्ड अगरवुड. इसको ऊद भी कहते हैं. अभी मैं होम अफेयर कमेटी को लेकर गया था असम और वहां मैंने इस पर बातचीत की.
क्योंकि अगर वुड वहां होता है, उसमें एक इन्फेक्शन होता है, मोल्ड डेवलप होता है, और उसके बाद उसका हार्टवुड टर्न्स ब्लैक, और उसके बाद रेजिन होती है, उससे ऑयल निकलता है, एंड दैट इज वेरी वेरी कॉस्टली, एंड दैट इज यूज इन परफ्यूम एंड इंसेंस। तो ये हमारा जो है, और इसका ग्लोबल ट्रेड है 6 to 8 बिलियन $। तो ये प्रोडक्ट हमारा अगर हमने नहीं किया तो ये हम उस श्रेणी में आएंगे और हमारा एक्सपोर्ट जो है इससे प्रभावित होगा। महोदय, मैं असम के मुख्यमंत्री को इस हाउस के माध्यम से बधाई भी देना चाहता हूं। उन्होंने अभी 26 जून he has launched एग्रो फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड। इसका पर्पज यह है कि फार्मर्स वहां ऐसे स्पीसीज ग्रो करें जिसका यूज इंडस्ट्री में हो। उसमें अगरवुड भी है, उसमें शीशम भी है, उसमें बम्बूज है, कि ऐसे प्रोडक्ट हों, और इस प्रोडक्ट को किसानों को उसको हार्वेस्ट करने के लिए, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है, और इससे फ्यूचर में असम के किसानों को, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को इसमें काफी फायदा मिलेगा। इसलिए ये लेजिस्लेशन जरूरी है कि जिससे साइट जो पाया सम गैप्स हैं, उस गैप्स को हम पूरा कर सकें। महोदय, इसी तरह से हमारे यहाँ एक प्रोडक्ट है जिससे हम काफी पैसा कमाते हैं, और वो है रक्त चंदन। ये आंध्रा में होता है, पार्ट ऑफ तमिलनाडु में होता है, कर्नाटक में होता है। मेनली इसका यूज है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मेडिसिनल पर्पजेस। जब मैं उत्तर प्रदेश में सेवा में था तो अपने होम डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थ नगर जो नेपाल बॉर्डर पर है, करीब 2-3 ट्रक हमने उसको पकड़ा था। उसका वहां कोई यूज नहीं है, केवल पर्पस था वहां से नेपाल और नेपाल के थ्रू चाइना। तो ये रेड सैंडर जो है, जिसको हम रक्त चंदन कहते हैं, इसका भी हम जो है एक्सपोर्ट करते हैं, और अनलेस ये लेजिस्लेशन पास नहीं होगा तो इस पे एक्सपोर्ट पर भी हमारी प्रॉब्लम आएगी। महोदय, in nutshell, the bill seeks to include provision of site regulation in the Wildlife Protection Act 1972 in order to control illegal trade in wildlife, their parts and products. Number 2, it also envisages to constitute a standing committee of SBWL, State Board of Wildlife, rationalize the schedule in the Act from current 6 schedule to 4 schedule, and second for protected animal species, schedule 3rd for specified plants, and schedule 4 for site listed species. In the amendment, the monetary penalties for contravention of the provision of the Act are proposed to the increase so as to ensure that it function as a deterrent in present times. महोदय, इसमें इस एक्ट में बात की किया गया है अबाउट इन्वेसिव फाउना एंड फ्लोरा। हम बड़े अच्छी तरह से परिचित हैं, एक प्लांट है जिसको हम कहते हैं वाटर हाइसिंथ, जलकुंभी, और ये कहाँ आया, करीब 1774 के पास आया, और ये लेडी हेस्टिंग्स कलकत्ता में लाई थी, और उनको उसके बैगनी फूल बड़े खूबसूरत लगे, चमकीले पत्ते ले आए, और लग गया आज केवल भारत नहीं पूरे साउथ ईस्ट एशिया के लिए जलकुंभी एक प्रॉब्लम हो गई है। और मैं तो डल झील में गया था, कश्मीर, वहां भी है। तो आज पूरा साउथ ईस्ट एशिया इस इन्वेसिव प्लांट से, और आज चाहे नॉर्थ इंडिया हो, एटलीस्ट मैंने नॉर्थ इंडिया तो देखा ही है, चाहे बंगाल हो, बिहार हो, सब जगह जितने हमारे वाटर बॉडीज थी, गांव में जो तालाब थे वो पट गए हैं जलकुंभी से, और तमाम जो हमारे किसान उसमें से खेती करते थे, तमाम प्रोडक्ट उसमें से पैदा करते थे, मछली पालन करते थे, सिंघाड़ा पैदा करते थे, वो खत्म।
हमारे कुछ बंगाल के मित्र हैं जिनको मछली बड़ी पसंद थी, मागुर मछली और सिंगी, आज गायब हो गई हैं क्योंकि ये बहुत कम रह गई है। तो ये जो है इन्वेसिव प्लांट जो है, तो इसमें ये भी प्रोविजन है कि कोई हम इन्वेसिव प्लांट को ना ला पाए, उसको अगर लाते हैं उसके उसके सजाओ। महोदय, इसी तरह से इस प्लांट को बंगाल में कहता है टेरर ऑफ बंगाल। इसी तरह से इन्वेसिव प्लांट के बारे में है लेंटाना कैमरा, ये भी साउथ अमेरिका से आया था और आज हमारे फॉरेस्ट में इट हैज क्रिएटेड हैवक, चाहे वो कर्नाटक हो बांदीपुरम सेंचुरी में, और जब गर्मी आती है तो सूख जाता है, फायर लगता है, और कर्नाटक में फायर से हजारों एकड़ जो फॉरेस्ट था वो जल गया, जिसमें बांदीपुर सेंचुरी का भी 40 हेक्टेयर लैंड था। तो ये भी एक लेंटाना कैमरा जैसा। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो स्पीसीज हैं, जो फॉरेन स्पीसीज आई, जो हमारे देश की नहीं थी और हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, उसका भी प्रोविजन है और उसके लिए सीरियस पनिशमेंट का प्रोविजन दिए गए हैं, जिसके माननीय मंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पार्थेनियम, जिसको कहते हैं कांग्रेस ग्रास, इसको ये जो इसको गाजर ग्रास, ये आया था PL 480 से 1954। जो हमारे पास खाने को नहीं था, हम लोग पास अनाज नहीं था, तो अमेरिका से इंपोर्ट होता था अंडर पब्लिक लॉ 480, और उसी के तहत ये प्लांट आया और आज ये हालत है। किसानों के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लखनऊ में अपने घर के सामने मैंने गार्डन लगाया, मैं रोज सफाई करता हूँ, फिर उगाता है। तो ये भी इन्वेसिव प्लांट है। तो इसके लिए प्रोविजन है कि साहब इन्वेसिव प्लांट्स, चाहे फाउना चाहे फ्लोरा। इसके बाद तो अपनी बात थोड़ी मैं कह करके समाप्त करूंगा अबाउट इन्वेसिव फाउना। आप देखते होंगे आज बाजारों में, जो मार्केट में आप जाएंगे तो थाई मांगुर बहुत मिलता है। थाई लैंड मांगुर के बारे में यह है, इट ईट्स एवरीथिंग इन द रिवर एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। पहले लोगों ने इसको तालाबों में पाला, वाइल्ड में गया, और वाइल्ड में इसकी 6 महीने में इसकी साइज 3-4 किलो हो जाती है, जबकि हमारा देसी मांगुर 250-300 ग्राम का होता है। और आज इसकी वजह से जो तमाम हमारे जलीय जीव थे, हमारी ट्रेडिशनल मछलियां थी, इंडियन मेजर क्रॉप्स, कार्प्स, रोहू, कतला और ये मृगल, नैनी, ये सब गायब होती जा रही हैं। तो इसी का परिणाम है इन्वेसिव एनिमल का भी। इसी तरह से इन्वेसिव दूसरी मछली के बारे में कहूंगा, और उसका नाम है तलपिया। तलपिया ये अफ्रीकन फिश थी, और ये आई अफ्रीका से नहीं आई, ये हमारे यहाँ थाईलैंड और लंका से आई, और ये आई करीब 1960 के आसपास। और आज तलपिया का ये हालत है कि हमारी जो देसी मछलियां चूंकि कई बार ब्रीड करती है, और ये ब्रीड करने के बाद आज जो हमारी देसी मछलियां हैं जो नदियों में हैं, उसको पूरी तरह से ये रिप्लेस कर। तो मंत्री जी को मैं इस पर धन्यवाद देना चाहूंगा कि इसके लिए भी प्रोविजंस इसमें किए गए हैं। महोदय, कुछ चीजें अंत में बात करके मैं बात समाप्त करना चाहूंगा अबाउट द वर्मिन स्पीसीज। वर्मिन स्पीसीज आप सभी परिचित हैं, नील गाय। इट इज नॉट अ गाय, इट इज नॉट फ्रॉम ए वाइन फैमिली, इट इज ए एंटीलॉप। इसी तरह से वाइल्ड बोर, तो इसमें प्रोविजन है वर्मिन का, वर्मिन डिक्लेयर करने का। लेकिन अभी जो तमाम है कि परमिशन मिल जाएगा, तमाम फॉर्मेलिटीज हैं जिससे उसका पालन नहीं हो पा रहा है। तो माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस एक्ट में जो वर्मिन स्पीसीज हैं उसके बारे में क्लियर कट डायरेक्शंस स्टेट गवर्नमेंट के दिया जाना चाहिए, जिससे किसानों को जो खेती का नुकसान हो रहा है उस पर भी कंट्रोल किया जा सके। थैंक यू वेरी मच डिप्टी चेयरमैन सर, आपने मुझे टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद माननीय ब्रिजलाल जी। श्रीमती सुल्टा देव, मेडन स्पीच। नमस्कार ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन सर, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मुझे इस बिल के जरिए कुछ बोलने के लिए देने के लिए। और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी का,
जिन्होंने मेरे ऊपर आस्था रख के मुझे इतने बड़े सदन में भेजा, जो अगस्त हाउस में, जहां मैं कुछ बोल सकती हूँ। सर, हम लोग वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं। ये एक ऐसा टर्म है, बस आदमी ही नहीं है वसुधैव कुटुंबकम में, इसमें मेरे ख्याल से पशु भी है, पेड़ पौधे भी है, नदी नाल भी है, सब कोई है। इस वजह से क्या होता है कि ये वसुधैव कुटुंबकम, हम सबका केयर करना चाहिए, हम लोग को सबको हमको बांध के रखना चाहिए, सबको जोड़ के रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, इससे पहले डिस्कशन नहीं हुआ या इससे पहले नियम नहीं बना। नियम भी बना है, कानून भी है, मगर तब मुश्किल होता है जब नियम को हम लोग पालन नहीं करते, इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। तो जितना भी कड़े से कड़े नियम बनाया जाए, नियम हम लोग बनाते हैं, लोकसभा में भी डिस्कशन करते हैं, अपर हाउस राज्यसभा में भी करते हैं, विधायक आता है, फिर पास होता है, फिर नियम बनता है, मगर हम लोग जो है, जो नीचे पालन करने वाले हैं, वो उसको पालन नहीं करते। मैं नहीं बोल रही हूँ कि पालन करना सिर्फ उसको देख रेख करना, मतलब वो जो प्रोटेक्शन के लिए पुलिस है कि ये है, जो हम सबका ये दायित्व और कर्तव्य रहता है। जो ह्यूमन है, हम सबको लेके चले। भगवान ने जब ह्यूमन बनाए, जब आदमी बनाए, वो इतना सोच समझ के बनाए कि ये सबसे बुद्धिमान जीव है जो सबको साथ में लेके चले। ऐसा नहीं है कि ये जो नियम है हम लोग के लिए बहुत पहले से, मैं अगर आपको उदाहरण दूंगी तो बहुत पहले से भी देखा जाए तो ये नियम है, क्योंकि हमारे सारे भगवान जो है ना, वो किसी किसी एनिमल और पक्षी पशु से जुड़े होते हैं, वाहन के तरफ से। वाहन हम लोग उनको बोलते हैं, क्योंकि कभी ना कभी, कहीं ना कहीं हमारे जो पूर्वज थे, उनको लगता था कि सारे पशु पक्षी कहीं ना कहीं अगर विलुप्त ना हो जाए, इसके वजह से वो लोग भगवान के साथ में उनको जोड़ के रखते थे, उनके वाहन के, क्योंकि जब हम लोग उनको पूजा करेंगे, कम से कम हम लोग उनको नहीं मारेंगे। ऐसा भी नहीं है कि बस पशु पक्षी रहते थे, कितने पेड़ पौधे भी हैं जो हमारे जो पूजा पाते हैं, जैसे नीम है, जैसे बेल है, जैसे तुलसी है, ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे भी है। इस तरह से हम लोगों को सिखाया जाता है कि हम लोग कैसे करके हमारा जंगल को रखे, हमारे पेड़ पौधों को रखे, और हमारे जो एनिमल्स और पक्षी है, रेप्टाइल्स है और मामाल से, सबको हम कैसे केयर में रखें। हम लोग उड़ीसा से बिलोंग्स करते हैं। ये उड़ीसा जो है, हम लोग को आपको बताना चाहूंगी, यहाँ पर हमारे 19 सेंचुरीज है, 2 नेशनल पार्क्स है, 2 टाइगर रिजर्व्स है, 3 एलिफेंट रिजर्व्स है, एक बायोस्फीयर भी है। और उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर आपको टाइगर भी मिलेगा, आपको एलिफेंट भी मिलेगा, आपको ऑलिव रिडले भी मिलेगा, और आपको इरावदी डॉल्फिन भी मिलेगा चिलिका में। जो चिलिका लेक होता है, वो एशिया का सबसे लार्जेस्ट ब्रैकिश सॉल्ट लेक होता है, जो उड़ीसा में, जहां अभी भी अगर चलेंगे तो वहां पर लाखों के हिसाब से अगर देखा जाए माइग्रेटेड बर्ड्स आते हैं। हम लोग उसका बहुत ख्याल रखते हैं, कैसे करके वो वहां पर जो 4 महीने के लिए आते हैं, बहुत सारे हमारे सरकार ने, नवीन पटनायक जी ने वहां पर गार्ड्स रखे हैं, लोकल पीपुल जो है उन लोगों को भी रखे हुए हैं, किस तरह से उनको ठीक से कोई मारे नहीं, कोई खाए नहीं। जो बोल रहे थे अभी एक भैया हमारे, जो मेडिसिन के लिए भी कुछ लोग पक्षियों को मार देते हैं, कुछ पौधों को भी मार देते हैं, उनको जगने के लिए हमारे पास में बहुत सारे हैंड्स भी है। अगर देखा जाए हमारे पास में बस ये नहीं है, इरावदी डॉल्फिन के अलावा हमारे पास में क्रोकोडाइल भी है, जो स्वीट वाटर क्रोकोडाइल है, मगर और घड़ियाल बोलते हैं, और क्रोकोडाइल जो है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, जिसको हम बोला बोलते हैं, जो बोला कुंभीर है, वो हमारा मास्कट था, गौरी मास्कट भी था। अगर देखा जाए जो भारत क्या पूरे विश्व में मिलानेस्टिक टाइगर जो है ना, हमारे यहाँ पर कहाँ पर, जहाँ सिमलीपाल है वहीं पर मिलते हैं। और हम लोग देखते हैं जो ऑलिव रिडले है, इस साल 5 लाख ऑलिव रिडले का जो नेस्टिंग होता है,
वो प्रजनन प्रक्रिया में ऋषिकुल्या में भी हुआ और गहीर मथा में भी 5 लाख ऑलिव रिडले ने अपना अंडा दिया। और उसके लिए भी हम लोग वहां पर लोकल कमिटीज बनाए हुए हैं कि इस तरह से उनको प्रोटेक्शन में रखे, कैसे उन लोग को ठीक से रख सके और ठीक से उन लोग समुद्र में जाए। उस टाइम में फिशिंग करने के लिए भी मना किया गया है गवर्नमेंट से। बहुत सारे काम है। वही मैं बोली एशिया का जो सबसे बड़ा लेक चिल्का लेक है, वहां पर अगर देखा जाए तो सारे प्रजाति का भी आप लोग को मिलेगा वहां पर, इसलिए उनका भी अभी बोल रहे थे। जो जलकुंभी है ना, जो डाल लेक में दिखाया जाता है, वो जलकुंभी हमारे चिल्का लेक को भी प्रदूषण कर रहा है। कुछ ना कुछ करके सबके लिए वहां पर वो व्यवस्था बनाना चाहिए, कैसे वो जलकुंभी को समूल विनाश कर सके। जैसे कि सारे जो वहां पर जो मछली है, जो कुछ है, जो वो रेप्टाइल्स है, वो सब कैसे आराम से रह सके। अगर देखा जाए यहाँ हम एक जरूरी बात बोलेंगे कि 2002 से 2022 में हम लोगों का जो फॉरेस्ट कवर एरिया था, उसको अगर देखा जाए तो 10,000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर एरिया हम लोग का बड़ा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये 48,000 स्क्वायर किलोमीटर था, अभी 58,000 स्क्वायर किलोमीटर बना है। अगर ये मैं नहीं कह रही हूँ या उड़ीसा सरकार नहीं कह रही है, ये अगर देखा जाए ये रिपोर्ट ऑफ फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का है। ये हिसाब से हमारा फॉरेस्ट भी बढ़ रहा है। इससे सोचिए हमारा गवर्नमेंट कितना काम कर रहे हैं, कितना प्लांटेशन हो रहा है, जिसके वजह से फॉरेस्ट लैंड भी बढ़ रहा है। और यहाँ देखा जाए तो हम अभी आएंगे ह्यूमन और एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट में, क्योंकि जंगल भी है हमारा, एलिफेंट रिजर्वर भी है, सब है। अगर देखा जाए तो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट होता है, तभी क्या होता है ना, कभी कभी एलिफेंट का भी डेथ होता है, कभी कभी ह्यूमन का भी डेथ होता है इस कॉन्फ्लिक्ट में। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने एक ऐप बनाया है जिसको अनुकंपा मोबाइल ऐप बोलते हैं। अनुकंपा मोबाइल ऐप से हम लोग कितने जल्दी एसग्रेसिया मनी जो होता है, वो जो विक्टिम होते हैं उनको दिया जाता है। इसके लिए शायद उड़ीसा ही पहला स्टेट है जिसमें अनुकंपा मोबाइल ऐप बनाया गया है। अगर देखा जाए ये जंगल जो है और ये कंकरेंस लिस्ट में आता है, इसमें स्टेट के साथ साथ केंद्र सरकार का भी सहभाग रहना चाहिए, क्योंकि अगर ठीक टाइम से ठीक से पैसा जाएगा, ज्यादा अमाउंट जाएगा, प्रोजेक्ट जो जंगल का प्रोजेक्ट होता है उसमें जो हाथी रहते हैं, टाइगर्स रहते हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए जो लोग गार्ड्स रहते हैं उनके लिए अगर ज्यादा से ज्यादा पैसा जाएगा तो कम से कम हम लोग उनको ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा लाइफ भी दे सकते हैं, अच्छा प्रोटेक्शन भी दे सकते हैं। मगर कभी कभार क्या होता है ना, हम लोग को देखे हैं गवर्नमेंट का जो, जैसे हमारे पास अभी भारतवर्ष में 30,000 के करीब हाथीज है, एलिफेंट्स है। अगर देखा जाए तो जैसे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, उस हिसाब से टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के हिसाब से एलिफेंट कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाना चाहिए। क्योंकि ये जो एलिफेंट कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाने के लिए पहले अगर देखा जाए एलिफेंट टैक्स फोर्स, इसको पहले 2010 में एक प्रपोजल दिया था। पता नहीं क्यों वो प्रपोजल के हिसाब से कुछ अभी तक कुछ हुआ नहीं, कुछ सोचे नहीं। ये बड़ा दुखद की बात है, क्योंकि हम लोग अगर टाइगर के लिए करते तो हम लोग को एलिफेंट के लिए भी करना चाहिए। अगर देखा जाए तो फिर हम लोग देखते हैं कि जो टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के माध्यम से जो पैसा खर्चा होता है, अगर देखा जाए तो इस साल 300 करोड़ का बजट आया है टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के लिए, मगर पिछले साल जो था वो 350 करोड़ का था। इस साल थोड़ा कम हुआ है। 350 करोड़ जिस टाइम था, 1400 टाइगर को बढ़ा के वो लोग 3000 टाइगर कर चुके हैं। मगर अगर पैसा अगर कम होगा तो सभी कभी ना कभी टाइगर के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आएगा। अगर ये देखा जाए तो हाथी भी इतना है, मगर इस बार हाथियों के सुरक्षा के लिए, हाथियों के लिए खर्चा करने के लिए
35 करोड़ ओनली दिया गया है, बट लास्ट टाइम उसके लिए 70 करोड़ दिया गया था। ये जो 35 करोड़ का भी हम लोग बोल रहे हैं, ये शायद अभी तक, मैं तो सितंबर में भी बात की थी, सितंबर तक भी हमारा जो सब बजट था वो बजट नहीं पहुंचा था। अगर बजट भी जो जितना, एक तो कम बजट होता है, अगर दूसरे देखा जाए, अगर बजट इन टाइम में नहीं पहुंचेगा तो सबके लिए फिर भी प्रॉब्लम होता है, काम करने के लिए प्रॉब्लम होता है। यहाँ पर क्या होता है ना, 18-19 में 350 करोड़ बजट था, और तभी बैघ्र जो टाइगर कंजर्वेशन है वो बढ़ के बहुत ज्यादा हुआ था। इस हिसाब से अगर देखा जाए, जो ट्रेन और हाथी और टाइगर के हिसाब से ट्रेन लाइन में आपके सबके नजर में आया होगा, ज्यादातर हाथियों का डेथ हो जाता है ट्रेन लाइन से कट के। हम लोगों को उसको बहुत जोर से ध्यान देना चाहिए, किस तरह से कि वो जो उनके जो यातायात का रास्ता है उनको किस तरह से अंडरपास बनाना चाहिए। जो हमारा वाइल्ड देहरादून का जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है ना, वो इसके विषय में प्रपोजल भी दिया था। अगर देखा जाए, पेंच टाइगर रिजर्व जो आता है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, उसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने किस तरह से अंडरपास किए गए हैं, NHI दोनों स्टेट मिलकर, वहां पर देखा जाए तो टाइगर को भी सेफ रखा जा सकता है। इस तरह से अगर उड़ीसा में भी NHI के जरिए अंडरपास, जहां जहां हाथी के ऊपर ट्रेन, हाथी जाने आने का रास्ता है, वहां पर अगर हम लोग NHI के हिसाब से, NHI से मिलके गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा उसको सपोर्ट करेगा, और उस वहां पर अगर अंडरपास बनाया जाता है तो कम से कम जो हाथियों को भी हम लोग सेव कर सकते हैं। और एक बात है, ये जो हाथी है ना, हाथी क्या होता है ना, जो झारखंड, हम लोग हाथी और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट उड़ीसा में ज्यादातर दिखाई देता है। इसके वजह से झारखंड में जो डलमा अंचल, डलमा है एरिया, वो डलमा अंचल का अंचल से, वो एरिया से पश्चिम बंग होते हुए बांकुरा और मेदिनीपुर से बहुत सारे हाथी उड़ीसा में चले आते हैं। अगर देखा जाए, वो मयूरभंज जिला है जो हमारे राष्ट्रपति जी, महामहिम राष्ट्रपति जी का जिला है। अगर वहां दिखा जाए मयूरभंज में रास गोविंदपुर और बेतनटी रेंज जो उसमें, और देखा जाए तो बालेश्वर की जड़ेश्वर और निर्गिल रेंज में ज्यादा से ज्यादा हाथी वहां पर आते हैं और सारे खेती बाड़ी नष्ट कर देते हैं। किसान बेचारा क्या करे? अगर देखा जाए, जो वो फसल लगाता है, जब वो काटने का वो बोता है कितने मुश्किल से और इतना परिश्रम करता है, फिर उसका सब कुछ परिश्रम खत्म हो जाता है जब हाथी आकर उसका जो सुनहरा फसल है उसको सारा नष्ट कर देते हैं। वो मेरा ये सुझाव है, अगर बिल में इतना सारे सब काम है तो देखा जाए तो हाथी को पहले देखना चाहिए कि वो क्यों अपना जो स्थान है वो छोड़कर दूसरा स्थान जाता है। शायद वहां पर उनको ठीक से खाने के लिए नहीं मिल रहा, उनका खाने के लिए अगर प्रावधान वहां पर करना चाहिए जो डलमा में, और वहां पर अगर क्या पानी है, पानी कम है या खाना कम है, किस तरह से वो लोग वहां से निकलकर वेस्ट बंगाल के जरिए फिर हमारा उड़ीसा आते हैं और खराब होता है सारा चीज, उसको देखना चाहिए और उसको ज्यादा से ज्यादा गुरुत्व देना चाहिए कि वहां पर कैसे उन लोगों को रखा जाए। पता नहीं, मैं तो सोचती हूँ एक सर्वे भी होना चाहिए। पहले हाथी लोग कितना दूर चलते थे खाना खाने के लिए, अभी हाथी कितना दूर चलते, इसका मतलब कहीं खाने के लिए कम होता है उनके आसपास। और ऊपर से अगर हाथी लोग चलते रहते हैं, जो जो स्टेट होके वो लोग जाते हैं, उन स्टेट को लेके कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाना चाहिए। जो जंगल, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जब हाथी आते हैं चल के, वो भी खाना खा के भी चले जा सकते हैं, मगर हम लोग उसके साथ छेड़खानी करते रहते हैं। जो जब जहां मिल जाए उसके साथ छेड़खानी करते रहते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया जाएगा तो कम से कम छेड़खानी नहीं होगी। हाथी लोग अगर आएंगे भी, वो अपने रास्ते से भी चले भी जा सकते हैं। ये बहुत सारे ये, मगर हम लोग की स्टेट में हम अभी भी बोलते हैं कि स्टेट में हमारा जो बिजू पटनायक के नाम से, माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, जो लोग अच्छे काम करते हैं उनके नाम से हम लोग उनको अवार्ड करते हैं। कम से कम ऐसा अवार्ड होना चाहिए सारे भारतवर्ष में। जो आगे बढ़ के जो लोग वाइल्ड लाइफ को और फोना और फ्लोरा को जो लोग प्रोटेक्शन देंगे, उन लोगों को अवार्ड होना चाहिए। और देखा जाए तो हमारे फ्लोरा और फोना को भी हमारा प्रोटेक्शन के साथ साथ
सबके लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम अभी बोल रहे थे गाजर घास, हमारे यहाँ भी गाजर घास दिखाई देता है। जो गाजर घास सारा जमीन का है ना, जो खेती होता है वो सारे जमीन के खेती को नष्ट कर देता है। ये हमारा हमारा शेड्यूल एरिया, हाँ हम एक मिनट में साथ, जो शेड्यूल एरिया दिया गया है बहुत सारे अच्छे विचार भी है इसमें। जैसे आर्म्स का जो रिन्यूअल होने के लिए 5 किलोमीटर था, वो भी 10 किलोमीटर के दिया गया है, ये बहुत अच्छा है। मगर जो खेती होता है, जो किसानों का जो नुकसान होता है ना, उसके भरपाई के लिए मैं तो इसमें चाहूंगी, गुजारिश करूंगी, थोड़ा अच्छे से अगर आप कंपनसेशन दे दे, कम से कम किसान भी बच जाएगा और जानवर भी कहीं ना कहीं बच जाएगा, जानवर भी नहीं मरेगा। और हमारा जो डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी है, उसको हम सबको मिलके बचाना है। ये हम सबका दायित्व है और ये सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार का भी है, हमारा भी है। हमारा सरकार कर रहा है, उड़ीसा सरकार। मैं चाहूंगी कि केंद्र सरकार का हाथ अगर आगे थोड़ा आए तो हम लोग और ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। नमस्कार। वंदे उत्कल जननी, जय जगन्नाथ। धन्यवाद श्रीमती सुल्टा देव जी। माननीय अयोध्या रामी रेड्डी जी। Sir, I want to thank you for giving me this opportunity to speak on the Wildlife Protection Amendment Bill 2021. Positives of this bill. The Act prescribes imprisonment terms and fines for violating the provisions of the Act. The bill increases these fines from up to 25,000 to up to 1 lakh rupees for a general violation and 10,000 rupees to 25,000 for a specially protected animals. Such a provision is a good step towards reducing incidences of poaching, cruelty towards animals, or any other related violations. Implementation of CITES. This bill aims to implement the Convention on International Trade in Endangered Species, an international agreement that regulates the international trade of wild animals and plants in order to prevent any threat to their extinction of the species. The bill will provide for the designation of a management authority which grants export or import permits for trade of specimens, and scientific authority which gives advice on aspects related to impact on the survival of the specimens being traded, thus bringing us under a global agreement, and is therefore a welcome provision. So problems need to be addressed in this bill. The issue of vermin. In the Wildlife Protection Amendment Bill 21, any species falling under Schedule 2 may be declared as vermin. The bill also does not define the word vermin, thereby empowering the central government to directly declare any species as vermin. The particular species will not be covered under the Wildlife Protection Act and can be hunted or culled without restriction and once declared vermin. This specific change is projected to impact 41 species of mammals, 864 birds, 17 reptiles and amphibians, and 58 insects, as they may be declared vermin and will be subject to hunting and killing. Thus, a more scientific approach should be taken in declaring an animal as vermin. Human-wildlife conflict is another issue that need to be addressed. This issue of vermin is a part of bigger problem of human-wildlife conflict. Several states have reported crop loss, incidents of crop raiding, and other incidents of crop damage due to animals. However, if the central government starts declaring a lot of these animals as vermin, they would be up for indiscriminate killing. The act of killing could result in severe ecological imbalance and impact the food chain in the region. Thus, a more specific approach has to be taken up in declaration of any species as vermin, and also the human-wildlife conflicts have to be addressed in a better way. So, human-wildlife conflicts are also increasing due to habitat destruction and encroachment and the developmental works, industrialization and agricultural expansion, which leads to reduced forest cover and reduced land for wild animals. Therefore, these issues have to be addressed. In this regard, Andhra Pradesh has taken several steps involving the local community from different areas to help in reducing the animal-human conflict
and ensuring protection of their wild habitat. Elephant trade is one of the issue that is effectively addressed in the state. While 43 of the Principal Act clearly provides for a ban on any sale or transfer of captive animals in their ownership, the proposed amendment bill will introduce an exemption clause to Section 43 in the case of transport of ownership of the live elephants. This exception has the potential of encouraging commercial trade of elephants, which may lead to elephants being subject to captivity and brutality. Therefore, the earlier ban should be upheld even in the case of elephants, and additional mechanism may be introduced for acquiring elephants for religious institutions. Missing species. The species listed in all the 3 schedules of the bill is incomplete, as has been pointed out by several wildlife organizations, as well as the report submitted by the Parliamentary Standing Committee on the bill. And so, there is a need for a greater inclusion of scientists, botanists, biologists, and others in the process of listing all the existing species of wildlife. Elimination of State Board for Wildlife. As per the existing Act, there exists a State Board for Wildlife headed by the Chief Minister as the chairperson and the Minister in charge of Forest and Wildlife as the Vice Chairperson. The proposed amendment bill renders the State Board to defunct and instead provides for establishing of a standing committee of the Board for Wildlife, which is to be headed by the Vice Chairperson, that is the Forest Minister, and not more than 10 members to be nominated by the Forest Minister. Therefore, it decreases the state's involvement and ability to make decisions in matters of wildlife. Andhra Pradesh wildlife conservation efforts are worth mentioning, sir. I would like to state that this opportunity to highlight some of the successful endeavors undertaken by the Andhra government toward wildlife conservation. Tiger numbers are on the rise. The tiger numbers in the state have seen a 60% rise from 47 in the year 2018 to 75 in 2022, with 64 in Nagarjuna Sagar Srisalem Tiger Reserve, 9 in Seshachalam Corridor, and 2 in Papikondalu, through a process of taking censuses with a more scientific method of employing drones and cameras. We are also proud to have the country's largest tiger reserve, NSTR, in Andhra Pradesh, spread over 3,727 square kilometers. The first time the black buck survey has been conducted by the Andhra Pradesh State Wildlife Department, started the first ever survey of black bucks along a stretch of islands between the Godavari and Dhavaleswaram and Yanam, with the goal of drawing up a conservation plan to protect the endangered species. Nodal officers are being deployed, especially in places like Vijayawada, Vizag, to prevent cases pertaining to cruelty against animals. The district police have appointed a circle inspector as the nodal officer to protect animals. People may contact the officer to register complaints pertaining to cruelty against the animals or cases of smuggling. There is also an ongoing plan for upgradation of infrastructure in Indira Gandhi Zoological Park in Visakhapatnam. The state has also been focusing on rescuing the king cobras in North Coastal Andhra Pradesh with King Cobra Conservation Program, rescuing a good number of cobras in the past 3 years to minimizing man-animal conflict across the state. The Forest Department has been working on several areas to address wildlife conservation and would appreciate the assistance of the central government in scaling up these efforts. While inclusion of sites is a welcome step, it is more focused on regulation of trade of wildlife rather than its conservation. Protection of wildlife has to be seen along with protection of their wild habitat, and therefore we need to see the bill in accordance with the Forest Conservation Act and the Environment Protection Act. With these suggestions, we on behalf of YSR Congress Party support the bill. Thank you, sir. Thank you. Professor Manoj Kumar Jha. शुक्रिया उपसभापति महोदय। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल कई बाधाओं को पार करके आज इस मुकाम तक पहुंचा है। मैं माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत वक्त लगा, हम सुनते थे कि इस पर ये काम हो रहा है, इस पर ये काम हो रहा है, इस पे यहाँ टेस्टिमोनियल आ रहा है। तो आमतौर पर मैं बधाई के साथ साथ कुछ ऑब्जर्वेशन मेरे होंगे, मैं समझता हूं कि उसके बारे में मैं जिक्र करूंगा। पसंद आए तो ग्रहण करिएगा, ना पसंद आए
तभी ग्रहण करने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, संग्रहण कीजिएगा। माननीय उपसभापति महोदय, इस बिल का क्यों आना हुआ, क्या वजह है, ये हम सब जानते हैं। मंत्री महोदय ने अपने आरंभिक संबोधन में इस पर बातें रखी। मेरी चिंता या यूं कहूं कि दुविधा बीते 19 के बाद से, जब से दोबारा सरकार बनी है, अभी मैं एक अपने साथी से बात कर रहा था जो अक्सर मित्रवत ही रहते हैं हमारे भाजपा के साथियों के साथ। उन्होंने एक बात कही कि सारी बिल का मजमू कुछ भी हो, एक चीज कॉमन है, कहीं ना कहीं फेडरल स्ट्रक्चर को चोट पहुंचाने की कोशिश होती है। तो मुझे लगता है कि कुछ वर्षों बाद अगर आप ही की सत्ता बनी रही तो राज्य नाम की अवधारणा शायद कहीं खत्म ही ना हो जाए कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स के बदले रहे इंडिया इज ए यूनियन ऑफ यूनियन। तो वो एक पहली चिंता है, क्योंकि सब कुछ आप जानते हैं। आप ही मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाएंगे, आप ही साइंटिफिक अथॉरिटी बनाएंगे, आप ही को एम्पावर किया जाना चाहिए। माननीय मंत्री महोदय ने एक बात कही, और जो बात उन्होंने सही कही, कि ये यूपीए के दौरान का ही कमिटमेंट था। जाहिर है हमारा कुछ इंटरनेशनल कमिटमेंट, बीते दिनों अंटार्कटिका वाला बिल इसी सदन से पास हुआ, कहा गया कि ये कमिटमेंट है। तो मैं सदन के समक्ष आपके मद्देनजर, आपके माध्यम से कुछ वैसे कमिटमेंट्स भी रखता हूं जिस पर फौरी तौर पर पहल होनी चाहिए, बिकॉज वी हैव लार्जली बीन साइलेंट ऑन दोस। कपल ऑफ देम आई जस्ट नोट. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, which talks about no distinction. The Committee on Elimination of Racial Discrimination. The International Covenant on Civil and Political Rights. United Nations Convention Against Torture